is being seen to the Honorable Prime Minister also before that when everybody speaks. तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो क्लोज किए हुए हैं। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि एक बार अभी ही अपना जब आप लिंक करते हैं तो उसमें वो नाम आता है कि गिव योर टाइटल, तो टाइटल में अपना पोस्ट या नाम जरूर दे दें जिससे पता रहे कौन जन रहा है। जैसे अभी उदाहरण के लिए एक जगह मी करके आ रहा है, एमई, अब ये कौन है मुझे नहीं पता, एक बार देख लें कि वो थोड़ा ऑड लगता है, क्योंकि ये भी हम सब लोग जानना चाहेंगे कि आप है वो कौन है। तो ये एक बार ये दो चीजें प्लीज इंश्योर करा लीजिए कि नाम जरूर उस पर नीचे टाइटल में आ जाए, वो आप कभी भी एडजस्ट करके डाल सकते हैं। और आपका वीडियो म्यूट ना हो, आप दिखते रहें, वीडियो प्लीज अनम्यूट कर दें, स्पेशली जो लोग आ गए उपस्थित हैं। ये और जो बाकी जब भी आएंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ कोई टेक्निकल आदमी बैठेगा तो पीपीटी चलाता है। गर्म पानी तो दे ही दीजिए मुझे। लौंग दे दे सर, दे दीजिए, लौंग भी दे दीजिए। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार, ठीक ठाक। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। अभी तो म्यूट रहेंगे, आपका 12:30 बजे के बाद से फिर बोलना है आपको, जब बुलाएंगे आपको। ठीक, सेट कर रहा था, समाचार आया तो। हाँ, लेकिन आपको वीडियो जरूर ऑन रखिएगा जिससे शक्ल दिखती है आपकी। अभी देखिए अशोक, किस तरह से नॉइज आ रही है, किस प्रकार की नॉइज है? सर ये जो माइक के ऊपर जैसे पेपर्स होते हैं ना सर, पेपर सर, गिलास, हाँ हाँ, सबकी आवाज वो देखिए जरा माइक के आसपास जो कुछ डिस्टरबेंस है वो थोड़ा सा हटा दीजिए बस। पेपर थोड़ा, अच्छा नहीं, हेल्प कैसे करेंगे? हाँ वो एक माइक हट गया, उसमें हाँ जी नॉइज थी। हाँ सर, अभी बेटर है सर, अभी बेटर है ना? ज्वाइन करना, क्या इशू आ रहा है भाई? अभी कोई और माइक भी है जहाँ पे भाई तो नंबर 2 में अभी कैसे नॉइज? इसकी पेपर की ना नॉइज आ रही है, इस पेपर की तो अभी all participating active participants are requested to switch on their video, and the name which is being displayed should be adequately checked and it should be meaningful. We can identify who is the person who is speaking. Respective NIC nodal officer, please check if you are aware who is there from your domain. लगाइए ना हमारा वाला क्या लगा? क्या लगा, इसको लगाइए। This meeting is being recorded.
Mm-hmm. Mm-hmm. जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। अभी आरंभ करते हैं 2 मिनट में सर। मैं ब्रीफ में जो बजट घोषणाओं को 5 मिनट में बता दूंगा, फिर आपको मैं इनवाइट करूंगा। ठीक, फाइन, एक्सेलेंट। Good morning, Ramesh Chandji. Good morning, Ramesh Chandji. Dr. Mai here. You are mute probably. Dr. Ramesh Chandji. सभी को का स्वागत है, नमस्कार। मैं देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि, आज इस पोस्ट बजट वेबिनार में सभी का स्वागत करता हूं। आप अवगत हैं कि बजट घोषणाओं में कृषि विभाग को फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ की संज्ञा देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने एक अपना बजट भाषण आरंभ किया था, और ये सरकार का निर्णय है कि बजट घोषणाओं को प्रभावी ढंग से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे हम आगे बढ़े, इसके लिए वी नीड टू हैव अ डिस्कशन विद ऑल relevant stakeholders, and that's why in this theme of agriculture and rural prosperity, we have broken down this theme into 10 sub themes, and we especially welcome Honorable Minister of Textiles, Honorable Minister of Posts and Telegraph and Communication, Honorable Ministers of Rural Development, and other very senior dignitaries, including our eminent panelists of the main first session and also of the breakout sessions. Before I invite the eminent panelists to give their opening and context-setting remarks and views, This meeting is being recorded. I will quickly go through the important budget announcements related to agriculture and rural prosperity sector, so that the context is set, and then based on those contexts, the eminent speakers can capture 1, 2 or more of those budget announcements and give their views to enlighten everybody of us. This will be followed by Honorable Prime Minister's speech at 12:30, where we will listen to his directions, and then we will have a breakout sessions, followed by the plenary, where the secretaries or the anchor secretaries of each breakout session will sum up what has been deliberated in their sub-themes, which will be followed by interventions by honorable ministers. So I will now request the presentation to be loaded.
So, as mentioned, the budget announcement, the theme of today's webinar is agriculture and rural prosperity, which is one of the first of the 7 themes which will be discussed, deliberated today. Next slide. So, the sub-theme 1 is PM Dhan Dhanya Yojana, and motivated by the success of the aspirational districts program, the government is proposing to initiate this Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana through convergence of existing schemes and also specialized measures. 100 districts will be selected based on low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. And the aim is to enhance productivity, diversification, sustainable agriculture practices, augment post-harvest storage, and also improve irrigation facilities and availability of long-term credit. And this will 100 districts with about 1.7 crore farmers will stand to benefit. The second sub-theme, next slide, is enhancing access to institutional credit through KCC. As we are aware that there are more than 7.7 crore active KCC farmers, which includes fishermen and dairy farmers. And the loan limit for modified interest subvention scheme, which was earlier rupees 3 lakh, is to be enhanced to 5 lakh rupees, which will particularly benefit farmers by practicing diversification like horticulture, animal husbandry, and fisheries, where the scale of finance is on the higher side. Then we have the sub-theme 3, next slide, which is building rural prosperity and resilience, where a comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. And global and domestic best practices will be incorporated with technical and financial assistance from multilateral development banks, and 100 agri districts from the Pradhan Mantri Dhan Dhanya scheme will be taken in phase 1. We have sub-theme 4, next slide, which is mission on Atmanirbharta in pulses. And as we all know that about 10 years ago, we started this pulses self-sufficiency program, and farmers increased the cultivated area and the production by 50%. However, due to the increasing affordability and the consumption level, our 6-year mission on Atmanirbharta in pulses with special focus on tur, urad, and masoor is being proposed. And one of the key features is that the central agencies will be ready to procure all these 3 pulses as much as being offered by the farmers for the next 4 years. Next, sub-theme 5 is comprehensive program for fruits and vegetables. And this program is to promote production and efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers, launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will also be set up to get the desired results. The sub-theme 6 is National Mission on High Yielding Seeds. This mission of high yielding seeds will be launched, and it is aimed at strengthening the research ecosystem, targeted development propagation of seeds with high yields, pest resistance and climate resilience, and commercial availability of more than 100 seed varieties, which were launched by Honorable Prime Minister since July 2024. Then we come to the sub-theme 7, which is Mission for Cotton Productivity. This is for the benefit of lakhs of cotton growing farmers. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long stable cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to the farmers, and aligned with our integrated 5F vision of textile sector, this will help in increasing incomes of farmers and ensure a steady supply of quality cotton for regenerating India's traditional textile sector. Then we come to sub-theme 8, which is India Post as a catalyst for rural economy. India Post will be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women self-help groups, and MSMEs, and also large business organizations. Then we come to sub-theme 9, which is framework for harnessing fisheries resources in EEZs and high seas.
To unlock the untapped potential of the marine sector, the government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. And last but not the least, the sub-theme 10 is support to NCDC, where the government is proposing to provide support to NCDC for its letting operations for the cooperative sector. So on these sub-themes, 10 sub-themes, we'll have breakout sessions after Honorable PM's speech, and then we will come out with, which will help the government in formulating the strategies after discussion with the stakeholders. Now, without taking much of the time, I will now request one of the first eminent speakers, Professor Ramesh Chandra, member of Niti Aayog, to kindly give his thoughts and views about the overall sector and what is the way forward. Thank you very much. Sir, can you unmute, sir? Can you unmute, please, sir? Thank you, Dveji. Honorable ministers from different ministries, eminent panelists, and distinguished participants in this important webinars. I would like to begin by making an important statement, and that is, sir, voice is not coming. Voice is just on just now, sir. Can you speak? I unmute is, I think automatically it is getting muted. Sir, you have to just tell the system manager to take care. Okay, I will just but it get automatically muted. Sir, now it's okay, sir. Now it's okay. Thank you. Thank you. So I was just saying that last 10 years have been very eventful year for Indian agriculture, and there are 3-4 reasons why I said that these have been very eventful years. The kind of achievements which have been made in last 10 years, the kind of changes which have occurred in case of agriculture sector, they have never happened in the history of Indian agriculture. So let me quickly give you some facts because of which I feel that these last 10 years from 14 to 24 have been eventful year for Indian agriculture. First, of course, is that growth rate of Indian agriculture at constant price, we have reached the target of 4%. Before that, कोई भी ऐसे 10 वर्ष नहीं थे जब हमें 4% का growth rate 10 वर्ष के लिए मिला. Secondly, the prices received by farmers have grown 30% more than the prices of non-agriculture commodities. That adds to income of the farmer, that between 11, 12 and 24, the real prices of agriculture produce have increased by 30%, which is a direct gain to the income of the farmer. If we combine these two, then you will find that again, first time in the history of Indian agriculture, the growth of farm sector has been as high as the growth of non-farm sector. This is also, I would say, a unique kind of achievements. It is important then go to the second step, that what is composition of growth? Is it that this growth is there everywhere, or it is restricted or confined to some segments? एक important message जो disaggregated analysis से आ रहा है वो ये है कि agriculture के there are 4 segments. One is the segment of field crops, cereal, oilseed, pulses, cotton, sugarcane, etc., for which we give MSP. Second is the horticulture segment, third is the livestock segment, and fourth is the fishery segment. पिछले 10 साल में lowest growth हमारा field crop में रहा है, which is only 1.5%. उसके बाद growth rate horticulture का है, which is 4%. फिर livestock का है जो 6 से 7% है, और fishery का है जो 9 से 10% का हमारा growth rate रहा है. तो इससे इन्फ्रेंस ये निकलता है कि जो हम डिवर्सिफिकेशन की बहुत देर से बात कर रहे थे, उसके फ्रूट अब पिछले 10 साल में इतने ज्यादा आ गए कि डिवर्सिफाइड सेगमेंट की ग्रोथ ने ही इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ को पिछले 10 साल में लीड किया. और मेरे पास एक इंटरेस्टिंग नंबर है आपसे शेयर करने के लिए. जो टोटल ग्रोथ एग्रीकल्चर की पिछले 10 वर्ष में हुई,
केवल 15% जो हमारी फील्ड क्रॉप्स है उनकी वजह से है, 85% हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट्री की वजह से ये हमारा ग्रोथ आया है। तो इससे फिर एक और सेकंड मैसेज, अब मैं क्विकली मैसेज की ओर जा रहा हूं कि ये जो ग्रोथ रेट रहा डिवर्सिफाइड एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर से, लाइव स्टॉक से, फिशरी से, ये ग्रोथ रेट प्राइस ड्रिवन नहीं है, ये ग्रोथ रेट मार्केट ड्रिवन है। और ये ग्रोथ रेट ट्रांसलेशन ऑफ ग्रोथ रेट इन डिमांड है, उसमें डोमेस्टिक डिमांड भी है, उसमें ओवरसीज डिमांड भी है। तो इस डिमांड ने इस ग्रोथ को इस पीरियड में, पिछले 10 वर्ष में इस ग्रोथ को ड्राइव किया है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज में हमें एमएसपी देने की जरूरत है तभी अच्छा ग्रोथ आएगा। पिछले 10 वर्ष ने ये दिखा दिया है कि यदि अच्छी मार्केट प्रोवाइड करें और डिमांड उसको सपोर्ट करती है तो बिना उसके भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट से मच बेटर ग्रोथ रेट आ सकता है। तो उस ओर भी ध्यान देने की एक आवश्यकता है। फिर आगे हमने स्टेट लेवल का एनालिसिस किया कि स्टेट लेवल का क्या एक्सपीरियंस रहा। इसमें दो तरह के पैटर्न आए। एक तो ओवरऑल पैटर्न ये है कि जिन स्टेट्स ने डिवर्सिफाई नहीं किया उनका मोस्टली ग्रोथ रेट 1% से नीचे गया। 3-4 पर तो स्टेट ऐसी हैं जिसका ग्रोथ रेट 0 है, लगभग 0। उसमें पंजाब है, हरियाणा है, केरला है, उत्तराखंड है, उनका 10 साल में कोई ग्रोथ ही नहीं है एग्रीकल्चर का। दूसरी ओर जिन स्टेट्स ने हॉर्टिकल्चर की और डिवर्सिफाई किया लाइफ स्पेशली क्रॉप सेक्टर में, जैसे आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उनके ग्रोथ रेट, कर्नाटका है, उनका बहुत अच्छा ग्रोथ रेट रहा। वहां से भी यही मैसेज निकलता है कि ये जो है डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। अब फील्ड क्रॉप क्योंकि एक ट्रेडिशनल फेस है वो एग्रीकल्चर का, उस पर थोड़ा ज्यादा बताना उचित होगा। फील्ड क्रॉप्स में केवल 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने रिस्पेक्टेबल ग्रोथ हासिल किया है। वो है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। और ये वो स्टेट्स हैं जहां इरिगेशन एक्सपैंड हो रहा है। इरिगेशन एक्सपैंड होने से एरिया अंडर राइस एक्सपैंड हो रहा है। अदर देन दैट यदि हम बाकी स्टेट्स को देखें तो वहां फील्ड क्रॉप का ग्रोथ रेट काफी जो है कम रहा है। तो इससे भी ये मैसेज आता है कि जहां इरिगेशन एक्सपैंड हो रहा है वहां एमएसपी अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। लेकिन जिन स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी प्लेट्यू पे पहुंच गई वहां हम जो मर्जी एमएसपी दें, वहां ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 0 है। और यदि वो स्टेट्स और रीजन डिवर्सिफाई नहीं करते तो वहां ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। अगला मैसेज जो आया है वो ये है जिस पे ये धन धन्य स्कीम भी आधारित है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा 45-46% का है, जो ना तो हॉर्टिकल्चर करते हैं ना लाइव स्टॉक ग्रो करते हैं, वो केवल फील्ड क्रॉप ग्रो करते हैं। जाहिर है कि उनकी इनकम में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम रहा है। हमें उन पे भी फोकस करना है कि जहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम है उनको उसे इंक्रीज करने के लिए कहें। और जो हमारी स्कीम है MIDH है या लाइव स्टॉक की है, उनको यूज करें कि जो फार्मर नहीं डिवर्सिफाई कर रहे उनको भी हम डिवर्सिफिकेशन की ओर जो है प्रेरित करें। ये जो डिवर्सिफिकेशन का आंकड़ा है हमें इसे थोड़ा कंजम्पशन साइड के डेटा से भी देखना चाहिए। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा अब शुरू हुआ है 10 साल के बाद, 22-23 का आया, अब हर वर्ष आएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। उससे बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आगे आ रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति सीरियल इनटेक 11 किलो से 9 किलो पे चला गया, यानी लगभग 18% की उसमें कमी आई। लेकिन यदि हम हॉर्टिकल्चर, फ्रूट और वेजिटेबल को देखें तो वो 5 किलो से बढ़ के 8 किलो 900 ग्राम पे चला गया है, जिसमें 60% की वृद्धि आई है। यदि हम एक्सपेंडिचर को देखें, आज का कंज्यूमर फ्रूट और वेजिटेबल पे सीरियल से 50% ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है। उस पे प्रति व्यक्ति 200 था और इस पे जो है हर महीने फ्रूट और वेजिटेबल पे 300 रुपया। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने एग्रीकल्चर को
बेसिक फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के बाद राइस और व्हीट की, ये जितना ज्यादा हो सके उसको डाइवर्सिफिकेशन की ओर ले जाना है, क्योंकि डिमांड साइड के आंकड़े उधर शिफ्ट हो रहे हैं और ये ग्रोथ के बहुत बड़े जो है ड्राइवर है। एक और जो इसमें आया वो थोड़ा इससे नहीं है, पर एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस क्यों जरूरी है, रूरल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल ग्रोथ। यदि इंडिया को विकसित भारत का गोल हासिल करना है तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट हमें 4% से 5% पर लेकर जाना है, तब संभावनाएं हमें विकसित भारत का 7.5-8% का गोल हासिल करने की बहुत जो है अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं। उसमें जो हमारा वाइब्रेंट सेगमेंट है ऑलरेडी, हॉर्टिकल्चर, फ्रेस्ट्री, लाइव स्टॉक, इनका ग्रोथ रेट जो अभी 5.5-6% है उसको बढ़ा के 7-8%, और जो फील्ड क्रॉप केवल 1.5% से पे टिक गई हैं उसका ग्रोथ रेट 2.5 और 3%। तो दोनों सिलेंडर हमें जो है फायर उस पे करने पड़ेंगे। और एक इरिगेशन मैंने जिक्र किया कि तेलंगाना में फील्ड क्रॉप का ग्रोथ रेट इतना अच्छा क्यों आया, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में कर्नाटका में जो एरिया अंडर इरिगेशन है उसमें लगभग 60% की ग्रोथ आई। और जब से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आया है उससे पहले 30 वर्ष तक हमारा पब्लिक इरिगेशन एरिया स्टैग्नेंट था, रादर वो 17 मिलियन हेक्टेयर से कम होकर 15 मिलियन हेक्टेयर पे चला गया था। लेकिन after we started PMKSY, every year we are increasing area under irrigation by 0.8 percentage points. It has increased from 47% to 55-56%. So states must pay attention to that component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, and they should also look at the experience of other states, that how they succeeded in diversification, how states like Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are having even higher growth rate in field crops. We also have to pay attention to higher involvement of private sector and harness this scheme like India Post. Lastly, India Post is not new. I was in Indian Institute of Horticulture search 2 days back. So they told me that they are already reaching far-flung farmer in sending their seed through India Post. Since seed is the carrier of technology, there is emphasis on seed also. I think we should make use of that mechanism also. So thank you very much, Deveshji, for giving me opportunity to share my views with the viewers. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your overview, sir. Now I will invite Professor Karthik Muralidharan, who is a professor of economics in University of California, San Diego. Welcome, and my request is to stay strictly on the time so that every of the 7 panel speakers can speak. Thank you very much, Professor. So you can unmute to start, sir. I've just shared my slides. Are you able to see the slides? Yeah, we can see. Yes. So just keep that for the time. So thank you, sir. Okay, perfect. So thank you so much. So, what I'm going to do is, I think there are 3 big goals here, right? Which is improving productivity per worker, right? Obviously, we care about total output, but we also care about output per worker in both ag and non-ag. The importance of protecting the vulnerable and support their ability to bounce back from vulnerabilities, and investing in the future. So I'm going to present just key ideas from recent research in each of these areas, and then happy to discuss the specific implications later. So I think the first key point here is, in terms of agricultural productivity, we all know that mechanization is a key to boosting productivity per worker, but a fundamental barrier to mechanization is the small size of Indian farms, which means most farmers cannot cover the fixed cost of capital when the farm size is so small. So one way to solve this problem is to have rental markets for capital, because you only need the equipment for 1 day or 2 days during the season. You don't need to own it, you can rent it. But the rental markets typically exist only for well-known and widely used forms of mechanization like tractors.
but not for newer technologies, correct? So, and in many ways, mechanization is also a way of embedding newer technologies. And so this is a key barrier to growing productivity. And one of the market failures challenge is that the market will provide, say, equipment, but will not cover the cost of training and will not wait for adoption to grow. Agricultural extension officers can provide training, but they have no capital to provide. So one promising idea here is to be able to converge the capital and the training using Panchayati Raj institutes and the agriculture extension officers to create rental markets for agricultural equipment. And this is exactly kind of the study that was done by, my PhD student that just finished, and it done in close collaboration with the agriculture department of the government of Telangana. And what that study does is it uses this approach to test the impact of adopting drum seeders, which is a way to avoid the cost of manual transplanting. So this is directly seeded rice. So here is a very, very simple picture that explains what it does. So as you can see, on the left-hand side is your traditional back-breaking manual transplantation, which is still, seen in a vast majority of rice cultivation across India. And what you see on the left is a very, very simple technology. This is not very expensive. It costs about 3,000 rupees. And the basic idea is that because you put the seeds inside this drum seeder and roll it across the field, it kind of gets you the equal spacing of where the rice seed is dropped, which means it dramatically reduces the labor cost needed for transplantation, and it estimates to save about 20%. Okay, so but the reason the take up is very, very low, like I said, is it still requires a little bit of training to farmers, and the training has to be provided with access to the capital. So what the program did was essentially this program, where Stephen worked closely with both kind of the Ag department and Panchayati Raj department. And so the drum seeders were stored in the Panchayat office and they were rented out at 250 rupees per day, which was more than enough to recover the full cost of the drum seeder within one agricultural season. The Sarpanch worked with the agricultural extension officer to ensure that the training was provided to farmers. And this was evaluated with a randomized control trial across 342 villages with about 205 treated villages and 70,000 farmers in Telangana. And the results were quite encouraging, which is this rental program, you could see that going through the Sarpanch office increased the salience of the drum seeders in the community. So in the Gram Sabha discussions, when you code up the topics that are being discussed, the drum seeders discussion went up from 19% to 35%. It increased the attendance at any other extensionist demonstration from 32 to 46%. It tripled the adoption of the drum seeders, leading to 44 more acres of drum seeded rice. It decreased the days of hired labor by 7% without impacting yields or the other expenses, and it increased the rice farmers' profits by about 8%. Okay, so this is all the good news on the productivity side. But there is also one challenge, which is because the demand for labor went down sharply in that transplanting season, it also, and this is mainly done by women, it also reduced women's transplanting wages by about 6%. Okay, and so this highlights a central tension as we kind of think about India's journey of structural transformation, right? And that tension is, at one level, we have to boost productivity, because the only way to get rich is by increasing productivity per worker. But when you do that in the short term, that can reduce the demand for jobs. And so unless you're able to absorb the freed up labor in other sectors, that can cause this fall in wages, which then has distributional consequences. Okay, so I'll come back to that in a moment. But the main policy implication of this study is that Panchayat leaders are actually, and again, the single biggest plea here is for greater convergence, because, agriculture is different and rural development is different and Panchayati Raj is different. But on the ground, they really have to converge to deliver for the farmers. So what we see is that Panchayat leaders are often engaged in agriculture and they help encourage technology adoption. So 38% of farmers in the study reported getting some agriculture advice from the Sarpanch. But farmers are also more likely to engage in accessing extension services when they have easy access to the capital. And so this can be, and because I was briefed by the Rural Development Department in the context of skilling and livelihoods. And the promising idea here is that agricultural device rental itself can be a self-sustaining business for self-help groups that can both boost productivity and livelihoods.
points, right? So what the study also finds is that the main barrier perhaps to scaling up of the program is that there are complaints about the administrative burden of doing the rental record keeping on the agricultural extension officers or the panchayat workers. And so because self-help groups in many parts of India have now been trained in bookkeeping skills from kind of banking operations, these women, they have the skills to basically become kind of, this can become another very sustainable and profitable business line. Obviously, you have to look at it kind of equipment by equipment, but I think this is a very promising model for boosting both productivity, mechanization, technology adoption, and livelihoods. Okay, so that's one. So let me just quickly have say two more things. Okay, the second is now kind of remember the challenge I talked about protecting the displaced workers, right? And I want to just highlight and reinforce the centrality of NREGS for inclusive rural prosperity, right? So the core challenge is productivity went up from the mechanization, but the benefits went to the landowners with the wages going down. And that is both an ethical and a political challenge. So we need to increase productivity, but we have to protect workers during the transition. And that's why NREGS is so important for inclusive rural prosperity. And so several studies, including a recent paper of mine published in Econometrica, which is based on the largest randomized controlled trial over across 20 million farmers of improving the, of workers, of improving the effectiveness of NREGA. And what we find is that a well-implemented NREGS with timely and reliable payments is good for both equity and efficiency, right? So it's good for equity, this everybody knows, because it targets the most vulnerable through the work requirements. But the subtle point here, and this is one of the most important points to realize from all of this research, is that it benefits not only those who are working on NREGS, right? Like we have very robust evidence that it boosts the rural market wages for all workers, okay? And so given one of our major challenges in some ways is a bit of stagnation in rural wages, in real rural wages over time, this becomes incredibly important as a way of protecting the vulnerable and kind of boosting wages for all workers and not just to work on NREGS, okay? But it is critical for the implementation to be credible, because unless the wages are paid on time, you don't get these effects. Now, I think the most interesting results for us, which frankly was mind-blowing even to me, and it actually kind of made me question some of my own prior assumptions, is that what we found in this paper was, which actually we were really struggling to make sense of, is that we found that improving NREGS implementation increased not only the wages, which is kind of expected, but also the employment, right? Because normally we think that when wages go up, employment will go down. So how could it be that both wages and employment went up, okay? And we find that there is very strong evidence of kind of local demand multipliers from boosting the incomes of the poor. So, and there are two channels here. One is what economists call monopsony and concentration among landowners. And so when you're able to countervail the power of landowners by improving the bargaining power of workers, that leads to this countervailing force that improves agricultural employment. But more importantly, is we have very strong evidence of local demand multipliers from boosting incomes of the poor. So in the economic census, what we saw is the significant increase in from boosting NREGA implementation. We saw a significant increase in non-agricultural establishments and non-agricultural employment. And this is also now consistent with another really, really influential study done in Kenya about these fiscal multipliers of kind of putting money in the hands of the poor. So the most important result I want you to know from here is that only 15% of the income gains to the poor came from NREGS itself. The rest came from higher market earnings. Okay, so, and this is why this book that I've just recently finished highlights this close link between social protection and jobs and productivity, because a well-designed social protection program is not charity, but it can actually contribute to growth itself. Okay, so my last slide is then we want to also invest in the future, right? And not just think about the current productivity. And one of the greatest challenges to India's kind of long-term inclusive prosperity is weak human development, whether it's malnutrition or whether it's learning outcomes. Okay, so we all know the problem. The problem is that we need evidence-based ideas that are both effective and cost-effective, given the fiscal constraints that we're operating under. And the good news is that we have one such very highly promising idea,
And this is again the result of a large-scale randomized controlled trial that I did with co-authors, this time in partnership with the government of Tamil Nadu. And these are all JPAL partnerships, right? Who are on the call. And so here we evaluated the impact of several approaches to improving early childhood development in the ICDS. We kind of, we put an extra worker, we provided kind of a glass of milk in the morning, we increased the wages of the existing worker. And what we found was that by far the most effective idea was to hire an extra worker on a half-day shift, just 4 hours a day, focused on preschool education. And what we found is that because this poor Anganwadi worker, she's been described as like the Ma Durga of our early childhood system, because she's juggling so many roles between preschool education, maternal counseling and visitation, nutrition education, record keeping, maintaining various inventories. So what we found is that putting that extra half-time staff member led to a doubling of instructional time, a substantial increase in learning outcomes, and one of the most kind of meaningful reduction in stunting and malnutrition that I have seen in this space. And so based on the global estimates of the long-term returns to improving early childhood kind of development, we estimate that the present discounted return on investment of doing this is about 1,200 to 2,000%, which is 12 to 20 times the cost, right? So the evidence is there. It is very robust and published again in one of the top journals in economics. So the question now is, how can we take this and scale? Now, the study is highly suggestive, but I would not recommend that we scale nationwide overnight, because Tamil Nadu has a relatively well-functioning ICDS system. So we need a lot more pilots and evaluations across India. So one obvious approach to scaling is via WCD, and we are already in those conversations. But because my brief here was to think about SHGs and think about how they can contribute, it felt like another very obvious channel here is for the SHGs to kind of become a pathway for scaling, because it wouldn't be difficult to identify kind of a 12th pass young girl who's in the SHG and upskill them to become part of the service provider. And then you can also get greater convergence, and the budget needed to do this through kind of the SHGs might be even lower than what is needed if you formally hire an extra Anganwadi worker. And so to be honest, part of the challenge and concern the government officials have when I present the results is the Tamil Nadu results were based on kind of hiring on a 2-year contract for about 4 hours. But if you were to hire a full-time worker for 30 years, then they worry about whether you will get the same gains. So when you go through SHGs, you may have the ability to augment the staffing, converge with PRIs, and also have more accountability. Okay, so let me stop there and look forward to discussing further. Thank you. Thank you very much, Professor Muralidharan, for your insightful intervention. Now I'll welcome Shri Balram Yadav, CEO of Godrej Agrovet Limited. May I restrict your time to 7 to 8 minutes, please. Shri Balram Yadav, may I please unmute your mic. Please unmute and start. Sorry, sir. Yeah, can you hear me now? Please continue. Yes. मेरा नाम बलराम सिंह यादव है, मैं गोदरेज एग्रोवेट का एमडी हूँ। हमारी कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनिमल फीड है, कैटल, पोल्ट्री, एक्वा में लार्जेस्ट प्रोसेस चिकन प्लेयर है। दूध के अंदर साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। ऑयल पाम प्लांटेशन में हम नंबर 1 हैं और टॉप 10 कंपनीज में एग्रीकेमिकल में हैं। जैसा हम सुन चुके हैं कि लाइव स्टॉक सेक्टर का बड़ा फास्ट ग्रोथ है। I want to give you a relative idea of how we have grown from 2000 to 2023. Population has grown by 51%, food grain by 67%, fruits and vegetables by 134%, milk by 185%, eggs by 272%, chicken more than 1000%. 2000 to 2024, we are 10x of chicken production in this country. इन सब चीजों में बहुत शार्पनेस आई है। हमारी एक बहुत लंबी डिमांड थी कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री, और जब से सेपरेट मिनिस्ट्री बनी है तो इस सेक्टर में बहुत अच्छा फोकस आया है। तो वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेक्टर इन पॉवर्टी एलिविएशन, कैश फ्लो जनरेशन फॉर द फार्मर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम इस सेक्टर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। फ्यूचर के बारे में जिस तरह के स्टेप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 10 साल में 300 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन क्रॉस होगा, जो अभी 239 मिलियन टन है। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है डबल हो जाएगी। फिशरी का प्रोडक्शन लगभग
250 लाख टन होगा, जो अभी 184 लाख टन है, और हम 60,000 से 1,25,000 करोड़ के एक्सपोर्ट पे जरूर पहुंचेंगे। और मुझे जिस तरह से हमारा ग्रोथ रेट है, मुझे लगता है कि अगले 7 से 8 साल में या विद इन दिस डेकेड एग्री जीडीपी के, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का जीडीपी है लगभग एग्री जीडीपी के 50% का हिस्सा होगा हमारा। इस बैकड्रॉप में मुझे बुलाया गया तो मैं थोड़ा क्रिप भी करना चाहता हूं कि इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए 4,840 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री का बजट और 2,704 करोड़ का फिशरीज का बजट मुझे थोड़ा इनएडिक्वेट लगता है, क्योंकि वी शुड एलोकेट मोर रिसोर्सेज फॉर हार्नेसिंग दिस अपॉर्चुनिटी वी हैव। मैं दोनों मिनिस्ट्री का बहुत जबरदस्त अप्रिसिएशन करना चाहता हूं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका हम प्रभाव जो है अपने सेक्टर में बहुत देख रहे हैं। हमने, हमारे पार्टनर्स ने, हमारे फार्मर्स ने इन सब फंड्स का यूटिलाइजेशन किया, और मैं कहना चाहता हूं और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, थैंक यू करना चाहता हूं पॉलिसी मेकर को, कि इस फंड को एक्सेस करने में बहुत ईज है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये कोई सब्सिडी स्कीम नहीं है, तो इससे बहुत फायदा हो रहा है। एक स्कीम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसका अगर आपको इफेक्ट देखना है तो आपको यूपी में देखना चाहिए। एक टाइम ऐसा था 10 साल पहले कि सारा इनलैंड फिशरीज जो था आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता था, अब यूपी इज बिकमिंग गोइंग टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इनलैंड फिशरीज। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि लगभग 6 फ्लोटिंग फिश फीड के प्लांट, जिनका कॉस्ट लगभग 600 से 800 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है, वो यूपी में आ रहे हैं। जो एक लिमिट एनहेंस किया है किसान कृषि कार्ड का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इस बजट में, उसका भी हम सराहना करते हैं, क्योंकि उससे एनिमल फीड के एनिमल एग्रीकल्चर के फार्मर्स को फायदा होगा जिनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, बोवाइन आईवीएफ टेक्नोलॉजी, सेक्स सॉर्टेड सीमन, ये सब इनिशिएटिव जो हैं ये बहुत अच्छी डायरेक्शन में, लेकिन इन सब को एक्सेलरेट करने की और ज्यादा रिसोर्सेज देने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जहां हमें एक बहुत जबरदस्त फोकस और बहुत वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए, एक डिजीज प्रिवेंशन एक ऐसी एरिया है हमारे सेक्टर में जिसके ऊपर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप जो है बहुत बढ़नी चाहिए। डिजीज प्रिवेंशन ब्रोवाइन के अंदर भारत सरकार का बड़ा जबरदस्त काम है। लंपी स्किन डिजीज एक एग्जाम्पल है कि उसको हमने विद इन 1 ईयर एलिमिनेट कर दिया। एफएमडी वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पोल्ट्री के अंदर जो हैवक बर्ड फ्लू की वजह से आता है, जिससे 15 से 20,000 करोड़ का नुकसान होता है इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, एज वेल एज मार्केट प्राइसेस गोइंग डाउन because of I would say consumers going away at the time of bird flu. इस LPI HPI को करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत है। I am thankful to the government for allowing LPI vaccine to be produced in this country, but it is a very small step towards making India free from bird flu, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज मैं बात करना चाहता हूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की। ये एक नई पद्धति है, नई टेक्निक है जिससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 4-5 साल में जो काम होता है वो 1 साल में अचीव होता है, क्योंकि जो आप एक अच्छा एम्ब्रियो दे सकते हैं। मैंने देखा है कि जो काव है वो 1500 लीटर दूध देती है, जो सरोगेट काव है, उसकी बेटी जो है 8000 लीटर दूध देती है। तो एक जनरेशन में इतना बड़ा अचीवमेंट होता है। ये साइंस भी है और ये स्किल भी है। इसके लिए भारत सरकार को काफी ज्यादा फंड देना चाहिए और इसके लिए वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसी कंपनियां भी ये सब काम कर रही हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे कर नहीं सकते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल आजकल फार्मर छोड़ देते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें ये भी कमी होगी, क्योंकि वी नीड लेस नंबर ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर मिल्क। उसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से 99% चांस है कि मेल प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी अभी हम आवश्यकता नहीं है। इंडिया के पास लगभग जीसीसी कंट्री में $6 बिलियन चिकन इंपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह का जबरदस्त काम एम्पीडा ने किया है एक्वा एक्सपोर्ट के अंदर,
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पोल्ट्री के लिए भी होना चाहिए जिससे हमें पोल्ट्री एक्सपोर्ट के अंदर बेनिफिट हो। उसमें 2-3 चीजें करनी जरूरी है। एक तो जोनिंग जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा बर्ड फ्लू स्टेटस रहते हैं तो हम अपने गेम एक्सपोर्ट के गेम से बाहर ही हो जाते हैं। अगर जोनिंग होगी तो जो जोन बर्ड फ्लू अफेक्टेड नहीं है वहां से एक्सपोर्ट पॉसिबल होगा। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए फीड कॉस्ट के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एथेनॉल की वजह से जो मेज का प्राइस है वो बिल्कुल आसमान से छू रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। फिशरीज और श्रिम्प के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है ब्रूट स्टॉक का। बजट के अंदर प्रोविजन किया है, बात की गई है न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर फॉर श्रिम्प की, लेकिन इसके अंदर हमें एक्सेलरेशन लाना चाहिए। ये कैपिटल इंसेंटिव एरियाज हैं, इसके अंदर कोई सपोर्ट सरकार का होगा तो हम इसमें जल्दी से आत्मनिर्भर बनेंगे। एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि रूपचंद करके एक फिश है जो आज कल बहुत पॉपुलर हो रही है इंडिया में, लेकिन उसका सारा ब्रूट स्टॉक जो है बांग्लादेश से आता है और आज की स्थिति में वो सब आने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ फोकस थे, लेकिन हमें फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स को मार्केट एक्सेस और वैल्यू एडिशन पे भी फोकस करना चाहिए। जैसा रमेश चंद साहब ने कहा कि जो वैल्यू रियलाइजेशन ऑल्सो हैज टू गो अप फॉर द फार्मर टू मेक मोर मनी। मरीन फिशरीज के ऊपर जो बजट के अंदर बात हुई है वो बहुत अच्छी बात हुई है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो एक बड़ा सोर्स हो सकता है हमारे लिए, मरीन इनलैंड कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। हमारा कोस्ट लाइन 8,118 किलोमीटर है, लगभग 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एरिया है जिसमें हम मरीन कैप्चर कर सकते हैं। आजकल हमारा मरीन प्रोडक्शन जो है कैप्चर जो है 3.5 बिलियन टन है, जबकि ग्लोबल प्रोडक्शन जो है 90 मिलियन टन है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अंदर भी कोई सब्सिडी स्कीम होगी फार्मर्स के लिए या सपोर्ट स्कीम होगी, इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम होगी, उसका फायदा होने वाला है। तो मैं चीज कहना चाहता हूँ अंत के अंदर कि हमें इस सेक्टर को, हमें एमएसपी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है। और हम श्योरली जो है जो ग्रोथ रेट हम पास्ट में ला रहे हैं 6 से 7% लाइफ स्टॉक में, 8 से 9% फिशरीज में, उसको अगले 5 साल में हम एक्सीड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बलराम यादव जी। अब मैं श्री सतीश के मराठे जी को इन्वाइट करता हूँ कि वो 7 से 8 मिनट में अपना बात रखना चाहें। नमस्कार, मैं सतीश मराठे बोल रहा हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए सर। सुनाई दे रहा है ना? हेलो जी जी जी। हाँ जी नमस्कार, मैं सतीश मराठे बोल रहा हूँ। सहकार भारती जो देश की इन कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड का भी डायरेक्टर हूँ। एक तो मैं केंद्र सरकार को पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में हमारे रूरल सेक्टर के ग्रोथ के लिए वहाँ की इनकम लेवल्स बढ़ने के दृष्टि से और इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की संख्या बढ़ने की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है और उसके नतीजे हम सब लोगों को दिख रहे हैं। रूरल डिमांड जो है वो सब सेक्टर्स में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है और ये हम रिटेल स्पेंडिंग के माध्यम से भी हम देखते हैं। विशेष करके मैं 3 विषयों पर आपके सामने विषय रखना चाहता हूं। हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये महत्वपूर्ण उसका घटक है और समय समय पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयास किए गए, किंतु पिछले 2-3 वर्षों में विशेष करके हमारी पैक्स को मजबूत करने के दृष्टि से जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत ही अभिनंदनीय है। पैक्स को मल्टीपर्पज करके उनकी इनकम लेवल्स बढ़ाने से ये संस्थाएं डेफिनेटली वायबल बनेगी और जो हमने अध्ययन किया है उसमें अध्ययन से ध्यान में आता है डिलीवरी ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज थ्रू कोऑपरेटिव्स इज द चीपेस्ट। ये विषय अपने देश के सामने, हमारे एकेडमिशियंस के सामने आया नहीं है, ना बैंकर्स ने केवल इंटरेस्ट
बढ़ाने कम करने के दृष्टि से 3 टायर स्ट्रक्चर न रखते हुए 2 टायर रखे, इस प्रकार की चर्चा होती है। बट 3 टायर की स्ट्रक्चर की आवश्यकता अपने जैसे बड़े देश में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ क्रेडिट इज द लोएस्ट थ्रू कोऑपरेटिव्स। इस दृष्टि से जो केंद्र सरकार पहल कर रही है उसके लिए भी मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। उसी प्रकार डेयरी सेक्टर में जो प्राइमरी मिल्क कलेक्टिंग सेंटर्स हैं, सोसाइटीज हैं, उनको भी मल्टीपर्पज करने के दृष्टि से जो प्रयास हो रहे हैं उस काम को अब गति आने की आवश्यकता है। वो भी अपने देश में ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी, क्योंकि आज के दिन में लगभग 1,20,000 प्राइमरी मिल्क कलेक्शन सोसाइटीज एक्टिव हैं, प्रॉफिटेबल हैं। किंतु ये जो सोसाइटीज हैं ये केवल वेस्टर्न इंडिया में हैं। सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार की सोसाइटीज की संख्या बहुत कम है। और जो अपना पहले 10 वर्ष का ऑपरेशन मिल्क फ्लड का प्लान बना था, उस समय विचार हुआ था कि कम से कम 3 लाख सोसाइटीज हम रजिस्टर करें। अनफॉर्चुनेटली हम केवल 1,90,000 तक रजिस्टर कर पाए, जिसमें से आज 70,000 सोसाइटीज डिफंक्ट हैं, उसको रीएक्टिवेट भी करने की जरूरत है, क्योंकि डेयरी सेक्टर से किसानों का जो आमदनी बढ़ती है वो बहुत बड़ी सब्सटैंशियल होती है। दूसरा विषय किसानों के दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि जो नॉन लैंड होल्डर्स किसान हैं उनके तरफ किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार का एक प्रयास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं कि ऐसे किसानों को जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करें और ऐसे किसानों को फिर किसान क्रेडिट कार्ड दे, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आज जो प्रत्यक्ष खेती नहीं करते ऐसे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, उसकी संख्या भी ऑटोमेटिकली उससे कम होगी। और जो ठीक से क्रेडिट की आवश्यकता है जो प्रत्यक्ष खेती करते हैं उनके तरफ जाने की, इसकी एक बहुत बड़ी मैं मानता हूं उपलब्धि होगी। उनको एक सहायता भी ऐसे किसानों की होगी। तीसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, फिशरीज के कॉन्टेक्स्ट में किसान क्रेडिट कार्ड का जो फिशरीज के लिए दायरा बनाया गया है उसको एक्सपांड करने की आवश्यकता है। बहुत कम आइटम्स उसके अंदर आज कवर हो रहे हैं, उसके अंदर उस दृष्टि से ये बढ़ाने का दायरा बहुत आवश्यकता है। आज के दिन में फिशरमैन के पास यदि नेट न हो, वो बह गया हो, वो बेचारा इनऑपरेटिव बन जाता है। तो एक लिमिटेड अमाउंट क्यों न हो किसान के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड में वो परचेज करने के लिए भी योजना बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके दायरा बढ़ाने की दृष्टि से एक कमिटी अपॉइंट की जाए तो उसे फिशरमैन कम्युनिटी उसका लाभ अधिक अच्छा ले पाएगी। हमने पिछले 2 वर्षों से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक बेसिक चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं, टू मेक सो दैट इट गेट्स मोमेंटम। आज जितने भी बने हैं उसे बहुत मोमेंटम सरकारी सहायता होते हुए भी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट होते हुए भी वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। और इसका कारण है कि जो स्कीम है उसको रिव्यू करना। और दूसरी आवश्यकता आज के दिन में है, जो फूड प्रोसेसिंग के तरफ हमने जो विशेष ध्यान दिया है उस ध्यान को अधिक करते समय क्या ये एफपीओ की एक्टिविटी 2 टायर स्ट्रक्चर में हम निर्माण करें। जिस प्रकार डेयरी सेक्टर के यहाँ प्राइमरी मिल्क कलेक्शन सोसाइटीज होती है, उसी प्रकार प्राइमरी एग्रो प्रोसेसिंग की व्यवस्था हम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी व्यवस्था हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और बहुत सारी जो क्रेडिट सोसाइटी शहरी और सेमी अर्बन, सेमी रूरल सेक्टर और रूरल सेक्टर में काम करती हैं, उनको आज के दिन में नए प्रोडक्ट्स बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं एनसीडीसी से कुछ वर्षों तक डायरेक्टर के रूप में जुड़ा था
और मेरा ध्यान में ऐसा आता है कि एनसीडीसी बीइंग वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स फॉर ट्रांसफरिंग क्रेडिट लाइन टू कोऑपरेटिव सेक्टर, उसके रिसोर्सेस बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज के दिन में केंद्र सरकार की विशेष कंसंट्रेशन फोकस ग्रोथ एरिया है, डेयरी है, फिशरीज है, पैक्स हैं। तो इन 3 सेक्टर्स के लिए डेडिकेटेड फंड के रूप में उनके पास फंड्स की निर्माण करने की आवश्यकता है। आज मार्केट बोरोइंग करके वो ज्यादा करके कोऑपरेटिव्स को लेंड करते हैं, उसके कारण उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वो कॉम्पिटिटिव बनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से लाइंस ऑफ क्रेडिट एनसीडीसी को बढ़े और वो 3 एरियाज में फोकस अटेंशन दे। ऐसे करने से ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ऐसा एक रफ अनुमान है कि हर साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में डिसबर्स होता है। यदि ये संख्या हमारी पैक्स की, डेयरी की, फिशरीज की यदि बढ़ती है तो मैं मानता हूं आने वाले 2-3 साल में ये अमाउंट 5 से 7 लाख करोड़ तक ग्रामीण इलाकों में बढ़ सकती है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ के ऊपर हो सकता है। इस दृष्टि से भी आने वाले दिनों में हम विशेष ध्यान देकर काम करें, ऐसा मैं आह्वान करते हुए मेरा निवेदन पूर्ण करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर सीडी माई को बुलाऊं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज्वाइन किया है लेकिन उनका वीडियो जो है वो म्यूटेड है, उनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, तो अनुरोध रहेगा कि वो अपना वीडियो जरूर अनम्यूट कर दें और उनका दिखे, क्योंकि वो पिक्चर में ब्लैंक अच्छा नहीं लगता दिखने में। मैं डॉक्टर सीडी माई जो कॉटन साइंटिस्ट है प्रख्यात, उनको मैं निवेदन करूंगा कि मैं अपनी बात कहना चाहें। मैं लाइक टू शेयर हिज व्यूज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डेविड जी। डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ, आ रही है। 7 से 8 मिनट में आप बात करना चाहेंगे। थैंक यू। 7 मिनट में मैं खत्म करूंगा। I am extremely grateful to this organizer for giving me this opportunity to be there. Let me say that all the science community, cotton science community and farmers of this country have been very extremely grateful to Government of India for introducing the technology mission for cotton productivity. In fact, this was a very long due process because of stagnating and decelerating cotton yield in the last decade. Probably you are aware that once we reached something like 560 kg lint per hectare in the year 1913, 14, 2014, 2015. And also we were exporting nearly more than 70 lakh bales. But all of a sudden, I think in the last decade, there has been a decrease in the productivity. And productivity decrease has a direct influence in terms of the farmers' profitability and also availability of the raw material for the industry. That's why I think the mission, which is projected to be on cotton productivity, has a very great significance. I think there are obvious reasons. We have all analyzed scientifically what are those reasons where we have failed to really achieve. The main thing is that basically there has been development of resistance to BT cotton to pink bollworm. The pink bollworm has become a very damaging pest after Helicoverpa in this country. There is also that climate induced a lot of changes in the actually pest and disease scenario, particularly in the north. We have cotton leaf curl problem, whitefly transmitted. There is whiteflies, jacids, boll rot. All these problems are basically coming, and that's why you'll see that the area in the north has been sometimes certainly reduced. One of the other reasons I must also point out that there has been what is called as GM fatigue in the entire GM technology, particularly which has brought down in 2006. After that, we have not introduced any. Let me tell you, when I was a commissioner of agriculture, I think we had the first technology mission of cotton introduced. It is one of the most successful missions that we had because the productivity nearly doubled during that period from 300 kg lid to around 600 kg lid
But that mission had one very good component of GM technology, that was BT cotton, which possibly now, when we talk about any mission, second mission, I think we'll have to look into what are those new technologies that are available with us. India is a cotton hub. Actually, we are the largest cotton producer in the world, with nearly 12 to 13 million hectares area. But the average productivity of this country is something like only some 450 kg lead per hectare, which is far less than the world average of 770. Somehow by 2030, we must reach 450 lakh bales. That is our, today we are again hovering around something like 310, 320 lakh bales. I think there's a wide gap, and therefore I said that productivity concern is very important. If we have to really strengthen our value chain of 5F, that is from farm to fashion, farm to fiber to fashion to the foreign to see all those 5Fs, if we have to really achieve, there is a necessity that we target first the productivity. Now we are bringing transformative seed out of agronomic change. That is one new technology which we have tried for the last 4 or 5 years with our scientific community in India throughout the country, and which appears to be very good. I mean, you all know 65% area in the country is rain-fed. And the productivity of rain-fed is already hampered because of fluctuating rains, and that is excess or drought. Now, this HDPS technology has been very successful where the cotton is grown on light to medium shallow soils. And our experience shows very clearly that if we try this technology, I think we can really achieve very good yields. And we can boost up our yield. But there are also questions. Can we have research and development support to this technology? Number one, can we see support HDPs or high density technology by using something like development of new breeding line, new breeding technology, so that we have short statured hybrids available in the country? I think that is one very important factor, and therefore I would request all the researchers to really change their breeding methodologies and concentrate only on these things, where we have nearly 45% area we can cover with HDPS in this project. So that is one. In the developmental aspect, what we find, what our problems when we have gone to the field is, weed management is a very serious issue. Probably you all know that today the farmers are worried because of their non-availability of labor or labor cost. Nearly 40% of the cotton cultivation cost is on labor. Can we therefore have some technology where if we have to introduce HDPS, I think weeding would be a more challenging situation for all of us. And therefore, the already known technology, what we call it as BG2 RRF, can that be introduced along with HDPS? I think that will boost our productivity substantially. Similarly, I find that we have missed management in cotton, particularly if we can bring large area drip cotton, drip irrigation. The cotton productivity is nearly doubled. This is our experience in Vidarbha region, where we have large area of cotton, where we find that the moment you give drip irrigation and controlled irrigation, the cotton productivity is almost maybe 800 to 1000 kg lead per hectare. I think this, with this experience of 4 or 5 years, we know what are those areas where we can achieve. Similarly, can we do something which is of what we call it as the coverage of the soil and other things by using some of those polythene sheets and other things. So there are lots of other opportunities where we can really improve the productivity of cotton in this country. And as I said, that by 2030, if we can target something like 450 lakh bales, naturally some of those issues which are very important, that is management of pink bollworm, use of irrigation water, use of proper nutrition management, I think we will be able to succeed this. And I'm sure that the breeders have already taken up the issue of developing HDPS product variety. The other issue in HDPS, which probably has been missed, is can we also develop varieties which will be amenable to defoliation? Today we have a lot of HDPS varieties,
But defoliation has been a problem. That's why mechanization cannot be introduced. And all those issues will have to come forward. So we have now, I think, with the breakout session, there will be a lot of other people which are discussing. I thought of introducing what is happening today. We have a new technology, but to promote that technology and to expand that technology, what are the hindrances? Can we remove them? I think this technology will definitely be useful for the cotton productivity. Thank you very much. Thank you, Dr. Mai. Now I will request Dr. Anjani Kochar, who was former Director India Program at King Center of Global Development at Stanford University, to give her views about this sector in 8 to 10 minutes. Thank you very much. At the onset, let me congratulate the government on the 2025-26 budget and thank the ministry for giving me this opportunity to participate in these deliberations. I will make just a few points since time is short, and these points relate to the sub-theme of rural prosperity and resilience. My comments are broad in that I build on the concept note prepared for these deliberations. That note identifies key achievements of the past decade as well as the challenges ahead. I'd like to identify 2 additional key achievements of this past decade that I believe are necessary for ensuring rural prosperity and the structural transformation of the rural economy. The first is an economic factor, the growth of local markets. A recent survey conducted by researchers from CIE and Witty Livelihoods for an evaluation of NRLM reveals their importance. Please continue, ma'am. Okay. Not surprisingly, the survey found that the majority of rural households, over 60%, rely on local markets for their purchases of food products, including processed food grains, vegetables, and fruits. But more strikingly, approximately 40% of households also purchase clothing and non-food items from village markets. While the concept note and budget rightly stress the importance of accessing more remunerative urban and global markets for agricultural products, the development of rural enterprises is most affected by the size or market potential of the local market. Income growth increases the demand for non-agricultural goods and services. Whether this increased demand is sufficient to foster the marketization of goods and services that were previously produced within the home depends on the size of the market. This in turn reflects levels of per capita income, but it also reflects average village population size and the number of villages that combine to form a local market. It is local market size that enables the growth of rural enterprises such as tailoring shops, beauty parlors, restaurants, local tutors, taxi drivers, and the growth of a local construction sector that meets the demand for home improvements and construction. Perhaps most importantly, it is the growth of local markets that enables significant improvements in female labor force participation rates. An immediate takeaway of what I've just said is that government investments in rural connectivity and infrastructure are critical, not just because they lower the costs of accessing urban markets, but because they connect adjoining villages, increasing the size of local markets. Investments in other social goods and welfare programs, including NREGA, Prime Minister's Awas Yojana, and programs for sanitation and water supply have the same effect. They enable the growth of local markets, and this magnifies their direct returns. But these social investments also amplify the returns to investments in credit, agricultural productivity, and other livelihood initiatives. This is a point that Karthik Muralidharan had earlier made. I will elaborate on it later and explain exactly why this effect exists. Our evaluation of NRLM supports this hypothesis of the spillover effects from social investments, revealing that the impact of livelihood-enhancing initiatives on household income and consumption increases with the size or the purchasing power of the local market.
We measured local market power by the quality of local housing, thereby tying the performance of livelihood initiatives to government support for social programs. Taken together, our research supports the whole of government approach of this year's budget and its emphasis on a coordinated push. It is important to recognize, however, that this coordination may not happen organically. It needs to be institutionalized. As an example, the convergence of NRLM with welfare programs was institutionalized in some states but not others, and was done so through policies which closely aligned cluster-level federations with gram panchayats. It is in these states where the process was institutionalized that convergence policies have had their greatest impact. The second major achievement of this last decade that I wish to emphasize is a social factor, the development of an expansive social network that links rural households within a village and across villages. This social network is a consequence of NRLM's investment in a federation of community institutions that connects small, socially homogeneous self-help groups to form an expansive, heterogeneous network, which includes village organizations and cluster-level federations. While strong social networks obviously affect social outcomes, such as friendships and social connectivity, recent research emphasizes their importance for economic growth and for the nature of economic growth. Their effect on growth derives from their impact on women's labor force participation. A woman's decision to work is what is termed a social good. Its levels reflect social norms. Because these are societal norms, change occurs primarily through a process of social learning, rethinking social costs and benefits from observing the behavior of others in your social network. Expansive networks, such as NRLMs, promote social learning. The 3IE Vritti survey found that approximately 50% of rural women across 9 states held regressive norms regarding women's labor force participation. More importantly, we found that NRLM's livelihood initiatives, conducted through its set of community institutions, reduced the prevalence of regressive norms and increased female labor force participation rates. Perhaps even more important than the effect of these social networks on economic growth is their effect on the nature of economic growth. The societal organization of a society determines whether growth is accompanied by rising inequality or not. Ample evidence from the US and other countries relates rising inequality in these countries to the segregation of the social networks of the rich and the poor. This segregation means that the poor have less access to valuable information on job opportunities, endowments, and rights. It also limits the bargaining power of the poor and weakens support for government programs and adversely affects their functioning. In contrast, strong networks of women are perhaps the single most important determinant of women's bargaining power and hence the effectiveness and inclusivity of government programs. But, affects the development of local markets, hence the structural transformation of the local economy in 2 ways. First, NRLM social networks help explain the effect of programs like NREGA and investments in water, sanitation, and other social goods on local markets. This is the impact that Professor Murali Dharan had mentioned. NREGA's impact reflects the direct benefits it confers on participating households, but also the indirect benefits on non-beneficiaries through its effect on rural wages, just as he had said. But this effect exists for women only when they work. If they are not working, these indirect effects obviously are completely absent. Similarly, the growth impact of social investments in housing, water, and sanitation are magnified in economies where the time saving that they introduce enable increases in women's labor force participation.
Strong social networks and the social learning they foster make such changes possible. Second, the equity impact of social networks spurs the development of existing research suggests that growing rural incomes are most likely to promote local markets when income growth is broad-based. In contrast, an unequal distribution of income may favor the products of urban markets. This limits the growth of the local economy, inhibiting the development of local enterprises and female labor force participation rates. In closing, I hope I've convinced you of the importance of local markets and social networks for ensuring the success of rural enterprises and the transformation of the rural economy. The policy implication that follow is the need to nurture and strengthen these two key achievements. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And now I would request the last of the speaker in this session, Dr. Subrata Ayyappan, who is an expert in fisheries, to give his thoughts and views in next 8 to 10 minutes, because then we will prepare for the Honorable Prime Minister's speech. Thank you very much, Dr. Ayyappan. Thank you very much, sir. Sabiko Namaskar, esteemed Honorable Ministers, esteemed chairs, anchors, colleagues, delegates to the webinar, good morning and greetings. At the outset, I'd like to thank the Government of India for this opportunity. We are at momentous times in Indian agriculture and food production systems, whether it's terrestrial or aquatic. On one hand, we have climate change and the pandemics and stresses going on. On the other hand, continuous responses and strategies being built. With agriculture, food, nutrition, health, environment, and employment continuum being focused, the present Indian budget for 25-26 assumes great significance both for addressing the concerns in the country and also meeting the targets of the Sustainable Development Goals 2030, just 5 years from now. Specific areas of pulses, vegetables and fruits, high-yielding seeds, cotton productivity highlighted, and fisheries is an area that has come to the center stage. Three earlier speakers, eminent panelists, also spoke about fish, fisheries, and fishers. I'll take a minute on with regard to research backstopping for crop systems. As regards pulses, it is notable that there has been a 50% increase in pulse cultivated area in the last decade. For further application, over 410 climate resilient pulse varieties are available from the National Agricultural Research System, that is the Indian Council of Agricultural Research. The mission could undertake large-scale demonstrations, diversification, and intercropping. India is the second largest producer of horticultural crops, vegetables, and fruits to the tune of 353 million metric tons annually. The mission aims at complete process from production to post-harvest with enhanced institutional mechanisms in the form of FPOs and cooperatives. Seed being the basic input in farming, development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, which is very important, with commercial availability of over 100 seed varieties, with a strong research backstopping has been envisaged. As regards fish, the theme I'm to speak now, India is a 18 million ton fish country today. Fish figures prominently in Indian agriculture with an average annual growth rate of over 9%, highest among the domains in the sector. In the blue economy, in health, nutrition, and pharma, as also agri-exports and trade, constituting over 15% of the agri-exports to the tune of 60,000 crore rupees annually. 85% of the fish production is serving the domestic consumers with an annual per capita consumption of 8.9 kilograms. In the last decade, as was also mentioned by the Honorable Member of the Niti Aayog, there has been an 82% increase in total fish production, 114% in inland fisheries and aquaculture production, and 100% in exports. With a target of 24 million tons, that is 240 lakh tons of fish annually by 2030, and exports of over 1 lakh crore rupees, formation of the Department of Fisheries at the center, large schemes of blue revolution,
Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Pradhan Mantri Matsya Krishi Samriddhi Sahayojana are the major steps at accelerating growth and achieving the goals. The present focus is on sustainable fisheries and safety of the fishermen in the seas, with quality fish for the consumers. In efforts at greening the blue growth, the budget has set a tone for looking to the seas with new horizons in Indian fisheries. With a vast coastline of over 11,099 kilometers along 9 states and 4 union territories, the exclusive economic zone, that is 200 nautical miles from the coast, the blue waters are virtually beckoning us to invest and innovate for unexplored opportunities for food, entrepreneurship, employment, and exports. With nearly 38 lakh fishermen and 2.4 lakh fishing crafts, the present annual marine fish production is about 4.4 million tons or 44 lakh tons. That is 4.6% of the global captured fish. And the country stands at 6th position with regard to marine fish production in the world. With most of the fish stocks in the seas evaluated as healthy, the potential yield estimates from the seas are over 53 lakh tons annually. Also, there are non-conventional fisheries resources. If properly harvested and utilized, we can go up to 71 lakh tons of fish per year. When the commercially available fishing resources, conventional ones, are being optimally harvested, the fishery resources in the EEZ, exclusive economic zone, including the tunas, pelagic sharks, deep water snappers, shrimps, and squids, and in the high seas, myctophates and toothfish are still available. Their potential yield is over 2.3 lakh tons every year. Present catch is only of the order of 50,000 tons of yellow fin and skipjack tuna and about 10,000 tons of oceanic sharks. Seaweeds are another important resource for use as feed, fodder, agar, algin, etc. Another dimension being mariculture with sea cage farming that can yield up to 20 lakh tons in the long run with due backwarding cages. I'd like to mention about the National Policy on Marine Fisheries of 2017, which envisioned a healthy and vibrant marine fisheries sector that meets the needs of the present and future generations. The main pillars of the policy are sustainable development, socio-economic upliftment of fishermen, partnerships, intergenerational and gender equity with an ecosystem approach to fisheries management and participatory or co-management. It also recommends due consideration of resources, infrastructure, vessel construction, survey and certification, capacity building, implementable set of rules and regulations with a strong monitoring, control and surveillance program, MCS. The present budget announcement in fisheries pertains to harnessing fishery resources in the EEZ of India and high seas as a focused approach to unlock the potentials of EEZ as also important area beyond national jurisdiction. This can provide an economic boost to Indian marine fisheries, augment seafood exports, enhance food security, and generate new opportunities. I would like to compliment the Department of Fisheries, Government of India, and the fisheries institutes of the Indian Council of Agricultural Research for charting new paths. The two major island ecosystems, Andaman and Nicobar and Lakshadweep, possess over 45% of the EEZ of the country. The potentials are something like 1.4 lakh tons and 1.1 lakh tons of tunas respectively with regard to these two islands, and billfish and other oceanic squids and flying squids and so on. But the harvest needs different approaches as the gears mainly deployed presently are only long lines and gill nets. So the issues are with regard to connectivity, realization in terms of value, they being rather low value, risk management for a long stays in the seas, onboard preservation and storage facilities, and distant market linkages. Since we are also a partner in international bodies such as Indian
Indian Ocean Tuna Commission, Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, South Indian Ocean Fisheries Agreement, and so on. The approach is to enable fishing in the high seas in the framework of the regional marine fisheries organizations. It will also entail sustainable and responsible resource utilization through conservation and management measures, including combating IUU fishing, what we call as illegal, unreported, and unregulated fishing. Hence, the sustainability has to be ensured through very appropriate measures in terms of global standards, harnessed within the levels of maximum sustainable yields with fleet and gear optimization, area and specific fisheries management plans, and due biodiversity conservation measures. Tuna and seaweed clusters around the islands, fisher safety through transponders, AI tools, the insurances, the eco-labeling and fish stock certification, modernizing the fish landing centers and harbors, and cold chain infrastructure are the right steps in this direction. Data collection, analysis, very important. Identifying groups of fishermen. We already have fishermen with the fishing activity running through the families. They are very skilled. So it's important to identify such groups along the coast and equip them for a greater seaworthiness, long stays in the seas for 20 to 25 days, and train them in a new gear operation. So these will be very important, along with fishing vessel modernization and communication facilities. Then further, value addition is what is important when we talk of harvest from the deep seas and the high seas. This will be very important as a long-term strategy. We will have new experiences as we go along. As I said, these are uncharted paths, though we have had some experiences, some lessons learned, and we will have these experiences would be very valuable as we embark on this journey. They would make the venture robust and remunerative for sustainable fisheries management. I close with my tributes to the Government of India, to the present budget announcement, to the ministries, Department of Fisheries, Government of India, the ICR and all the related agencies, and millions of fishers who are there out in the coastal waters, in the deep seas. And for this transformation change, I must mention, the last decade has been a real opportunity transformation change in fisheries and aquaculture in the country. And presently we're in a very exciting phase of Indian fisheries. Once again, thank you very much for this opportunity. Namaskar. Thank you very much. We are at the end of this first inaugural session, and the Honorable Prime Minister will be joining me very shortly. I take this opportunity to welcome our Honorable Agriculture Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Rajiv Ranjan Singh ji, Shri Chirag Paswan ji, Honorable Minister of Food Processing Industries, Shri Jyoti Radit M. Scindia, Honorable Minister of Communication and Post, Honorable Giriraj Singh, Honorable Minister of Textiles, Honorable Bhagirath Chaudhary ji and Ramnath Thakur ji, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Professor S.P. Singh Baghel, Honorable Minister of State of Fisheries and Animal Husbandry, Shri George Kurian, Honorable Minister of Fisheries and Animal Husbandry, Shri Kamlesh Paswan ji and Shri Dr. Chandrasekhar Premmasani, Honorable Minister of State for Rural Development, and Shri Ramneet Singh ji Bittu, Honorable Minister of State for Food Processing Industry, Shri Krishan Pal Gujjar, Honorable Minister of Cooperation, and Shri Muralidhar Mohol, Honorable Minister of Cooperation, who are part of this session were joined, and they will also be part of this webinar. And my request again is that may please, there are few of the participants who are still in video off mode or video mute mode. It is requested that the video may be put on the screen, because everybody, including the Honorable Prime Minister, will be watching this screen. And there are few of the participants. My request again is to put on the video so that they are visible on the screen when everybody participates, and the Honorable Prime Minister also participates. Thank you very much. We'll wait for
his joining. Thank you. ये टेक्सटाइल वाला में टेक्सटाइल वाला all participants whose video is not on, kindly switch on the video. फिर से एक बार अनुरोध है कि जितने पार्टिसिपेंट्स जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो कृपया ऑन कर दें। एलेक्स निगाल है, श्री भास्कर है, कुछ और भी ऐसे नाम है। अदरवाइज हमको आपको ऑफ लिंक करना पड़ेगा। प्लीज वीडियो ऑन कर लें जो भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। मेरा फिर से अनुरोध है। ये नहीं आएंगे और ये अनम्यूट कर अनम्यूट भी कर लें। वॉइस अनम्यूट करें, वीडियो म्यूट करें। वॉइस अनम्यूट कर दें प्लीज। वॉइस अनम्यूट कर दें, वॉइस म्यूट कर दें प्लीज। वीडियो ऑन रहे और ऑडियो ऑफ रहे। सागर कौशिक जी अपने को आप वॉइस म्यूट कर दें प्लीज। सागर कौशिक जी वॉइस म्यूट कर दें। कर दिया, ठीक है, थैंक यू। लेकिन यार स्क्रीन पे आ रहे हैं ना। हटाए ना इनको। जरूर ये फोर्थ दिखाई पड़ रहा है।
हेलो। सागर कौशिक जी क्या कहना है? नहीं, माइक ऑन है हमारा, हमारी आवाज सही आ रही है? अरे फिर आगे प्लीज। NIC हेडक्वार्टर, NIC हेडक्वार्टर, PM सर आ गए। हेडक्वार्टर सर आ गए। हाँ ठीक। माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। बजट घोषणाओं के पश्चात आयोजित होने वाली पोस्ट बजट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन वेबिनार की श्रृंखला की पहली कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वेबिनार एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी के विषय पर आयोजित किया जा रहा है। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य सेक्टर से संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श तथा मंथन कर घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु रणनीति को अंतिम रूप देना है। मैं वेबकास्ट तथा यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी हितधारकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस वेबिनार को समय दिया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन देकर हमें मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। नमस्कार। बजट के बाद बजट से जुड़े वेबिनार में आप सबकी उपस्थिति बहुत अहम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखी ही है, साथ ही विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा। बजट से पहले आप सभी स्टेक होल्डर्स ने जो इनपुट दिए, जो सुझाव दिए, वो बजट बनाते समय बहुत काम आए। अब इस बजट को और ज्यादा प्रभावी रूप से नीचे उतारने में, सही में उसका अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी आउटकम मिले, सारे निर्णय नीतियां प्रभावी बने,
उसमें आप सबकी भूमिका और बढ़ गई है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। यानी इसमें किसी बिचौलिए के घुसने या लीकेज की गुंजाइश ही न रहे। नो कट की कंपनी। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आप जैसे एक्सपर्ट और विजनरी लोग, अगर उनका सहयोग होता है तो योजना जल्द से जल्द सफल होती है और ज्यादा अच्छा परिणाम देती है। आपके योगदान से किसी भी योजना को पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा सकता है। मैं इसके लिए आप सबके सहयोग की और हमेशा सक्रिय सहयोग देने के लिए आपकी सराहना करना चाहूंगा। अब हम इस साल के बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए मिलकर के तेजी से काम करें, यह आवश्यक है। इसमें भी आपका सहयोग पहले की भांति तो मिलेगा ही, लेकिन और ज्यादा मिले, और व्यापक मिले, हर सेक्टर में मिले। साथियों, आप जानते हैं आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। कृषि सुधार, किसानों का सशक्तिकरण और मजबूत वैल्यू चेन ने इसे संभव बनाया है। अब हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है।
ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्थी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में दाल का उत्पादन बढ़ा है और इसके लिए मैं किसानों का अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन अभी भी हमारी घरेलू खपत का 20% विदेशों पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। यानी हमें अपने दलहन उत्पादन को बढ़ाना ही होगा। हमने चने और मूंग में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन हमें तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और तेजी से ज्यादा काम करना ही है। दाल उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक है कि उन्नत बीजों की सप्लाई बनी रहे और हाइब्रिड किस्मों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप सभी को जलवायु परिवर्तन, बाजार की अनिश्चितता और दाम में आने वाले उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों के समाधान पर फोकस करना होगा। साथियों, पिछले दशक में आईसीएआर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में मॉडर्न टूल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। इससे 2014 से 2024 के बीच अनाज, तिलहन, दालें, चारा, गन्ना, विभिन्न फसलों में 2900 से अधिक नई किस्मों का विकास हुआ। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के किसानों को ये नई वैरायटीज सस्ती दर पर मिलती रहे। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों की उपज मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो। आप जानते हैं कि बजट में इस बार अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है। इस कार्यक्रम में अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इन बीजों के प्रसार पर जरूर फोकस करें। ये बीज छोटे किसानों तक पहुंचने लगे, इसके लिए इन्हें सीड चेन का हिस्सा बनना होगा। और ये काम हमारा है कि हम कैसे बने। साथियों, आप सब देख रहे हैं, आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसलिए बागवानी, डेयरी
और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। मेरा आग्रह है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स डाइवर्स न्यूट्रिशनल फूड्स के प्रसार के लिए नए रास्ते तलाश करें। ऐसे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की पहुंच देश के कोने कोने में और ग्लोबल मार्केट तक होनी चाहिए। साथियों, 2019 में हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। इस सेक्टर के वैल्यू चेन को मजबूत बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इसे आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे मछली पालन के क्षेत्र में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करने में मदद मिली। बीते वर्षों में कई योजनाओं के माध्यम से इस सेक्टर में निवेश भी बढ़ाया गया, जिसके परिणाम आज हमारे सामने है। आज फिश प्रोडक्शन 2 गुना हो चुका है। हमारा निर्यात भी 2 गुना हो चुका है। हमारा प्रयास है कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और खुले समुद्र से सस्टेनेबल मछली पालन को बढ़ावा मिले। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। मैं चाहूंगा आप सभी इस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले आइडियाज पर मंथन करें और उस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। इसके साथ ही हमें अपने पारंपरिक मछुआरे साथियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। साथियों, हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में आपके सुझाव और योगदान, इससे सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। हम सभी की सक्रिय भागीदारी से ही गांव सशक्त होंगे, ग्रामीण परिवार सशक्त होंगे और मुझे विश्वास है कि ये वेबिनार सच्चे अर्थ में जल्द से जल्द, कम से कम समय में अच्छे से अच्छे ढंग से बजट को क्रियान्वित करने का, और वो भी आप सबके सहयोग और सुझाव से करने का। अब ऐसा ना हो कि इस वेबिनार में
बजट नया बनाने की चर्चा हो। अब ये बजट बन चुका है, अभी योजना आ चुकी है। अब हमारा सारा फोकस एक्शन पर होना चाहिए। एक्शन के अंदर कठिनाइयां क्या है, कमियां क्या है, किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, उस पर जरूर हम ध्यान दें, तब तो जाकर के वेबिनार परिणामकारी होगा। अन्यथा हम एक साल के बाद जो बजट आने वाला है उसकी चर्चा आज कर लेंगे तो अभी जो हुआ है उसका फायदा नहीं मिलेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम जो बजट आया है अब उसी बजट से हमने एक साल में लक्ष्य हासिल करने हैं और उसमें सरकार अकेली नहीं, इस क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स एक दिशा में, एक मत के साथ, एक लक्ष्य के साथ चल पड़े। यही एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी के स्पीच के बाद समाप्त होता है और हम लोग के अब ब्रेकआउट सेशंस तत्काल आरंभ हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग अ ब्रीफ लंच। हमने इसको 1:30 पे आरंभ किया था, तो ये आधे घंटे का समय है कि आप जल्दी से अपना अगर कोई जल्दी से लंच जो भी उपलब्ध हो करते, अगर पहले भी शुरू करना चाहे तो आप 15 मिनट पहले भी आरंभ कर सकते हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स जो आइडेंटिफाइड है बोलने के, वो अपना उस उद्देश्य से कि इसी बजट को कैसे हम बेहतर बनाए, उसको कैसे हम मार्च तक ही नीतियां प्रख्यापित कर दें और उसका इम्प्लीमेंटेशन आरंभ कर दें। उस पर आपसे साथ मंथन और चर्चा होगी। ये भी अनुरोध है कि जो लोग इंटरवेंशनिस्ट की तरह या पैनलिस्ट की तरह बोलने का जिनको अवसर नहीं मिल पाया है, क्योंकि 2-2.5 घंटे में सब लोग नहीं बोल सकते थे, तो मेरा नोडल सब थीम्स के नोडल अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि वह अपना एक ईमेल एड्रेस जरूर सभी पैनलिस्ट और सभी अपने कार्यक्रम में पहले ही जरूर दे दें, जिससे वो ईमेल से अपने अपने सुझाव आपको अगले 1-2 दिन में दे सकें, जो लोग बोल नहीं पाए इसमें और लेकिन वो सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि हजारों लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं। जैसे हमें सूचना मिली है, कुछ वेबकास्ट से जुड़े हैं, कुछ यूट्यूब से जुड़े हैं और उनके मन में भी कुछ सुझाव होगा, तो वो आप एक ईमेल अपने नोडल में किसी का दे देंगे, 1 या 2 दे देंगे, उस पर सुझाव आएंगे, उनको भी आप इंक्लूड कर लेंगे अपने फाइनलाइजेशन करने में जो भी थीम रहेगी। इसके साथ ही मैं आप सबका विशेष रूप से जो पैनलिस्ट साथ जिन्होंने अपनी बात रखी, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामना देता हूं कि इस माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप हमारे अगले ब्रेकआउट सेक्शंस अब आरंभ होंगे। 3:30 बजे हम एक बार फिर मिलेंगे, जिसमें हम जो लीड सेक्रेटरीज हैं, 10 जो एंकर सेक्रेटरीज हैं, वो जो मंथन हुआ है उसमें क्या सार निकला है वो प्रस्तुत करेंगे और फिर आवश्यकता अनुसार माननीय कृषि मंत्री जी और बाकी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने बात रखेंगे, जिससे कि हम इस जो हमारे एंकर सेक्रेटरीज और नोडल ऑफिसर्स हैं, फिर रिपोर्ट बना के हम कैबिनेट सेक्रेटरी और डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को शीघ्र समय अनुसार भेज सकें और अपना कार्य भी तत्काल आरंभ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।
Khadi, how are you? शायद हम लोग excuse me Dr. Sivac. Yes, sir. I think we can join at 1:30 and we can leave now. That's what. Yes, yes. Yes, yes. शिवाज साहब आया हाजी क्या हाल है? बस अभी आप खाना खाओ. यस खाएंगे. श्योर. और क्या? कैसे 1:30 मिलते हैं. खादी साहब नमस्कार. हेलो. हाँ जी नमस्कार. नहीं रहने देना वो क्या.
नमस्कार अश्विन जी, कैसे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा। बढ़िया है सर, बढ़िया। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आप तो लेबोरेटरी में ही बैठ गए लग रहा है। हाँ जी सर, एक्चुअली आई एम इन लखनऊ, सो अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। चलिए, आप लखनऊ में देख तो लिया कम से कम आपको। जी। हेलो चक्रवर्ती साहब, चक्रवर्ती साहब नमस्ते। हाँ सर, नमस्कार सर। आप मुझे पहचानते नहीं है शायद। नहीं, आप, मैं तो सबको पहचान रहा हूँ सर। कोटक साहब को आपको कौन नहीं पहचानेगा। नहीं, आपको देखा तो मैंने बोला आपको नमस्कार करूं। सर मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको अभी तक देख नहीं सका मैं इसमें। अभी मैंने आपको देखा तो मैंने बोला चक्रवर्ती साहब को सलाम अलैकुम कर लूं। अरे सर, धन्य धन्य है आप। ऐसे हम जैसे छोटे छोटे लोगों को भी आप याद रखते। बड़े छोड़ो, अपना अपना मिशन अपने सबसे बड़ा है। कोटक साहब नमस्कार। कोटक साहब नमस्कार। अरे कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी सेहत कैसी है सर? आप तो हिसार के राजा है भैया। अरे सर, सर आपकी सेहत कैसी है सर? कितने कितने यहाँ लगे हुए हैं सेवक साहब, आपके कितने अवार्ड लगे हुए हैं। थैंक यू सर, ये आपका आशीर्वाद है सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं, देखो हिसार में काम बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे हिसाब से ये हो जाए बहुत विजन आगे किया हुआ है। प्लानिंग कमिश्नर, चेयरमैन हम अभी भी आपको याद करते हैं, मैं हमेशा याद करता हूँ। पहला नेचुरल कलर्ड कॉटन के ऊपर बॉम्बे में सेमिनार हुआ था, उसमें आपके वर्ड्स हैं, आज भी मेरे को याद है। नहीं, काम अच्छा होता है। मैं हिसार के रहता हूँ। आपका बुलेटिन आप बात पढ़ते हो तो मुझे भेजते जाइए ना। श्योर सर, श्योर। हाँ, तो मैं आपको मेरा एड्रेस ना बताओ, अभी लंच थोड़े शुरू हो गए। मैं ले लूंगा सर। अभी भी मैं जो है एक GLA यूनिवर्सिटी है सर मथुरा में, एज ए डीन कार्य कर रहा हूँ सर अभी। अरे तो साहब मैं नॉलेज का भूखा हूँ। अरे सर, हमें आपसे चाहिए सर, आज आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए इस मिशन में। तो जो आपके मैं कल पॉइंट्स आपने जो भेजे हैं, मैं पढ़ रहा था अभी सवेरे, मैंने रात को पढ़े आपके, मतलब आपने एक निष्कर्ष ऐसा निकाल दिया है कि अगर उस पर चलें तो अचीव हम टारगेट तो जरूर कर लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया है कि हम लोग बराबर करें। अभी टोटल वी हैव नॉट गॉन ऑन कंपोजिट कॉटन। यस, कंपोजिट कॉटन इकोनॉमिक्स में 1 एक्स्ट्रा बेल ऑफ कॉटन कैन गिव 5 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। यस, वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट को अधिष्ठान किया था, उसमें लिखा है कि 1 बेल कैन गिव डायरेक्ट 5 एम्प्लॉयमेंट। चक्रवर्ती साहब सर आपका भी मुझे कुछ बुलेटिन बनाते हो तो भेजिए, मैं नॉलेज का भूखा आदमी हूँ। सर मैं चैट में लिख रहा हूँ जो हमारे इश्यूज है ना, तो अभी तो मैं भेज, आप मेरे से शेयर करिए। मेरा नंबर है 98202। एक मिनट सर, 98202 960 38। शिवक साहब आपको भी कहता हूँ सर। हाँ, और हमारे ICSE के डायरेक्टर जनरल साहब भी बैठे हैं यहाँ। Yes. How are you, sir? Oh, how are you doing? Can you hear me? Can you see me? Yes, Eric. I saw you. I wanted to be talking to you. How are you? I'm doing well. Hope everyone. It was great to see you in Mumbai, and great to see you again.
Yeah. But the point is, I had a quarrel with Keshav that he didn't come with you to the Cotton Association function. He says that he didn't know, or he was not invited perhaps. I said, what is that? It is our own house. You should come in. And if I would have known, I would have invited you. But I didn't know about your seminar. I think Keshav had something going on. I forget what it was, but he seemed, I'm not sure what happened, but I think, Keshav gets really swamped. He's very enthusiastic and gets kind of overcommitted. Eric, I'm wedded to cotton. Yes. And the only angle is that the cotton gives a prosperity to everyone. Yeah. And that is why my life mission is only one commission. That is the cotton mission. Well, maybe your whole life is the cotton technology mission. Yeah, but we have to do a lot of work. Yeah. No, it's. We have a very leading person from Dharwad. Sir, कैसे हैं? Hello, everybody. Hi, Eric. How are you? Back home or still traveling? No, I'm home. So I was traveling for a month, so I'm glad I got to see everybody toward the end of the trip when I was in Mumbai and when I was in Nagpur and Delhi. So, but Ashwin ji, namaste. Sir, namaste, sir. Namaste, sir. काशिकर जी, आप कहाँ विराजमान होते हैं? सर मैं नागपुर में होता हूँ, अंकुर सीड्स में हूँ सर। अच्छा, तो आप CICR में है? नहीं सर, अंकुर सीड्स। ओ, आप अंकुर सीड? हाँ जी सर। अश्विन जी सर। I can tell you, Ankur Seed has done some wonderful work. Thank you, sir. Thanks a lot. With your blessings, we will keep doing good work. One seed which starts for M or something. I forgot your one seed. Yeah. It's an extraordinary seed. Can you send me more details about your seeds? Sure, sir. Sure, sir. I'll do that, sir. My telephone number 98202. Sir, I have noted it down, sir, earlier only. Yeah, when you was sharing with. And kindly, Ashwin, send me your number. Absolutely, sir. I have been reading about your organization, but I did not have an opportunity to meet you or interact with you. Ji, sir. It's a privilege to meet you, sir. Sir, I'll definitely write to you and send my number to you, sir. So, sir, we will do the revolution. Absolutely, sir. And I can tell you that Indian Seeds Company can do wonders, and private company could do wonders, but if we follow certain policy, and policy is very good. Thank you, sir. Thanks a lot. And here I would like to discuss with you a number of changes that we can make, and I want to be more enlightened on seeds, and that is I am reading on All Seeds Company. Okay. So I have started knowing pluses and minuses. So that is why, as a good friend, I would like to correct the situation so that we make our seed industry biggest seed industry of the world. Right, sir. Sure, sir. A lot of research on seed because our bank, when it was not a bank and when it was a finance company, I concentrated on seed project. Okay. And gave it to CCI at that time, but it was unfortunate that Indian mills came in my way. They say, what is the necessity? But I thought that seed is the need of the game. Yeah, absolutely. So, and for better farming, that is the first start. So,
as we said, good, अच्छी शुरुआत हो तो आधा काम हो जाता है. So it's always like if you have a good seed, I think definitely it have an impact. Yes, absolutely, you're right. Manish Dhagaji is also there now seeing. Manish bhai. So good that we are meeting here and having a time to chat with each other. Ji sir. I am glad. And sir, we are, Eric, we are doing lot of work with our Dharwad friend on, he's a very, very fine, Dr. Khadi is a very eminent person, very knowledgeable, and we are doing work on the colored fiber, naturally colored fiber. And this man has a lot of brain on original research. And I can tell you that if I am to recommend, I would like him to get a Padma Shri, if it is in my hand. Thank you, sir. Thank you. No, मैं खादी जी आपको बरसों से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि पर्सनालिटी है. Thank you, sir. Thank you. आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते हैं. Thank you, sir. So, I may tell you one thing about Manish Daga. Yeah. Manish Daga has done a revolution in farmers' cooperation. Yeah. Now, you and people may not be knowing, Eric, this may be for you, that there is a corporatization of farming, and farmer producer companies are a part of the company law. There is a separate law for the farmer producers company, and this farmer producers company, and the association has been formed by Manish Daga, and I think today in different commodities about 1200 or 1500 associations are there, units are there, Manish? How many? I can't hear you, Manish. Manish can't hear you. मनीष जी खान शायद नहीं होंगे वहां पर. नहीं है, वो बोल रहा है कुछ. सर आपको अनम्यूट करना होगा मनीष जी. यू हैव टू अनम्यूट. Unmute. बोलो भाई बोलो. Actually, I visited Anchor Seeds when I was on my trip to India, so it was very impressive facilities. No, this is the. Can you hear me now? Manish, how are you doing? Yes. What I was sharing, Suresh bhai, Mr. Eric and Chakravarti ji and Ashwin bhai is in India right now there are over 9,000 FPOs, farmer producer organizations, which are active, and it was initiated by the Honorable Prime Minister since 2017. They were activated. Over 1,200 FPOs are partially active in cotton. Apart from within them, about 800 FPOs are fully operational in cotton. In our All India Cotton FPO Association, we have 200 FPOs as our members, which are total strength of 100,000 farms. This is a very big thing, Khadi ji. This is where we should do something in ISKI. ISKI should become more active about various things, and this could be one of the points to promote FPOs more and more. Lot of potential. And second thing, Khadi sir, what we should do is
this biochar thing, the ICAC can do a lot of things. They have done a lot of work in Africa in biochar. Eric, for biochar, the whatever work you have done in Africa is an example. That could, if it could be repeated in India, we could do quite a lot of things. We can change the color of the whole carbon economy and increase the income by carbon credits to the farmers. Yes, sir. Yes. So, Eric, my request to you is, please do highlight this. It's on my list. I was going, if you saw my remarks, I'm definitely looking at that issue. That's one of the bullets that I'm going to recommend is, we want to move forward and set up that payment for ecosystem services. So it's in my remarks. It's, because, Keshav has done some calculating and it could add 50 or 100% to farm income. Yeah. And the other thing about it, of course, is that it also is a completely different stream of income. So it doesn't move, carbon credit markets don't move in line with cotton lint markets. So it's actually not just more money, but it's more stability because it's a hedge. So this is actually a top priority of ICAC. You have changed the color of Africa. I can tell you. ICAC has changed the color of Africa, and actually now today Africa is in a position to teach us. Not that we teach them, but they teach us. And that is all due to ICAC. And, I give you heartiest compliments for that. You and Keshav. I'll pass it to Keshav. And same thing can work a lot in India. Eric, yes, we appreciate your work in Africa. Your ICAC had invited me in 2023 to address the 26th country conference, but a lot of work in India is already underway. So with the intervention of ICAC and the Ministry of Textiles and Agriculture in India, I think we can do a lot of positive work for soil organic carbon also. Well, it's exactly, and actually Keshav and I spent some time both in India and later talking about essentially how to bring some more of those techniques to India. I know we did a training in Mumbai, but also the next step is once we've got, biochar, Prakashi, and Jivama working, and we do the payment for ecosystem services and carbon credit. My suggestion, Eric, can we have a working group along with ICAC together for this biochar? And what we have done in Africa, we are prepared from, Dr. Khadi is here, we are prepared from ISKI, that Indian Society for Cotton Improvement, under the chairmanship of Dr. Khadi. We can do something very strong on this kind of carbon movement. But yeah, we must have cooperation of ICAC. Yes, yes, sir. Very good, sir. And in coming seminar, I think we will include that also one of the topic for discussing and coming out with some implementable points. So implementable points, and because you are an innovative person and at Dharwad, what you have started is always something new. So Dharwad could be one of the harbinger of the progress. And Kem Lage, how do you find Manish Bhai? Yes, definitely. That is the first step, that will bring in all the thoughts into action. And since Eric is here, right, the top man of the world in cotton is here, so we must take an advantage that let's do something very constructive. We have our Prime Minister, but we also hear our Prime Person in cotton. Absolutely. Now, the conversation is very timely because it's actually something Keshav and I talked about as recently as yesterday about accelerating our work in the carbon market, because it really is, I think a lot of you know that if we actually make this happen, it's revolutionary.
it will change cotton economics. And so it is a top priority of ICAC. So we would very much welcome a working group, because this is an issue. I want to start implementing it. Maybe we will be able to make. I want to start getting it together this year. And you can send Keshav Kranti also for some time, and we will definitely do contributory support, and we can work out the funding part also, and there is no problem. Well, actually, all the pieces are in place, because, the constraint has been the funding to set up the infrastructure. That's all there is. I've got all the actors ready to go. I just had a constraint in terms of pulling those pieces together. So, there's a firm I've talked to. I know what they do. I've known them. I used to work with them at MCC. So, I mean, and in fact, I was communicating with them yesterday too. So this is very much front of mind. So maybe what we do is, Suresh and others, you could send me a joint email, send Keshav and me a joint email, and then I could actually communicate with this firm I'm talking to, and we could move pretty quickly, because a lot of the groundwork has already been done. We did like a strategic assessment with this firm. They've basically come to the conclusion that we could make this happen. We already have a lot of the finances and the business model already worked out. Keshav's already done some of the farm level research. So we're actually quite far along. So the carbon side's done, the Keshav side's done. So if there was interest, we could actually move pretty quickly. Because it's something Keshav and I have been working on for at least a year. And we're just looking for a place to deploy it. And the reason why this is distinctive is we want to have a model that does a few basic things. Number one, people pull on the line in the certification side make money, so it's sustainable. But number two, also some of it can help ICAC a little bit. But the bulk of the money, and this is what's important, the bulk of the money goes to the farmer. It is a farmer-oriented program, just enough to keep everything going and make it sustainable economically. But there are other schemes, but they tend not to send that much money to the farmer. We want to send as much money to the farmer as possible while ensuring the system is economically sustainable. Very good, lovely idea. So it makes sense. And the Honorable PM said today the 3 P's: production, productivity, and post-harvest management. So crop residue also comes under post-harvest management. So it would also serve under the national mission. Well, I think the idea too of just having it, maybe certified between an Indian entity, ICAC, and a certifier, it would make it really solid. And I think the distinctiveness of our model is that we're really trying to emphasize, maximizing payments to farmers as much as we can without undermining the sustainability of the system. Because sometimes what happens is people say, oh, we want to send all the money to the farmer, but then you don't spend enough maintaining the system and then it collapses. And that doesn't do anybody any good. So we have to be realistic about the cost of verification and measurement. Do that enough, and then we send the rest of the money to the farmer. So just to sort of give a calculation, if you look at a hectare, maybe we can generate 4 or 5 tons of carbon credit, 4 or 5 carbon credits. If the farmer gets, let's say, $80, like there's a minimum. 4 credits at $80, that's $320, a year. That's a pretty good chunk of, and these are very low estimates. I mean, I always like to estimate low because I don't want to disappoint everybody in the end. It would really empower the smallholder farmers. It's huge for them. It's huge. It could be 50 or 100% increase in their income. And so, that's just the biochar part. I mean, there are other things you can measure, but then it sort of gets complicated. So let's just go with something simple. And then once we've got something simple and it's well established, then we can build up from it. But let's just make it simple and get some money out. Dr. Mai has just joined. Dr. Mai, we have been talking about carbon, that is biochar, and Dr. Eric has
promised that we can form a working group and with ISKI, and ISKI can take up this improvement program of this carbon credits as well as using biochar all round. And it can be with the Dr. Khadi has said that he will assume the responsibility under, of course, your leadership. And Dr. Khadi he said that he will also give a stress to this particular point of biochar, because Africa, Africa has done wonderful work with the help of ICSE. And the whole color of Africa is changing in productivity due to biochar and other things. Africa is totally different, and they are coming to a stage where we have to learn something from Africa. I have been in touch with Africa. So Dr. Eric, Here in Nagpur, Eric was in Nagpur. We discussed a lot of things with him. And one of the projects which is key, is need to sponsor, is about biochar. So because we have decided that ISKI group can be formed, and we support ISKI, through ISKI, a major kind of a research, or maybe some locations where we can add biochar and take the experiment. And he has promised that I said we can contribute and support, and from ISKI, and of course I would be there to be helpful. We can invite Keshav Kranti, and under your leadership, Dr. Mai, something can be done by Dr. Khadi. Yes, good afternoon to all of you. We will be having this breakout session shortly. We are just waiting the Secretary Textiles for a few moments. Everybody, no, I'm really. This has been actually a really good discussion, because we're very focused on this biochar and carbon markets issue. So your timing could not be better. It's something we literally talk about every day now. Yes, I agree. And our Dr. Mai, Dr. Khadi, Manish Bhai, everybody is here, and we'll push it out. Maybe the next step is everyone who's interested, maybe Suresh, you could send an email to Keshav and me and copy those who are interested. And as soon as I get the email, we'll find a time to start this discussion. And also I could go back to this carbon company I've been talking to and say, well, what do we need to move ahead? They actually just pinged me yesterday. So again, this is a very much a live topic. This is less than 24 hours old, so we can pick up pretty easily. So this is great. It's one of my favorite topics, actually. So now, Madam Secretary has arrived. I'll begin now the session on the mission for cotton productivity. Respected Madam Neelam Shamirao, Secretary Textile, Additional Secretary, Minister of Textile, Joint Secretary Fiber, Economic Advisor, Joint Secretary from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, ADG Commercial Crop, Jute Commissioner, senior officials from the Jute Board, Ministry of Agriculture, ICR, CICR, other ministries, departments, esteemed Speaker, Shri Suresh Kotak, Mr. Eric Trachtenberg, Executive Director from ICAC USA. Please enter the PIN followed by the pound key. Interveners, guest valued member of the cotton and textile value chain. A very warm welcome to all of you at this post-budget webinar on agriculture and rural prosperity, with a focused discussions on the mission for cotton productivity as announced in budget 25-26. As part of this breakout session, I would be inviting the Secretary Textile to set the tone for our discussions, paving the way for fruitful discussions and impactful decision making. Following that, we will hear from eminent speaker Shri Suresh Kotak, Mr. Eric, as well as our panelists, who will share their thoughts on the mission and propose two to three major recommendations for its successful implementation. In the second part, starting at 2:40 p.m., we will invite the interveners
to share their suggestions on how we can enhance the efficiency of the mission for cotton productivity, addressing current and future challenges, and ensuring timely implementation. Given the limited time and the fact that we may not be able to hear from everyone during this session, we encourage all the participants to share their valuable inputs either through chat box, WhatsApp number, or email ID, which is on your screen. I would urge you all to provide feedback as soon as possible so that we can consider all these suggestions. I also request the panelists to keep their remarks to a maximum of about 4 minutes and interveners to limit their contribution to about 2 minutes. So please also avoid repeating suggestions that have already been made. The deliberations today will play a crucial role in shaping the policy decisions that will transform India's cotton sector. Now, with that, I request Secretary Textiles to begin. Thank you, and a very warm welcome on. Discuss about many of the aspects of the cotton productivity mission, which has been announced recently in the budget. And this mission will be worked on, and the targets will be decided after due deliberations, and this is first of those deliberations. I welcome you all. The questions that I really want to pose in front of you. There are three things which I'm just going to mention, which we keep on doing relatively in the textile sector, since we are the end users of the cotton mission. Number one, our targets for 2030 in general for textiles have been set and pegged at both of our existing market size from 176 billion to 350 billion USD. Now that would mean almost 15% of annual growth rate. And if we apply it across the board for every single thing, including cotton, what should be that we are looking at? Number two, that we want to almost treble our exports from current 36 billion USD to 100 billion USD. That tantamounts to almost 22% of the growth in our exports of certain things. So this being the two primary things which we are trying to really achieve. And everything is the end product or something derived out of it. Now, needless to say, cotton area is shrinking, productivity is shrinking, and if we really look at, then there is an effect on our exports also. The availability of raw material is being said and pegged as one of the key concerns. When it comes to exports, there is certain thing about the product which is being wanted and needed by the external market. The export market is looking for extra long staples. It looks for very zero contamination, high quality, high value cotton. And our current framework of Kasturi does support that. But Kasturi cotton is only 1% of our total production. How do we really increase it to say 10%, 15% of that the next 5 years? How do we achieve that target? So this cotton productivity mission, therefore, in the backdrop of these targets which have been set for us, look at two primary issues. One, that of quantity, and two, of quality. While looking at the quantity, it should look at increasing the farmers' income, certainly, by bringing in the short-term measures of improving the way you do the agriculture. One, in the sense that
a high density thing could come, general better management of pests could come, general better management or extension work could come, and all those things. So there is a short-term strategy which I would request the agriculture to consider and debate upon what those short-term strategies should be. The second is, which is very, very important, and you heard that since 2006, we have really not worked on, and then we are trying to work upon certain new varieties. So how do we get in new varieties that actually increase our yield from the current levels to almost double it? And if I may say so, and these are two very, very engaging feedbacks or the statistics in cotton, which we are looking at, that world over, the productivity is almost 5 times than that of India. That's the first one. And the second one, the new initiating countries like Brazil are adding and exporting almost 1 lakh bales India almost every single year. We certainly don't want to lose our traditional edge. So agriculture must look at the issue, and farmers will keep on moving away from cotton if we really do not get into the economics of cotton and we do not get into the science of it. So while looking at those things, kindly come up with a program which looks at the short measures and which also looks at the long-term strategies for getting in the seed varieties which are suitable. While doing so, let us not lose our edge on our own inherent extra long staples, the things that were at one point of time being done in Polichi or are being done in certain districts of Madhya Pradesh and Maharashtra and many other states which are inherently native to India and are extra long staples of that variety. Then there is a lot of work that is being done in field, which you are very well aware of, about organic cotton, which you all are spearheading. So let's not lose our sight on that portion also. The second one is the issue of quantity, which we must, or quality, which we must deliberate on the Kasturi cotton. As I said, we are hardly 1%. Our certifications, our ginning methodologies, our mechanics of it, our technology behind it needs to undergo the change. It needs to improve. We must come up with a collective vision on how we can bring the ginning closer and make it much more better. Also, how do we really improve the market conditions, the market interventions in cotton while doing so will also be very, very important for the farmer's point of view. Last one being the blends and the other natural fibers like milkweed, like jute, like flax, like so on, many other things, remis and agave and etc. And there is a scope of using them as a blend elsewhere or for their applications. A small R&D and innovation thought should be considered, and that should be put in as a mini mission. Now, with these 3 tasks ahead of us and a very, very ambitious target, how do we really translate our discussions and deliberations today? Will be able to show and pave the way for better scheme for cotton productivity mission. So thank you all for listening to me, and I would request you to, while you are delivering your points, please ponder over what I have said. And we don't want to lose the edge. Somebody yesterday asked me that when did we become number 2 in cotton? And that is something which I want to really repeat, that let's make India number 1 again in cotton, and let's work towards it for better quality of cotton and a more sustainable ecosystem and sustainable framework for the cotton by reducing certain footprints. So thank you.
Thank you very much, ma'am, for setting the roadmap to enable us to achieve the ambitious targets laid up to 2030, and also touching the areas which will enable us to achieve these targets. Now, may I call upon Sri Suresh Kotak ji to Thank you. say, Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I am very glad to be associated with this. And first, I must compliment Neelamji for giving a good outline, a good framework, and a comprehensive framework to set the tone and the temper of this particular seminar. Because this gives a very clear idea that you have said about the concerns of the end users of the cotton, that is the textile value chain. So virtually you have tried to work out from the, am I audible? Yes, you are. So roots to the shoe approach, and with a strategic approach about quantity, quality, and various kind of things, auxiliary and synthetic, the synthesis of various points which can help to achieve our goal. And the strategic point which I have tried to work out very in a quick fix manner, and you have talked about long-term strategy, that also is correct. But we have to have some very strategic and rapid suggestion. My urgent quick fix suggestions are, first is the drip irrigation, which even Dr. Mai stressed. Drip irrigation will give immediate result, Neelamji, so that because our areas are largely rain-fed, so it gives a very quick result, and we will start improving our productivity right away. And secondly, the biggest defect of our farming system, Neelamji, is, and I would request all the agricultural ministry and everybody to note one fact, okay, our rain mapping with time with sowing with a long duration seed is the basic cause. And when our flowering point starts, at the time we get famished, the plant gets famished, undernourished, and that is the principal reason on which we are getting low productivity right away, despite the fact that we are doing various points. But this particular point needs to be avoided, which could be highlighted by agro scientists and has to be worked out, and a rain mapping and our sowing as per the rain mapping, and that is what is being done in various countries of the world. So if the rain mapping is properly done, then all the problems of pink bollworms, the diseases, the white fly, and all that kind of thing will definitely disappear, or it will be much more lessened. And this needs a highest priority, as the short-term growth seeds available, and there are seeds also available for short-term duration with CICR. I think CICR must concentrate on this aspect. So this is my two valid points. And third thing, what we have to do is also improve our inequality, our ginning, and our ginning is still, of course, Cotton Corporation has set up a role model by reducing trash to sufficient extent. But the ginners of the country, which are number 4,000, they have still not adopted all the practices of Cotton Corporation's model. Cotton Corporation has given a good model that the trash should not be more than 2%. And if this is done, we will our flag of quality will definitely become higher. The second aspect, our flag of quality can be higher with introduction of what we already have for Desi cotton,
when we sell to Japan. Japan insists that we must have a super cleaner used. The super cleaners are used in the ginning factory, specially made when the desi cotton for Japan is made, and we get premium. And once upon a time, the desi cotton got very sufficient premium. And today also, we get much higher prices. But it is unfortunate that the desi cotton arboreum, the production has gone down. So this is another point which I would recommend to your attention, Nilamji. Now, the other things are also we have to utilize our carbon, improve our carbon system. We have the cotton plant is known to be having a highest capacity and very capable proven capacity, and this has been implemented by ICAC, for which Eric can tell more, implemented by them in Africa. And in Africa, they have changed the position and used carbon for using the fertility and heightened the fertility of the soil, and that gives a very good advantage of capturing carbon. One, storing carbon in the land. Two, third, making the whole soil productive. That is number three. As a matter of fact, our soil study are still weak, and because of lack of phosphorus, our strength in quality is also weak. So we must also, the agriculture department, I would recommend. I have traveled all the countries of the world in cotton, and I would recommend very strongly that by addition of this kind of nutrition and this kind of thing, we can definitely sufficiently, efficiently, in a shorter time, we can produce the results. Of course, so Japan, for example, has developed an effective scientific system called bokashi to capture the carbon and utilize it as a recycling measure for fertility. So if these are such measures are utilized, we can get a great advantage. And the fourth point I would say is in the seeds, we must improve the ginning outturns. Ginning outturn today is calculated between 33 and 35 we are obtaining, but the world is obtaining 40%, a minimum 40%, 38 to 42. So if the fiber outturn improves, there is a significant rise of the productivity immediately right away. So this is another suggestion which I would like to make. And the fourth thing which needs to be avoided in India, which is a blemish of India, and that is a greatest blemish is adulteration. The adulteration of one variety with another is a big bane of our cotton, and it gives us the poor working results, and the whole textile value chain gets affected. And unless this is worse than even contamination, because even today the cotton waste is being mixed, and we are trying to lower the value of our cotton, though with all efforts of agriculture department, with all efforts of everybody, this is a wrong practice with the ginning. Of course, here the model is again CCI. So I would request a CCI model be adopted, and that is how the Kasturi brand is a great initiative, and lot of work is well done by Tax Proceed to not only work at the higher level of promotion, but go down deep to the ginning factory. As a matter of fact, Tax Proceed is going to the ginning factory, and I am also together with them, and we go to the farmers also, so that the kind of the quality starts from roots to the shoots. So the textile value chain, in order to improve whatever you have enunciated in the beginning, that we have to, your two primary aims is availability as well as quality, quantity and quality
both could be achieved by this method. And the kind of your co-extension with other fibers could be very well worked out, as in Japan. Toyoshima is already working on this kind of project, that all the natural various kinds of fibers can work out together and they can provide a synergy to our total system. These are the few points I would like to enhance. And let me tell you, I would like to appreciate our Prime Minister, that this is an action performance, and things the attitude is make things happen, and you have emphasized that make things happen, and let's have Swachh cotton, and Saksham cotton. Thank you very much for my suggestion. Precise and short about. Try to complete, please. Thank you so much. Mr. Eric, unmute and. Okay, can everyone hear me? Yes, very much. The biodata. Biodata बनाया था हाँ, biodata भी issue. Flash irritated. उसमें क्या फिर वीडियो साइड में जा. Right, 2 मिनट जब आपने एरिक बोला देना चाहिए उन्हें. डिस्प्ले इमीडिएट करो एंड आफ्टर दैट स्क्रीन फुल कर दो स्पीकर की. Common sense. Hurry up. Rarely available though. Mr. Eric, please continue. Okay. Yeah. It's not available, I guess. Sure. Okay. Hello, everybody, and actually, Secretary Neelam Shami Rao, it's great to see you again. It was a pleasure meeting you in Delhi. There are a lot of familiar faces, and it's great to see everyone again. But first of all, I'd like to start up by congratulating India on its 5 billion rupee mission for cotton productivity program. And I think the program recognizes the imperative of development in India's cotton and textile industry. And I guess I'd like to talk about 3 things in the time that I have, is talk a little bit about advantages and challenges, and then the mission, and then opportunities to do other things. We all know that cotton has some advantages. It's a natural fiber. It can reduce poverty. It can be a powerful tool for women's empowerment. In fact, I think in India, 40% of cotton farmers are women. It's a powerful drive. It can really fight against climate change. This is a topic we've been talking about quite a bit before the panel started about sequestration. It can grow in dry conditions. And India also has an advantage because of, for various different geopolitical and economic reasons, there is a move away from China in the cotton and textile space. But we all know that cotton faces some disadvantages, some challenges. We have a falling market share, but I actually think that we're looking at the wrong thing. I think trying to compete for the lowest possible priced clothing is probably not where we're competitive. It's more expensive than synthetics. It's a natural product and has variable quality characteristics. And there are misconceptions about cotton and the regulatory issues in the EU. And of course, we all know there's a question of farmer poverty and low yields because of pest, soil health, and other issues. And one of the things that I think is really interesting about the mission for cotton productivity is that it really is targeted to a lot of the binding constraints. I know it's looking at things like low prices and soil health and disease and pest pressure, especially from the pink bollworm, and it looks at soil health. And so there are a lot of parts of that program that look like it could really make a difference. But what I wanted to do is really focus a lot of my discussion on the other opportunities. The first is actually a topic we've been talking about quite a bit
is establishing a payment for ecosystem services. And the idea, what we want to do is work with our Indian colleagues to set up a system where farmers get paid not only for cotton, but they get paid for carbon. And our chief scientist, Keshav Kranthi, has done a lot of the calculations. We've set some of the basis up for that system in Africa, but we've never really taken it to its conclusion about you use biochar, bokashi, and something called jivamrit, which are microorganisms. And the idea is you can generate highly verifiable carbon credits, and those can be sold. And we want to set up a system whereby the farmers get most of the benefit. We have to have enough of the system so it's sustainable. But the idea is that it could potentially double farm income from cotton, but also provide a completely detached, separate stream of income. So it would be more money for farmers, and it would be more stable because cotton markets don't move the same way as carbon markets. If it did, it would just be a coincidence. So that's something we want to do very, very soon. And this is before the panel convened, we had actually a long discussion about this. The second issue, of course, is strengthening certification and traceability, since this is increasingly becoming mandatory in the EU and is increasingly required by brands. Harik, unmute, please. Yes. That did not happen. Sorry about that. So the idea is to strengthen certification and traceability because it's mandatory in the EU and it's required by brands. And so I think we need to find ways to help farmers become compliant with these systems because it's very expensive for them to come into compliance. Kind of a third element, and we discussed this with a few people in India, is seed funding to develop new and appropriate machinery that's deployable to smallholder farmers. Mechanization is mostly focused on the large-scale machinery, but we really want to reduce the drudgery to the smallholder farmers. So there could be sort of a seed capital or technology challenge. It's something I talked about during the trip. We've worked with some people. I've worked with some people in my past jobs on technology challenges. A fourth issue is sort of developing textile technology to make cotton more competitive in technical performance uses such as moisture wicking or water resistance or stretching or durability. And to sort of take these technologies to the world, ICAC is developing its Cotton Innovation Platform to help cotton compete by making these new technologies available to make cotton competitive with synthetics. And finally, I want to end just with the important case that we need to show the world that cotton is a global public good. It supports livelihoods, 10 million farmers in India. Women, 40% of cotton farmers are women in India. The environment, dealing with microplastics and reduced greenhouse gas emission. And I do believe there could be a premium to pay maybe 10 or 20% more for products that have sustainability claims that are trusted. But we need to make the case to brands, consumers, the environmental groups, regulators, and others. And it's always important to remember, and this is where I'm going to stop, is when you actually look at the truth about cotton, it only occupies 2.5% of global cropland and less than 1% of irrigation water and uses less than 5% of pesticides by value or volume and only 2.8% of fertilizers. So as we go forward, I think it's really important to show the case that when you buy cotton, it's not just a fabric, or as they used to say in the US, the fabric of your life, but also you're doing a lot of other good. So for India, for the world, for customers, and for the planet. So I'm going to stop here, but I look forward to the discussion and seeing how we can work together. Thank you, everyone. Thank you, sir, for your valuable inputs and also the initiatives taken by ICAC, more particularly for the maintaining the health of the soil. Now, I may invite Dr. B.M. Khadi, cotton breeder and ex-director at Nagpur. Kindly. Thank you, sir. Thank you for the opportunity.
I would like to talk on the priorities in cotton breeding to increase the production and productivity in India. As we know, in India, cotton is cultivated in 157 districts. Out of these 157 districts, 75 districts are less efficient districts, where the cotton productivity is hardly 350 kilograms per hectare. Now it is time to take care of these less efficient districts by dissemination of the required technologies, especially the varieties and other technologies. As far as increasing the production and productivity is concerned, already we have experimented a number of years. The adoption of high density planting system is the only answer now to increase the production and productivity in India. As we see, the countries like Australia, Brazil, Turkey, China, USA, Mexico, which are having the high productivity, it is more than 1500 kilograms. It is mainly because of the adoption of the high density planting system in those countries. And secondly, already about the genetic percentage we have talked. Our genotypes hybrids, what we are growing is hardly 32 to 35%. And we have genotypes with the 40% genetic counter. By adoption of such genotypes for the high density planting system, I think it is we can enhance the productivity automatically. And also we have to learn the lesson from the stories of the Brazil and China. I would like to make a mention here that in 1990, Brazil was having the productivity of hardly 380 to 400 kilograms per hectare. But today it is 1800 kilograms, which is mainly because of development of early compact varieties, which have been adopted under the high density planting system. This is the one reason. This is the high density planting system is the only game changer in Brazil. To increase the production and productivity in India, it is required to adopt already available genotypes with 0 to 1 monopodia, early maturity of 100 to 120 to 140 days, maximum of 165, big bowls, at least minimum of 4 gram per bowl in case of hirsutum. And also I recommend here that the herbariums are also having very good potential, which also can be thought of having more than 3 gram per bowl with high GOT of more than 35. Minimum it should be 35 and we should aim for the 40. And high harvest index of 0.4 is there and we have to aim for the 0.8. The simultaneously the genotype suitable for the SDPS has to be developed for different cotton growing zones. As far as China is concerned, they have adopted only one gene, that is the single gene of Cryonesia of Monsanto and their own, right from the 1997, putting into the varieties, and they are cultivating the single gene, Beauregard 1 cotton varieties under SDPS. And also they could able to manage the resistance for the Polyphagus helicoverpa by utilizing the natural refuse strategy, that is growing the cotton with the corn, soybean, peanut, vegetables, and other crops, and also to for the monophagous weak migratory pests like pink borer, they could able to use the seed mix refuse strategy. That is the structure. One is the natural and another is the structure. These have been used by actually growing F2 generation. They grow in a larger area. Last 20 years, they are cultivating the F2s of BT into non-BT, where 75% of the population will be BT and 25% will be non-BT. May I request to complete in another 1 minute, sir? Yeah. And they are having the 1800 kilograms per hectare is the the productivity, and also they could able to manage the resistance development for the borers. In India, we are growing the BT cotton of F1, and I don't know whether we'll be able to have the high density planting system for the hybrid, because production of hybrid seed in larger quantity is going to be a problem because of the labor constraint. And lastly, I would like to say that urgently it is required to demonstrate and multiply seeds of the available BT cotton varieties, both Arboreum and Hirsutum, with 0 monopodia or 1 monopodia and early maturity, compact, high grazing outer, high harvest index, which are already available, have to be
demonstrated and multiplied, and then simultaneously we should require to breed the cotton varieties and herbarium genotype suitable for the SDPS with the required traits. Lastly, the ELS cotton. We have a number of varieties developed recently, can be thought of again, trying them with the high density planting system to increase the production and productivity of the extra long staple cotton. That's all I want to put forth. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. We have noted your inputs. Dr. P.K. Chakravarti, former ADG and member ASRB. Thank you, sir. Please share your views, sir. Chakravarti. Unmute and please speak, sir. Good afternoon, madam, and my other fellow participants. One of the major reasons of lower production and productivity of cotton is in India is due to 30 to 40% losses in yields caused by insects, diseases, and weeds every year. Nearly 17 to 18 chronic, emerging, and re-emerging diseases are prevalent in all three major zones of the country. Some of these diseases are specifically located in certain specific zones. This include cotton leaf curl virus, root rot and fusarium wilt in North India, rust, verticillium wilt in South India, alternaria leaf spot, grey mildew, and reniform nematodes in Central India, and very severe outbreak of boll rot, Corynespora leaf spot, which is target leaf spot, and tobacco streak viruses in all the three zones. So these are the 17-18 diseases which are affecting. The losses, the nearly 65 to 70 lakh bales of cotton worth 3,850 crores is lost every year due to diseases which, if managed, could contribute to additional 65 to 70 lakh bales of cotton. The losses could be mitigated with the help of IPM, following good agricultural practices and observing field sanitation measures, which nobody follows nowadays. Seed treatment with biopesticides, novel agrochemicals must be made mandatory for controlling seed and soil-borne diseases, because that gives about 70 to 85% of the disease control is given, and when the primary inoculum appears from the seeds or soil. Use of eco-friendly tools as biostimulants, smart formulations containing small peptides, all these have already come. Express gene products, volatile organic compounds, biopesticides, and novel chemical pesticides should be followed judiciously. Precise AI and IoT-based diagnostic tools such as volatile organic compound sensors, based electronic nozzles, prediction and forewarning decision support system, use of novel formulations for use with drones. Drones have been approved, but the formulations have not been made, which are the competitive, the older formulations or conventional formulations of pesticides are only there. So they need to have a faster deployment of drone-specific use of formulations. Genes from the wild species, we have 50 or more than 50 wild species. They are the resource for all the genes which are there present for various traits. Genes for wild and species should be identified for creating climate resilient cultivated varieties of cotton. Marker assisted selection and marker assisted breeding should be intensified. These are the marker based detection of resilient cotton or biotic stress resilient or disease resistant cotton is one of the most advanced area. And the state of the art GM technologies should be given fast track approval, because the cotton is the only example where India only showed the tremendous reduction of pesticides and use of pesticides, and it was highly successful in the country. And these include SI and MI RNA based genome, because these are not getting integrated into plant system, so they does do the function and goes away. The genome editing of susceptible genes to create resilience used
elsewhere must be given fast approval. Regulatory policies governing registration of these new and novel tools, technologies should be made possible for fast track with ease of doing business, approval and ease of doing business. Another very last one point is GST on biopesticides and biostimulants. These are the biologicals. Is 18%, as it is same as chemical pesticides. In contrast, 0% GST on seeds and 5% GST on fertilizers are charged. So all are agri inputs for the successful cultivation of crop. So why it is there? Why it should not be harmonized? And madam, last one point: the for fast track mechanization, for fast track mechanization of cotton harvest, we need fast track approval of herbicides like glyphosate, because all the studies have been made and submitted. Only it is awaiting the nod from the government authorities. And the defoliator, this defoliator, chemical defoliator pyraflufen, 2.5%. This has also been this has been approved by the Central Insecticide Board and Registration Committee, but it has not yet seen light of the day. So these are the things I would like to have said here at this instance. Thank you, madam. Thank you, sir, for the kind inputs. Now, may I request Dr. Ramasamy, Chairman Rasi Seeds. I would request you to please give 2-3 major suggestions and try to complete within 3 minutes, sir. Thank you so much. Dr. Ramasamy. Unmute, please. Dr. Ramasamy? If he's not okay. Yeah. The private industry will be gearing up to develop suitable hybrids to achieve the goal. I suggest the following few steps to help the farmers to increase their productivity. High density planting system with the support of government special project, we were able to demonstrate the yield increase by 30 to 40% and beyond during conducive seasons. There are some challenges which has to be addressed by the mission. First of all, we have to convince the farmers to shift from the conventional low population system to high population, that is from 7 to 8,000 plants per acre to 25 to 1,000 plants per hectare, which need a lot of extension activity. The seed industry alone cannot complete it. Government side, it should be given a great importance for promoting this technology to the farmers. Though there is about 20 plus hybrids already approved by ACR, we need more hybrids to suit various agro-climatic conditions for high density planting. Cultivation has to depend on large labor for various operations like planting, spraying, harvesting, which becomes increasingly difficult. We need to mechanize cotton cultivation from seed to harvest to make ease of cultivation, thereby reducing the farmers' cost. There are 13 million hectares, 6.5 million farmers, needs huge requirement of implements. Special steps needs to be taken to encourage farmers and custom hiring centers to help the farmers to adopt the mechanization. Continuous effort has to be taken to create GM technology to control bollworm complex. It is not like that what has happened with Bolgard 1 and Bolgard 2. The further technology has not come up. So it should not happen like that. We should encourage the companies, Indian companies who is capable of doing it, to come out with the continuous technologies
for the benefit of the farming community. Immediate steps to speed up the regulatory process to the current technology for pink bollworm control, which is under regulatory process developed by some Indian companies. By adopting the technology to control pink bollworm, the yield will increase by 20 to 25%. We should increase the ginning output more than 42%, which will help us to achieve the goal of more than 1,000 kgs per hectare, and we will be able to reach the ultimate 450 lakh bale by 2030. Regarding the ELS cotton, the importance given is very encouraging. We need to develop and introduce new ELS hybrid with fiber parameters of industry requirement. It should be bollworm resistant, virus resistant, early with high ginning output. We need to have good support from the mission. The present hybrids available in the ELS all susceptible to pink bollworm. May I request to complete, sir? This is my last thing, sir. Thank you very much, sir, for giving me the option. Thank you so much, sir. Now I invite Shri Gurjeet Singh Barar, Joint Director, Cotton, Government of Punjab. Thank you, ma'am, and thank you, participants. As I am Joint Director Agriculture as well as a cotton farmer, I am doing cotton cultivation since I from start farming. I am talking about the issues related to cotton faced by the states and the farmers basically. मैम पंजाब में कॉटन का एरिया काफी ज्यादा था, 8 लाख हेक्टेयर के आसपास था। ये कम होता होता अब ये है 24-25 में 1 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसमें हमारे सबसे ज्यादा 92-93 में था जब ये 8 लाख हेक्टेयर था। उसके बाद ये कम होते होते 4 लाख हेक्टेयर रह गया, और जब 2005 में बीटी कॉटन हमने इंट्रोड्यूस किया तो ये अराउंड 6,50,000 तक अप हो गया। उसके बाद ये फिर जब ये 17-18 में पिंक बॉलवर्म का अटैक हुआ तो उसके बाद ये फिर कम शुरू हो गया। 24-25 में मैं ही कॉटन देख रहा था पंजाब का सारा, एज वेल एज मेंबर ऑफ नॉर्थ इंडियन जो आपने कॉटन की बनाई थी टीम, तो उसमें हमने काफी एफर्ट्स किए थे, बट एंड में जाके कुछ वेदर की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि हमारा वो फिर ज्यादा सक्सीड नहीं हो सका, और 25 में आके 24-25 में आके हमारा एरिया रिड्यूस होके 1 लाख हेक्टेयर रह गया। तो इसमें अनुरोध रहेगा सर आपसे कि अगर प्रॉब्लम जो है ये सभी को पता है तो इसका अगर कोई सोल्यूशन या कुछ अगर आप मैं वही हम काम कर सके। इसमें हमारे 2-3 इशू हैं जो मैं कहना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिंक बॉलवर्म का अगर जो कमर्शियलाइजेशन है उसकी वैरायटीज की या उसका कोई हाइब्रिड है उसको थोड़ा स्पीड अप किया जाए तो ये हमारे लिए बेटर होगा। जैसे उसके ट्रायल्स लग रहे हैं, वो इस साल ही अगर कमर्शियल रिलीज हो जाए तो एरिया एकदम बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर इस हमारे मार्च अप्रैल में सोइंग स्टार्ट हो जाती है अप्रैल में, तो अगर एमडीटी पे हम कुछ ना कुछ करें तो एमडीटी का काफी हमारे सक्सेसफुल एरिया रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिशन में कुछ एमडीटी पे इनिशिएटिव लिया जाता है तो इट विल बी बेटर। एंड तीसरा, हमारा पिछले साल जो एज ए पायलट डिस्ट्रिक्ट्स हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेरोमोन ट्रैप्स लगे थे, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, बट वो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में लगे थे।
तो अगर उनको थोड़ा ज्यादा लगा दिए जाएं और सभी जगह लगा दिए जाएं तो उससे एक मॉनिटरिंग पिंक बॉलवर्म की बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो वो एक अगर सभी ये नॉर्थ इंडिया का जो कॉटन बेल्ट है इसमें इसको बढ़ाया जाए। और तीसरा हमारा जो था कि एक बीटी कॉटन के सीड पे हमें किसी भी स्कीम में सब्सिडी नहीं है, जैसे सीडीपी है या कुछ है उसमें बीटी कॉटन पे हम सब्सिडी नहीं दे पाते। तो उसमें क्या रहता है कि सब्सिडी ना होने की वजह से ये हमारे किसान कुछ गुजरात से ले आते हैं या वो F2 सीड बीज देते हैं, जिससे आगे हमें प्रॉब्लम आती है कि वो अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसको इंक्लूड कर लिया जाए इस कॉटन मिशन में कि बीटी सीड पे हम सब्सिडी प्रोवाइड कर सके। इससे एक तो जो फार्मर है वो ओनली जो रिकमेंडेड हाइब्रिड है वो बीजेंगे ताकि उनको प्रॉपर जो सीड है उस पर सब्सिडी मिले और वो दूसरे जो अनसर्टिफाइड हैं या F2 सीड है वो ना बीजें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ए फार्मर या एज ए यहाँ हम देखते हैं इसमें सबसे जैसे बताया कि एक चुनाई में प्रॉब्लम आती है, उसका बहुत ज्यादा रेट रहता है लेबर की प्रॉब्लम होने की वजह से। तो उसमें अगर हम हाई डेंसिटी क्रॉप का कुछ हो जाता है तो या मैकेनाइजेशन पे कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे इस साल 15 रुपए किलो हमारी चुनाई रही है जो कि बहुत ज्यादा है, एक 1/4 हिस्सा तो HDPS और तो इसमें हमारा अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन मैकेनाइजेशन हो जाती है तो इट विल बी बेटर, ताकि ये कॉटन का एरिया बढ़ाने में और फार्मर्स में ये बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो हमारे क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसमें हम यूनिट है जो बहुत बड़ा लिया हुआ है, और जब वो क्रॉप इंश्योरेंस का मिलना है फार्मर को तो उसमें एक ब्लॉक यूनिट लिया जाता है। जिस किसान की फसल खराब हो जाती है करूंगा आपको कम नहीं मिलता। इंटरप्ट करूंगा सर आपको कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग, पिंक बॉलवर्म, ये जो कॉमन इश्यूज हैं अभी डिस्कस हो चुके हैं, तो आई थिंक they are well taken, sir. It is really threat to the farmers, of course, and the government is working on that. Thank you so much, sir. Shall I complete, sir? Welcome. Thank you, sir. May I now request Dr. K.S. Sundar Raman, the Chairman SIMA and Managing Director Shiva Tex Yarn Limited, Coimbatore. Good afternoon, Madam Secretary and friends from the industry and the fellow panelists. I'm here to give the industry perspective of the cotton spinning and the cotton value chain. And thank you for the opportunity. What do we need as an industry from cotton? To put it very simply, two things. One, an abundant supply of good quality, not necessarily superlative quality, good quality 28 to 30 millimeter crop in the lowest global cost. And I will elaborate why in the next 3 minutes. The second, we need a superlative quality of a branded product, preferably in the ELS space. Again, I will elaborate why. The availability of abundant low-cost quality is very important because today, while we have world-class manufacturing technologies, we are not necessarily the lowest cost of production in the world. We have to follow global practices. Our workforce costs are going up. And hence, historically, what has supported India is a 7 to 8% lower cost of cotton compared to the rest of the world. In the last 1 year, we have seen that reverse, where the global cotton is at 10% higher value compared to the cost of cotton available here, given that we are giving support. And the single major reason for this is Brazil, where there has been exponential growth in the availability of cotton. 215 lakh bales have been cultivated in a country that locally consumes 40 lakh bales. We have recently, last week, we were having a discussion with ABRAPA, the Brazilian Cotton Growers Association. We had a lot of interesting information. They have two major areas, Bahia and Mato Grosso, where they are growing. As some of the previous speakers said, they are actually, it's more than 1,800. Their peak, they're growing about 2,000 kilos per hectare. They are planning, they have the area and the water to triple this capacity in the next 5 years. The crop is being rotated. It's not a single monocrop, it's double crops. They are getting very profitable crops and they're planning to grow it, which means the global cost of cotton available over the next 5 years will be at a low. And unless on a mission mode, we double the acreage of
or the yield per acre of cotton in India, the industry is going to have a challenge. So we are great votaries of the fact that this has to happen, madam. Now, madam, there are other exports here, so I will not get into it, but we beat across the country. I think pink bollworm problem has to be solved, and those companies that have seeds that give resistance to this, I think in the next 1 or 2 years, they are ready to come out. Mission mode permission giving for them is, I think, the main thing. I think there are better experts to elaborate, but this is the consistent message that we are hearing, that is be the single major requirement. So abundance of low cost cotton is number one. Second, madam, when it comes to ELS, we consume about 20 lakh bales of ELS cotton. We produce about 5 lakh bales. The problem here is not about quantity, but also about quality. The major competing products that we have out in the world are Supima and Giza, which are usually nominated products. We have DCH, which is the equivalent of that we try to compete with. Unfortunately, DCH, in terms of the mic that comes out and the strength, is not equivalent. Hence, when we try to make complicated yarns or challenging yarns out of DCH as against Supima and we have lower strength and more neb generation, and we are not getting a product of the quality. So while there are, we get from the scientific fraternity things saying that I have a superlative cotton, we have not had a mass scale superlative cotton on the scale of Saima or Supima or DCA or Giza, which is absolutely relevant for us to dominate this field. Because ELS cotton is not only going into making these fine counts, but when you try to decommoditize and go up the value chain, they underspin the cotton. Many of us who are in specialty spinning, we underspin the cotton to make a 40s count yarns out of a very long staple. And that is where the real value add lies. And it is there, the superlative ELS doesn't exist in India. So a mission mode approach to that is required, madam. Coming to my third point, which is Kasturi and branding. Saima has been part of the Kasturi program. It's our baby. Like all babies, it's growing up and finding its feet and trying to learn and find out where to go. The thought that I would like to leave here is Kasturi needs to look at not the spinning industry or the apparel industry as its consumer, but the end brands, the 20 or 30 global brands who decide what goes into the product as their consumers, and a very strong mission mode approach to connecting with those brands, with the entire textile value chain part of it, is required to make them ask for Kasturi. Today, the lesson, the single thing, other than the superlative ELS, which I'm hearing from those brands as their requirement from us, is the need for contamination-free Indian cotton. It's an overwhelming demand again and again repeated by all these brands, and which is where I think we need to go in tandem with our sort of growing the cotton mission of growing the overall availability of cotton in India. With that, madam, I think we'll be on a good footing. Thank you for the opportunity. Thank you so much, sir, for your valuable inputs. Some of the points we have discussed, I would request the esteemed guest not to repeat. ELS cotton requiring the compact seed variety, high density planting system, which is the way forward to improve the yield, infestation resistant new seed varieties, improving the soil health through the carbon sequestration, improving the ginning outturn through the new seed variety from 35% to 40-42%, to avoid the adulteration of cotton during the harvesting and marketing of the cotton by the farmer or the traders during the transactions taking place, and also the bring in the mechanization of the harvesting to reduce the labor cost. Thank you so much. And now I would request Dr. Siddharth Rajgopal, Executive Director from Texprosil, to share his views. Thank you. Thank you, sir. Kasturi is already mentioned by the earlier panelists. Now, it's a flagship program. It's a pioneering initiative. We're happy to know the basic purpose there is to value creation, preserving the intrinsic properties of Indian cotton. It's not as if Indian cotton is not popular. It is very popular, but then we need to enhance those properties and preserve those values. And for that, specifications are being given, and those specifications are being tested for conformity through a process. This is a quick plan. We're very happy to note that the mission for cotton productivity has made Kasturi like a lodestar. It clearly says that it would like the next 5 years, Kasturi
cotton to be, the production to be increased, and all the other features like traceability, certification, high quality control, etc., are now part of the agenda, and which is very, apart from ELF, the other aspect is the customer. So that, ma'am, as you also mentioned, Suri needs to really scale up and get a higher share of the production. Now, there are 4 pillars of Kasturi cotton, just for quick mega recap. There is, of course, the testing, certification, traceability, and sustainability. Testing is done through NABL certified labs. This certification, the sampling is done by NABCB, approved lab people. And then the traceability platform has been put in. The blockchain, QR code, driven, indigenously developed low-cost model, which has been put into place, which now has been also sort of extended to the farm level. But this question has always come up. We start with a gen, but what about the farm? So the program has now been taken back, and now the farm detail will also be available. So traceability will, in fact, a key important component, which is therefore the farmer engagement in the program is also getting reflected on the portal. Sustainability, yes, is the most important component of business today. Dadji, what are your prescriptions for our mission? When we design the scheme, what is that we should keep in? No, therefore, I was coming to that. What I was trying to say here is that this platform is already there. It's linked to the farm, because the farm level will come. And then what will happen in Kasturi is that it is a program which is looking at drawing samples, segregating the quantities, because you will have to have separate storage systems. You must have auto samplers that the sample can be drawn. You must have segregated, as I said, storage, because this will have to be kept separately so that it moves in a separate line from the normal cotton that you have in the gin. You also have to have contamination sensor, because the key point here is not that. The key point in India is contamination. For various reasons, the contamination is high. So various efforts are being made. Even the mini mission 2 is committed to addressing that issue. There's something called contamination sensors, which are expensive. How that gets linked up in the scheme, that will be very important. And then the last point would be world-class labs. Because last time also people say, you must have labs in centers where the production takes place. Because we have labs, but we don't have in those centers. Maybe key centers where Kasturi production comes up, perhaps labs could be followed. Overall, we also find that ELF cotton is another emphasis. In Kasturi program, we have now expanded the scope, and it also covers ELS cotton, 54-35 mm. So there is every encouragement to the farm and to others that please come up with ELS cotton. ELS cotton, as you know, it is a bit time consuming, it's expensive, but then efforts are being made to encourage it. ELS Karkhanas is a concept which has been given. So ELS Karkhanas close to Kasturi producing centers. There is a very good concept which perhaps will increase the overall volume. The quantity and quality, as you were mentioning, madam, of the cotton will surely get enhanced. So over a period of time, we see that the Kasturi habit will catch up, because what is happening here is the parameters are a bit stringent as of today's standards. If you talk to Jinners today, they feel the parameters are very strong, especially trash. People are used to 3%, 2.5% trash. We are also working on sustainability model and region agri cotton. In fact, region agri cotton was sold recently, and it fetched a high premium compared to the normal premium that CCI reflects on its platform. So, the point we are making is that the idea of Kasturi is catching up. And the point was made whether the factors should come from the brands. So we are already popularizing this. So what will happen is the demand will come, the supply should also match it. We need to have a balance between supply story when the demand is there. So earlier we had a supply problem, now we have a demand problem. Thanks to the exposure that Kasturi has got in Bharat Techs and other places, the demand has come. So we have to manage that, and I'm sure that in the coming years, and thanks to the commitment that the TMC has itself given to Kasturi, we should be able to, in the next 5 years, scale up the production. Thank you, madam. Thank you, sir. Now, I would request Mr. Jagan Gopinath, Head Consourcing, Arvind Mills. He is present in person here. Please, floor is yours. Yes. Thank you, sir.
and Namaste Madam, and operation. My first suggestion comes under the heading of private sector infrastructure solution need. Because the biggest challenge in India is like some of mentioned earlier, is that the high level of contaminants in the Indian cotton. Unfortunately, we grow a really good quality cotton in India. The risk level in the Indian cotton is low. Therefore, the yarn realization level, we are sometimes getting better yarn realization even compared to Indian cotton. Unfortunately, we are the only country that grows cotton contaminants to it at the field level and then tries to remove the contaminant. Now, this is something where the public sector, private sector partnership is very much needed. We need to have those model training centers where the CCI and Kasturi Cotton can actually come up with model ginning centers where we can demonstrate the capabilities of both mechanical intervention as well as manual intervention to remove the contaminants. Number one. The point number two is that a lot of the times I hear about high density planting system being promoted, suggested as one of the solutions to the Indian community. There also, when Aravind is a company, we attempted mechanical farming. The issues we face is that there is lack of availability of the right quality chemicals suited to the agroclimatic zones in India. Whether it is the plant growth indicators, whether it is the defoliants, there is an issue there that needs to be addressed. The third point that I would like to highlight is about the earless cotton. Now, the DCH that we have in India, it is hardly giving 34 to 35 mm staple length. And it is probably in the range of about, let us say, 36 GPT or at best closer to 37 GPT. But then it is much lower compared to Giza, which usually gives me 38 GPT. And the Pima cotton, which gives me a strength of even close to 43, 44 GPT. So there is an absolute need for research to be undertaken on improving the parameters, the quality parameters of the earless cotton, because otherwise it will be very difficult for the Indian industry to continue consuming the earless cotton. Now, the next suggestion is related to leveraging the technology, where we can even think about intelligent agricultural cloud platforms, because there is a lot of data that is available. Today, digitalization, because data digitalization is getting promoted, it is very easier to cast data from the ground level, from the weather stations, from the remote sensing satellites, integrate all of them, apply the artificial intelligence in machine learning programs, and do a kind of predictive the right time that we need to apply the inputs, the right time that we need to harvest and apply that. So there I feel there's a lot of potential given the fact that India as a country itself, in terms of the digital capability, we are on the top. Now the final point is related to one of the most interesting issues, but the point also remains that let us say hypothetically in another 5 years time India produces 450 lakh beans. Point, please. I need to explain the context. We can take. Yeah, but just come to the point. Yeah, the point here is need for having a highly liquid futures exchange in India about prices. Right. That's the main point. It will help the industry as well as we help the farming. Right, perfect. Yeah. Thank you, sir, for the inputs. Now, I would request Dr. M.S. Parmar, Director, Ghaziabad, UP, present in person here. Sir. Thank you, ma'am. First of all, that you have already to the point. That is because this is a new fiber which I am going to discuss over here, milkweed fiber, because most of you might not be knowing about this fiber. Actually, this is the initiative of NTTM, Ministry of Textile, Government of India. They have given us a project. Under this, we are working on this milkweed fiber, and you know that in Hindi and in India, this is known as Aqua and Madar. These are the name which is mostly people know about this fiber. And this fiber has a unique property that its thermal property is tremendously very high. And you know that in the extreme cold climate clothing, generally people are using goose down feather that is very, very costlier, and you have to import that fiber, and even the polyester hollow fiber they are using, both are not sustainable, but this fiber is having extremely high thermal value, and that fiber we are working on that, and under this property. And the unique property of this fiber is thermal property, plus it is having a hollow
structure that is 25% of the structure is hollow. And due to this, it is a very light fiber and its density is only 0.8. So if you mix this fiber to other fiber, the weight of that fiber, that fabric will be reduced. Approximately, if you add 30%, the 20 to 25% of the weight of this fiber is reduced. And the property, if you go this fiber, if you compare with other fiber like the cotton, you will see that it has a almost similar property, but it has a very high fineness. It has a 2.5 to 3.0 micrometer, and its breaking strength is 3.6 to 3.8. The antenacity is 25 to 31, and the moisture regain is 11 to 12%. And I already mentioned the density is very, very low. And we have started cultivation of this fiber in Nitra form, and I am very much thankful to our Minister Giriraj Singh Ji. He is taking a lot of interest on this mission to propagate this fiber to different area, and they have engaged CCI also. I am thankful to CCI also that now we are propagating a cultivation of this fiber. Mission से क्या चाहिए आप बताइए? We require that if we could get help from mission to propagate this fiber for cultivation purposes. Increase the cultivation of this. Yes, that is the requirement, ma'am, for this fiber. Okay. All right. Thank you, sir. Now I would invite Mr. Amit Thapar, Ganga Agro. He is not available. He has to go outside to medical emergency. Thank you. Thank you so much. Now with this, we complete our panelist. Now I would be inviting the intervener. Just I would request 2 broad points which you want from the mission to make it more comprehensive and effective. May I request to everybody that please do not repeat the points. We have also taken note of what is being written on the chat side, and we will be again coming back to you. This is the first of the series. So today's was an introductory webinar. So we have taken note of many points, including the cultivation, seed varieties, pest management, carbon sequencing. We have also looked at milkweed. We have looked at the ginning outturn and so many things about the Kasturi certification, etc. Your interventions are requested. आपको मिशन से क्या चाहिए? केवल ये 2 लाइन में ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्लीज बताइए और एक दूसरे को रिपीट ना करिए. थैंक यू. Mission say, shall I say something, madam? Hello. 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 Yeah, good afternoon to everyone. In fact, what I want to say that most of the things have been earlier said by Dr. Khadi and other speakers, but my main concern is for the rain-fed area, and so for that we should have plant type with deeper root system so that we can have better utilization of the available resources, number 1. Number 2, the plant type should have fewer leaves and the thick leaves so that water loss evaporation can be reduced. And third thing is, everyone is talking about mechanization. Mechanization should be there, keeping in view the land holding of our farmers. So we should have small harvesters, mechanical harvesters, so that if even a small farmer can have it. So these in brief are from my side. Thank you. Thank you so much, sir. Grateful to you for very precise. Now, Dr. T.V.K. Singh, ex-Dean, Professor Jayashankar, Telangana State Agriculture University. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I hope I'm visible. Everyone has spoken about pink bollworm. Sir, am I visible? Yes, yes, you are audible. Thank you. Everyone has spoken about, earlier speakers have spoken about the pink bollworm.
but the minor pests which needs attention, who are on increase are the stem weevil in the Coimbatore, Tamil Nadu, and Karnataka. Tea mosquito bug and shoot weevil in Andhra Pradesh. Thrips also have to be taken notice of it. In our country, we have certain. Please come on the point, sir. Yeah. Biotechnological approaches have to be tried and they have to be explored in our country, like groundbreaking cutting edge technology like artificial intelligence powered pheromone traps developed by CICR are needs to be focused, and they have to be popularized because farmers are very happy wherever it has been tested, because artificial intelligence powered pheromone technology gives timely pest management advice to the farmers, ensures efficient control, keeping the pest below the economic threshold level. Splat technology has to be also popularized. The another biotechnological approaches have to be tried and explored to manage resistance in the BT cotton. Landmark achievement we have seen a day or 2 days before only, where landmark achievement has been achieved with the pink bollworm resistance cotton in between Ankur seeds and CICR. Genome editing technology, gene editing technology, transgene technology have to be popularized and have to be tested to increase the productivity in the coming days. RNA technology has to be also used and to be popularized in the coming days also. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I may invite Dr. Ashwin Kasikar, National Seed Association of India, Maharashtra. Yeah, good afternoon. Thanks. As we all are working on same goal, so most of the points are already covered. But still, I'll just reiterate quickly. Fast track approval for the new pink bollworm resistant GM crop will definitely help. As told, Ankur Seeds already signed an MOU with NBRI, so it will be a PPP model, which will be first of its kind in agriculture. We can show for transgenics. Another is we must invest in mechanization. Particularly, I'll emphasize on sowing because that's the biggest. It will, unless we have a good population stand. So HDPS will not work good. So first, short term or low hanging should be investment in mechanization for seed sowing. And third point I would like to say is extension activity, because we are telling farmer to adopt a new agronomical practices. So basically, I would request private and public institute that we should have a good extension activity, handholding for a farmer for this new agronomy which we are asking him to do. And it will have a bigger impact. Unless we do handholding to him, the entire exercise will be a failure because he will not go again back to the same exercise. So extension and better agronomy practice handholding for the farmers is required. Thank you. These are my 3 points which I wanted to say. Thank you so much, sir. मैं अब फार्मर श्री जसवंत बहादुर साहब राजस्थान से, कृपया आप अपने विचार रखें, 1 या 2 पॉइंट जो भी कहना चाहें. थैंक यू. बाकी सभी विषयों पे तो बात हो चुकी है. अब एक तो परमिशन मिल जाए, जीएम सीड की सरकार परमिशन जारी करे. दूसरा, जैसे रेट कम आ रहे हैं, उसमें फार्मर से फैक्ट्री के बीच में कोई कमीशन वाला ना हो तो किसान को रेट अच्छा मिल सकता है. एफपीओ बनाए जाएं और मॉनिटरिंग की जाए. अच्छे फाइबर के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी होता है जो अच्छी क्वालिटी का मिले और रेट से मिले किसानों को. उसके लिए मोबिलाइज किया जाए तो अच्छा फाइबर नेचुरली आएगा. रिफ्यूजिया बीज मिक्स ना किया जाए, जीएम सीड मिले. बस ये 3 या 4 चीजें हैं. बाकी सारे लोगों ने पहले कह चुकी हैं. ये 4 चीज मिलेंगी तो किसान अच्छा उत्पादन दे सकता है. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. मैं नेक्स्ट फार्मर है मिस्टर वसवराज कोंडून फ्रॉम कर्नाटका. मिस्टर वसवराज. मैं नेक्स्ट फार्मर श्री दिलीप ठाकरे जी, अकोला, महाराष्ट्र से.
करीबन 9 साल से एसडीपीएस कॉटन कंसेप्ट में खेती कर रहा हूँ और करीबन 50 से 55 एकड़ एरिया में मैं खेती करता हूँ और अच्छा खासा उत्पादन लेता हूँ और हाईएस्ट जो उत्पादन है मैंने 18 क्विंटल पर एकड़ लिया है, 15 क्विंटल के आसपास तो हर साल में लेता हूँ। और मेरा जो एरिया है, मेरी खेती जो है 100% रेनफील्ड है और बाद में ये जो है लाइट टू मीडियम एक सॉइल है और इसमें करता हूँ। और दूसरा मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी मैं ये जो मतलब ट्रायल है, सक्सेसफुल ट्रायल मैंने अभी तक 3 साल से कर रहा हूँ। और पॉइंट इसके पे लिए अगर जो आप आएंगे, डिफॉल्ट की जो पॉइंट पे अगर आएंगे कि मिशन से आपको क्या चाहिए, फार्मर की क्या जरूरत है, जो आप करते हैं उसको स्केल करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या आशा है बजट से, मिशन से, तो क्या स्टेट पॉइंट पे आएंगे? सर डिफॉल्ट का जो है डिफॉल्ट मतलब अवेलेबल होना चाहिए देश में। और बाद में जो न्यूमेटिक प्लांटर की जो देश में कमी है, और न्यूमेटिक प्लांटर भी एक अवेलेबल होना चाहिए किसानों को सब्सिडाइज में। और दूसरा स्पीकर मशीन के लिए तो है ही। और दूसरा जो है सर, अभी उत्पादकता देश की कम है, इसके लिए मेन जो कारण है, जो स्कूल में तो 5वीं कक्षा से लेकर तो 10वीं कक्षा तक एक क्रॉप साइंस के जरिए एक आधा सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब अपन बहुत सारे देखते हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होके कुछ खेती में अगर आते हैं तो खेती में उनको कुछ जानकारी रहती नहीं। मतलब शुरू में प्राइमरी स्टेज पर जो अगर क्रॉप साइंस एक जो सिलेबस में रहा तो मतलब किसानों, बाकी जो आने वाले जो किसानों को, आने वाली नई पीढ़ियों को मतलब खेती के बारे में, क्रॉप के बारे में जानकारी हो जाएंगी। और दूसरा सर एक मेरा ये है कि जो आप सब्सिडी में जो एनपीके आप देते हैं, डीएपी है, 10-26 बाकी जो ग्रेड देते हैं एनपीके में, तो उसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट होना चाहिए। क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में किसानों को उतनी मतलब है। और सब्सिडाइज में मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट अगर दिया जाए तो मतलब खेती में मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट चले जाएगा। और जो किसान को जानकारी नहीं है उनके खेत में भी वो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट 50 किलो के बैग में चले जाएगा। और ये 2-3 पॉइंट है मेरे। धन्यवाद। और सर ये पीबीडब्ल्यूडी मतलब पिंक बोलोराम के लिए तो किसान त्रस्त ही है, उसके ऊपर भी कुछ तो भी अपग्रेडेड सीड्स आना चाहिए। कॉमन एक ठीक है समस्या है। धन्यवाद। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। श्री मनीष डागा जी, he represent about 1 lakh farmers FPO at different parts of the country. जी सभी को सादर प्रणाम। मैं स्पेशली टेक्सटाइल सेक्रेटरी में ये कहना चाहूंगा कि कल अभी जो पीएम ने और टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने खास बातें बताई कि 3P प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और सेक्रेटरी मैडम ने बताया कि साइंस एंड इकोनॉमी कॉटन की समझनी पड़ेगी। तो 1-2 मेरे सुझाव है कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को स्पेसिफिक टू कॉटन स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, अमूल मॉडल को फॉलो करना चाहिए। 1946 से वो मॉडल चल रहा है, आज सब एमएनसीज को वो टक्कर दे रहा है। तो उस कोऑपरेटिव मॉडल को आगे रखते हुए स्पेसिफिक टू कॉटन एफपीओस हमें फोकस करना चाहिए। और ये अगर हम करते हैं तो इंडिविजुअल फार्मर से कराने के बदले एफपीओ जिनके ऑलरेडी वो फार्मर शेयर धारक हैं और उनका ट्रस्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी है, उनके थ्रू अच्छा काम कर पाएंगे। कुछ 1-2 मेरे सुझाव है, अगर मैडम आप 1 मिनट का समय दे तो। सीड मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉइल टेस्ट हम करेंगे, सुरेश भाई कोटक ने बताया रेन मैपिंग करना चाहिए। लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट क्या है, नए सीड आने के लिए हम कुछ भी करें तो 6 महीना, 12 महीने, 3 साल लगेंगे। अभी जो सीड ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, फार्मर्स को उनका फीडबैक लेके सॉइल क्वालिटी से मैच करके हम अगर सीड का एरियाज मैप कर दे कि इस एरिया में ये सीड ज्यादा चलता है, ड्यूरेशन डिफाइन करके, फार्मर को नहीं पता 140 साल का सीड है, 160 दिन का सीड है, वो सीड मैपिंग अगर हो जाता है तो करंट अवेलेबल सीड वेराइटीज में भी हम इमीडिएट इंपैक्ट ला सकते हैं। सॉइल हेल्थ पे बहुत फोकस करना जरूरी है। हम कितने भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन ला दें, ईएलएस में क्वालिटी बढ़ाने के बाद सुंदरम बने जी के, लेकिन सॉइल में ताकत नहीं है तो नहीं होगा। अपना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 है, एवरेज 0.6 होना चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मुझे इन्वाइट किया था, 3 का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है। इसके लिए बायोचार एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रेसिड्यू जो कॉटन में नॉर्मली जला दिया जाता है, कुछ फार्मर फायरवुड पर यूज करते हैं, कुछ जमीन में दबा देते हैं, वो सब नियरली वेस्टेज है।
और कितने लाख हेक्टेयर में हमें क्रॉप रेसिड्यू अवेलेबल है, उसका बायोचार बना के अगर हम करें, न्यू ब्लैक गोल्ड जिसको बोलते हैं, उसको हम करें तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये सभी सॉइल की बढ़ सकती है। तो हम अपने हिसाब से छोटा सा प्रयास ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इस मिशन में अगर उसको थोड़ा सा स्थान मिल जाए, एफपीओ मॉडल को, बायोचार को एंड सॉइल क्वालिटी एनहांसमेंट को, तो हो जाए। मार्केटिंग के लिए एक छोटा सा सूचन है, नाफेड जैसे ग्रेन्स वगैरह परचेस करने का राइट एफपीओस को देती है, उससे बहुत बड़ा संगठन एफपीओस का महाराष्ट्र में बन गया है। तो ऐसे ही अगर सेम नोडल एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, लाखों फार्मर से कपास खरीदते हैं, उसमें अगर एफपीओ का आप कहीं एग्रीगेशन का थोड़ा स्थान दे दे, तो जब मार्केट में प्राइस अवेलेबल नहीं है, तब एफपीओ के लिए इनकम और फार्मर्स के लिए नियर टू होम एक एग्रीगेशन सेंटर खड़ा हो जाएगा। सीसीआई के लिए हमने 2 साल पहले ट्रायल मॉडल ये किया था सक्सेसफुली। तो बस ये मेरे सूचन है मैडम। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। धन्यवाद सर। मैं नाउ सर एम सर्वेंद्र, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से, प्लीज सर। Hello, good afternoon, ma'am. Ma'am, I have around 5 or 6 points. I'll briefly tell them. One is the cropping systems for cotton. It is cultivated both in rain-fed and in very highly productive areas also. So when we design the mission, we should have different strategies for different areas. I believe earlier we had a strategy which focused on improving productivity for a particular set, that is HDPS. HDPS is seen as a solution or way forward. But if you go to a tribal area, the farmer is more comfortable with a longer duration crop with multiple pickings because it gives a price edge. So different strategies for different areas is something that we should consider. The second thing is that people have spoken a lot about pest management. And if you look at cotton, it's one of the major component of cost towards cultivation is pest management. And as wherever they cultivate it continuously, the cost of pest management increases. World over, an area approach where multiple stakeholders choose an area of, say, a district or a block, and then they try to manage pest in that area. That approach has worked. For example, cotton weevil, boll weevil in US, and cotton bollworm in China. These are very good examples. The mission should try to have a strategy of an area approach with multiple. There is a plan and multiple stakeholders work towards pest management so that the pest load in the subsequent season is much less and maybe eliminated. The third thing is when we look at the basic production part, that is the farm, and when we look at the buyers, where we had people from mills speaking, and brands. The quantity of cotton that they require is at such a big scale that they would not interact with individual farmers. So, for example, let's take the case of contamination. Today, contamination is eliminated at the ginning level or at the spinning level. They put some machinery, contamination, whatever is considered as contamination is removed, and then they get cotton which is of an acceptable quality. If this can be done at the farm level through certain practices, the farmer would be able to get a better price. Now, and here the problem is that there are small land holdings, varietal diversity, multiple crops over space and time, multiple picking. So what strategies we need to adopt for these things in terms of machinery, in terms of practices of aggregation, these things need to be considered. And by doing this, you'll be able to transfer a little more income to the farmer and hence motivate him to cultivate it. People also spoke about organic and regenerative agriculture. These are niche areas and something we should actually invest a lot in, because there is a involvement of a third party for certification, particularly in case of regenerative agriculture. The certification is a little more stringent, and it also has elements of pest management using, what should we say, sustainable practices, which would not permit development of resistance. So I think that is an area we should try to do, but then it increases the cost of cultivation, which increases the cost of cotton, which is a commodity across the value chain. We were in discussion with certain brands. They were willing to pay directly to the farmer, that the farmer pays at market prices to the gin or to this with whomsoever he has a contract. But the brand actually, what Mr. Sundaraman pointed out, brand may pay a certain amount directly to the farmer. And then
ELS, it is MP is a area where ELS is there apart from Karnataka. And once again, ma'am, this I just wanted to say we need to consider the farmer's perspective. And the last point which I wanted to emphasize is people have already raised it, but I'm rephrasing it. Our public research institutions invest in a lot of research and develop very good varieties. They have very good competence, and their delivery in terms of seed varieties is good. But we do not have the capability, or the public sector does not have the capability for multiplication of these seeds. So the private sector has a bit better competence in that. I think we need, there was one PPP contract which they spoke about, but a more formal and a more robust system for ensuring multiplication of good varieties. For example, HDPS, they need a lot of seed. How do we ensure that it is rapidly multiplied and it reaches to the farmer at an affordable price? I think that is another area we need to look at. This is what I had to say now. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now, may I invite Shrimati M. Vijaya Sunita, Director of Agriculture and Marketing, the Government of Andhra Pradesh. Madam, please unmute and please speak. I think she's not there. Now we move to Madam G. Lakshmi Bai, Director of Marketing, Government of Telangana. Good afternoon, ma'am. From Marketing Insights. So, ma'am, to develop a efficient and transparent marketing strategies, ma'am, we need a greater collaboration between cotton producers and then textile industries, so that we can develop a robust market intelligence system. So that we can advise the farmers whether he has to sell or he has to wait for a good time for the selling his produce. Not only that, sir, what is the market needs? What type of produce needs? So that there is a need for greater collaboration between industry and then producer. Then second point is the incentives to be provided to the producers and other stakeholders for producing high quality cotton and their products. Then lastly, training and training and education is necessary for both the farmers and other stakeholders. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I would invite Shri E. Rajkumar, former Chairman, City. Good evening, madam. And as mentioned, I will just read out the headlines because many things have been spoken. First of all, I would thank the government for this mission, madam, which has been a very long request of the industry. One is on the enhanced focus on advanced seed varieties, which has been spoken, madam. It's only to have emphasis on research on good seed varieties, which will be critical for success of the mission. The second one is the reinforcing the market linkage, to have direct market linkage between cotton growers and buyers, ensuring a more efficient and transparent supply chain. The third one is focus on the social sustainability and regenerative agri practices. In this, ma'am, you know, a lot of countries are going towards regulations, traceability, environmental and sustainability, which should be a key component in this mission, madam. And a detailed note has also been submitted for the same, madam. And moving on, madam, the Confederation of Indian Textile Industries Cotton Development and Research Association has been partnering with the Ministry of Agriculture and Ministry of Textiles on the special project on cotton. And we would be very happy, madam, to be associated in this mission too, ensuring social fairness and empowerment initiatives as environmental sustainability. And city remains committed to the support of the government, to support the government towards this cause, and we look forward to partnering with the government in this mission. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Anyone from the government of Maharashtra? Mr. Deshmukh, yeah. Deputy Secretary is Maharashtra. गुड आफ्टरनून मैम, मैं पनन डिपार्टमेंट से हूँ। अभी जो कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए जो इश्यूज रेज किए वो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है मैक्सिमम। मैं उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेके आपको कम्युनिकेट करता हूँ रिटर्न में। ओके, आप गुजरात से कोई है?
पूजा से ज्वाइन नहीं कर। अच्छा ठीक है, हाफिज। to the industry representative. Yeah. Deshmukh ji, any other thing? No, sir. Thank you. Nothing. He doesn't have any points. Thank you so much. Yes. Now, Mr. Sunil Patwari ji. Good afternoon, ma'am. Thank you for this opportunity. Firstly, ma'am, on behalf of Industry and Textile, we are very excited by this new mission. We see a new hope. On Kasturi, ma'am, we are dealing both with the supply side and demand side. Supply side is setting standards and testing, which is relatively, as it turns out, the easier part to set up. The more challenging part is building up the brand Kasturi, where we are making spreading awareness from manufacturers to brands to consumers. So that's a tough task, and a difficult path. But I promise you, ma'am, that we are progressing well. Where we have reached a stage where we are now interacting with brands, both domestic and international brands, and many of the domestic brands have already adopted Kasturi and have put products on the shelf with the Kasturi tag and label. So this is how we will build the brand for it. And the next point is, ma'am, sustainability, where we feel the need to define sustainability. Right now, sustainability is a kind of an elephant and blind man, sorry. So everybody defines it his way. It's not only about saving something. We realize that our society, the Indian society, is by nature very frugal, and we use and reuse all our resources. The idea is how to present it better so that it is considered correctly as sustainability. So this is a challenge and these are the opportunities. So both this building the brand and sustainability are long-term things, ma'am. We are working on this and we hope we will have support to sustain it over time. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And Madam M. Vijay Sunita, now she has joined. I may invite her, Director of Agriculture and Marketing, Government of Andhra Pradesh. Madam Sunita, please unmute and speak. बाकी को बुला लो, अजीब को बुला लो, बाकी को बुला लो. Mr. Rajiv Barua, Independent Consultant Sustainability. Mr. Rajiv Barua, I think he's also not there, ma'am. Mr. Manish Gupta, Better Cotton Initiative. Thank you, ma'am, and good afternoon to all. I think a lot has been said, and I'm happy to share, ma'am, like a lot of the practices already been included in our program, and as a result, in 21-22, we saw like a farmers' productivity, like average productivity of the cotton farmers, about 10 lakhs cotton farmers came out as 650 kgs per hectare, which is already probably about like a 50% of the national average. Couple of things I would like to add upon in this thing is in this mission, I think the farmers capacity strengthening and the training is to be included in extensively, so that they can implement the practices at the ground level. And the special focus should be given to the women's, because we have seen like when women's are participating in the decision making, the things improve, and in fact like whole things gets improved. I would also like to say, ma'am, with the increased productivity, the farmers input cost has been reduced like about 15%, and that contributed to their profitability about 50%. The second thing on ginning side, ma'am, along with the technology, I think there is a need to work on probably a national-wide bale identification number to establish the traceability, like we have from Egypt and US and other developed countries. That will submit, because that is being demanded by the global market. And on the purchase side of the ginning, I think the linkages has to be established between growers and the ginners, which has came out. So I'm just would like to tell, like we have been piloting the mobile application based procurement as a ginner, so that the direct linkages between ginner and the farmers can be established, and that will help in the traceability for sure.
Lastly, I would say, like, ma'am, voluntarily sustainability standards are working extensively in the field. I think their role is to be defined in this mission, because they have lots of experience in sustainability implementation at the ground level, and they're also working at the demand generation at the global level. I would say, ma'am, about 200 global brands are sourcing better cotton from India through the better cotton supply chain. So I rest my piece over here. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would invite the last the intervener, Mr. Pradeep Mandyan, former principal scientist from CIRCOR. Mr. Mandyan, please unmute. He's on mute. Unmute, please. Mr. Mandyan, आप म्यूट है, अनम्यूट करके बात करिएगा। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। जी सर, थैंक यू मैडम। I would like to present 3 points. Number 1 is modernizing the ginning factory. There are 200 ginning and pressing factories which are set to be modernized under the scheme, and we are at the planning stage. Since the next season begins in October, so any upgradation during that period will be highly impractical. Given the situation, there are 2 possible approaches. Expedited execution. If modernization is to be achieved to 2025 season, immediate and decisive action is required. This includes fast-tracking approvals, expediting procurement and delivery of machine, and ensuring swift installation, commissioning, testing, and training. And again, this will depend on the supplier's efficiency. Situation B will be planned implementation for 2026 season. This will involve structured timelines for procurement, phased installation, and thorough testing and training to. थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो, और आप थोड़ा सा देखिए। आवाज एको कर रहा है आपका? एको कर रहा है, कुछ ऑन है क्या? दो पास है माइक के, या तो थोड़ा पास है, थोड़ा दूर से, अदरवाइज। हाँ अभी सर थोड़ा ठीक है? हाँ, थोड़ा स्लो एंड थोड़ा दूर से। आप पीछे थोड़ा दूर से, यस। Should I repeat everything or I'll start from where I left? हाँ नहीं, आप यहाँ अब शुरू करिए। जो बोल रहे थे, 2-3 पॉइंट है आपके, जो भी उन्हें बता दें, संक्षेप में बता दे, छोटा में बताएं। हाँ सर, मैडम 2 मिनट लूंगा खाली। Modernization of the ginning factories. There are 200 ginning and pressing factories which are set to be modernized. We are at the planning stage, and the next season begins in October. So any upgradation during the period will be highly impractical. So given the situation, there are 2 approaches: expedited execution. If modernization is to be achieved 2025 season, immediate and decisive action is required. This includes fast-tracking approvals, expediting procurement and delivery of machines, and ensuring swift installation, commissioning, testing, and training. Again, this will depend on the supplier's efficiency. B is planned implementation for 2026 season. This would involve structured timelines for procurement, phased installation, and thorough testing and training to ensure seamless operation when 2026 season starts. ठीक है, आपने मुद्दा उठाया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जिनिंग में जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आएंगी सीजन के चलते, उनका निराकरण किया जाए। दूसरा पॉइंट बताइए। दूसरा पॉइंट है मैडम, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग लैब। During the peak season, the existing facilities struggle to handle the current volume of testing at current level of 2%. That needs a significant expansion. तो आपका दूसरा पॉइंट है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज का विस्तार किया जाए। जी मैडम, और गवर्नमेंट ने जो 22 लैब का एस्टैब्लिशमेंट किया है, ये पॉइंट किसी और ने भी कहा कि उसे उन इलाकों में लेकर के जाया जाए जहां पर वस्तुतः जिनिंग होती है या खेती होती है, जिससे कि आसानी रहे। नहीं मैडम, मेरा दूसरा पॉइंट था कि 22 लैब जो गवर्नमेंट लगा रही है वो तो बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमें और भी लैब्स की जरूरत है। तो इसके लिए हाँ जी, विस्तार का अर्थ यही हुआ कि नए लैब्स बनाए जाए।
वो एसोसिएशन और प्राइवेट लैब के कोलैबोरेशन से करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, हर स्पिनिंग मिल में एक लैब रहती है। इफ दोस लैब ऑफर देयर स्पेयर कैपेसिटी, तो पीक सीजन के टाइम पे हमारा काम और तेजी से हो सकता है। तीसरा है मैडम, रिगार्डिंग कस्तूरी भारत ब्रांडिंग, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज द ओनली प्रोग्राम which drives the automatic adoption of best practices in processing and improvement quality. मंध्यान जी, आपका कस्तूरी के बारे में एक अच्छा इनिशिएटिव आपने बताया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे इसको। इसके अलावा, क्योंकि आवाज आपका काफी इको हो रहा है और समझ नहीं आ पा रहा है, आपने जो 3 पॉइंट में मैम थोड़ा, मैं जो फर्स्ट पॉइंट इनको समझा है। Let us just quickly have, because we're just running short of time. Do we have another speaker? Good evening, ma'am. Mr. Varun Joseph. Sita is here. Madam, yes. Yeah, please unmute. Yeah, and speak. आपको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? I don't think she is able to hear us. Yes, ma'am. Am I audible now? Yes, good evening, please. ma'am. Please continue. Yes, quickly, ma'am. I have 4 points from government of Andhra Pradesh, ma'am. First point is like the availability of superior seeds. That is the most important point right now, ma'am, because the variety now available is producing higher micronair value. That is the major issue we are May I facing request today, you ma'am. to switch off your Take it. Continue. And second, ma'am, because our variety is mostly rainfed and not irrigated, ma'am. So I request that the appropriate variety, which is very much suitable for here agroclimatic conditions, may be made available, ma'am, from the side. And second point is, I request the journey of the mission should be more inclusive, ma'am, because being a marketing commissioner, I would be more in favor of the farmer, ma'am, because right now we are not looking for the prosperity of the farmer, ma'am, because we are not inclusive. It's not very inclusive from seed to sale, ma'am. So I request the mission to make more competitive markets, ma'am. The third point is awareness, ma'am, because generally these farmers are very much traditional and not very prone to this modernization. And so I request to create more awareness among the farmer community, ma'am, as well as the engineers and processing units also, ma'am. And fourth point, ma'am, in the context of this natural farming mission also, I would like to we should more working on this sustainable cotton farming practices also, ma'am. This is all from my side, ma'am. Thank you so much. Thank you, Sunita. You made these 4 points. We've taken a note of them on availability of seeds, marketing and awareness, etc. So thank you. Thank you. Yeah. With this, ma'am, with this we have completed the other speakers have spoken, ma'am. And all right. So let me thank everybody who has participated in this. We have taken note of lots of suggestions of yours. जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो इस पूरे विचार विमर्श को सुन रहे हैं, उन्होंने चैट में बहुत सारे पॉइंट्स डाले हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। हमने आप लोगों को शुरुआत में एक स्लाइड दिखाया था जिसमें एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया था और साथ में एक ईमेल आईडी का नंबर भी दिया था। यह इस उद्देश्य से दिया था कि क्योंकि ये आज पहली विचार विमर्श है इस पूरे प्रोग्राम के लिए, इसमें जिस किसी को भी और भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं अगले 3 दिन तक के लिए, उनके सुझाव हमारे इस पूरे सिस्टम में आमंत्रित रहें। और जब भी आप लोग इस पूरे विचारधारा को, इस पूरे विचारों को अपने शेयर करेंगे, हम लोग उसको नोट करेंगे। But as I said, this is the first of its in the series, and there will be many more such deliberations.
So many of you got to speak about the things you feel very strongly about. And if I really look out at the strands which have clearly emerged, there is a strand on the farming side which very clearly talks about the soil, which talks about the seed, which talks about the pest management, and also the byproducts utilization to increase the farmer's income. There is a second one which is on extension, technology, and also to look at immediately the mapping of the way things are being done. Varietal mapping, mapping of the kind of seeds that are being used, the pest management practices that are being used, and so that we can eventually move towards more diversified and more area specific approaches rather than one size fits all. And I'm sure that Agriculture Department and ICA are already looking into these things. The third one was on the mechanization side, to look at the farmer's farm size and to come up with appropriate machines, to come up with the custom hiring centers, a strong methodology, to look at the drip irrigation at the time of flowering to increase the productivity. So at one point of time, we are looking at the low-hanging fruits, which are basically that immediately what you can do to increase and enhance the productivity without changing the variety, because you will take your own time, another 3, 4, 5 years to come up with the new seed. There was a very, very interesting point which you all made about the governance model of FPOs, the cooperative model of Amul, the marketing intervention, which many of you spoke about, the digital information to be available, and also into the future commodities. Those are the areas which we will need to really look into while we see that what kind of marketing extensions can be available with the help of CCI and also the existing You are marketing entering the network meeting of now. agricultural produce. Monitoring and other parts also will need to be built into. But on the quality side, the certification, traceability, and also the sustainability thread and the new sustainability framework, which we can put into place, will be very, very important. And as very clearly said that there is a premium brand, there is a Kasturi and Kasturi Plus. So Kasturi Plus, we should look at 40 or 30 brands of the world, which is really trying to source this to enhance the farmer's income and also to increase India's prints on Kasturi Plus. And the Kasturi continues to provide for what has been said by industry, abundant supply of good quality cotton at the competitive prices. So there are many, many good points that have come in, and we have taken note of each one of them. I would like to thank you from the bottom of my heart to be present here in large numbers today and giving your very, very good inputs. हम लोगों ने जैसा कहा कि कृपया हमको भेजें कि आपकी इस मिशन से क्या अपेक्षाएं, और इन अपेक्षाओं को हम अपने स्कीम में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के वस्त्र मंत्रालय कैसे एक साथ ले आ सकता है, ये हमारा प्रयास रहेगा. पुनः इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद मैम, एंड सभी को धन्यवाद, पैनलिस्ट, स्पीकर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड जो भी ऑनलाइन ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. तो 3:30 बजे वाला लॉगिन करो. इसमें ही होगा, मत करेगा. We can go offline now.
आई थिंक सर अभी वो जो है ना बाद का जो है ये प्लेनरी सेशन शुरू होगा ना अभी क्या होगा? प्लेनरी सेशन अभी मंत्री जी वगैरह ये जो डिफरेंट जो आने वाले हैं। पैरेलल सेशन जो चले हैं ना सर, हाँ हाँ, उनकी शायद वो फाइनल रिपोर्ट्स वगैरह ज्वाइनिंग करेंगे कल। हाँ हाँ मोस्ट प्रोबेबली। All the discussion from all the sessions, मेरे ख्याल से कोई मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर जी। मैं कोशिश करता हूँ कृषि मंत्री नहीं, दूसरे ग्रुप वाले सुन पा रहे हैं कि जिससे क्लियर हो जाए कि जुड़ गए कि नहीं। कोई दूसरे थीम के कोई बोलेंगे, आप आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं? नहीं आए थे फिर चले गए, केसीसी वाले आए थे, ये सब आ गए थे आके फिर कर दिया। एक बार आ जाए, एक बार रविंदर को मिला दिया, रविंदर को। ये एक बार जैसे ही जुड़ते हैं तो हम एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वॉइस हमारी आपकी हमें सबको मिल रही है कि नहीं, हमारी सबको जा रही है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? हाँ नहीं, और आप में से कोई जुड़ जाएगा एक बार एसपीएस। मेरे ख्याल से आप जो थोड़ा लेमन की भाषा में हेलो
अच्छा अच्छा Sir, if you allow me, I mean, I just have Honorable Minister is about to join. We will follow the same sequence as it was earlier, theme 1 to theme 10. I will start with the theme 1 on Dhanya and then followed by others. We know the sequence. Then there'll be enhanced credit for KCC, followed by rural prosperity, then Atmanirbharta and pulses, then comprehensive program for fruits and vegetables, national mission on high yielding seeds, then cotton, then the rural Punya post as catalyst, and then the fisheries, followed by support to NCDC. So that will be the sequence. I welcome all the honorable minister who have joined and are present in this conference. And agriculture minister is just about to join. We are just waiting. ठीक है ठीक 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 दिखेगा कहाँ सरकार? माननीय मंत्री जी को कहाँ दिखेगा? सिर्फ उनका तो स्पेस बन ही जाएगा। नहीं हम हमारे ऊपर है, सिर्फ नीचे होना चाहिए सरकार। कहाँ पर है? नहीं, ऑफिस से तो दिख रहा था, लिंक जुड़ा हुआ, लिंक नहीं दिख रहा। नहीं, इसमें पता कैसे चलेगा कि माननीय मंत्री जी जुड़े हुए हैं? हेलो हेलो हाँ सर, सेक्रेटरी साहब को खटा एक दो तीन दिख रहा है कोई ऐसा। नहीं, अभी तो काफी लोग ड्रॉप हो गए हैं, अभी 5-6 मंत्री लोग ही आ रहे हैं। स्वतः जी से बोल देंगे। भागीरथी चौधरी जितने भी सेक्रेटरी streets able to join रहा है। अनम्यूट कर।
so that we can know कि we are KCC वाले are they able to hear me? Animal Husbandry Secretary, आपकी आवाज करके देखें, मैं सुन पा रहा है कि नहीं, वो चेक कर लें. Secretary Animal Husbandry. I can hear you. Okay, fine, thank you. Secretary RD, आपको बोल के देखें कि आपकी आवाज आ रहा है कि नहीं एक बार. Secretary RD. शैलेश जी, आपको सुन पा रहे हैं कि नहीं हमको? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. पल्सेस से सेक्रेटरी डोका, आप हमको सुन पा रही हैं? आपकी आवाज मैं चेक करना चाहता हूं, आ रही है कि नहीं? वो भी नहीं आ रही है. फ्रूट वेजिटेबल्स में गुड इवनिंग सर. हाँ, आपकी हाँ, थैंक यू वेरी मच. नाउ यू आर देयर. थैंक यू सर. फ्रूट वेजिटेबल्स से सेक्रेटरी मौफी है क्या? मैं सुन पा रहा हूँ. हाँ, we can hear you. And thank you very much. We can hear you clearly. थैंक यू. हाई यील्डिंग सीट से हमारे संजय गर्ग जी बैठे हैं. क्या आप जब बोल के देखेंगे आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? अरे एक सेकंड. हाँ सर, आवाज आ रही है सर. ओके. सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स. सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स, आप सुन पा रही हैं और आपकी आवाज चेक करना चाहते हैं, आ रही है कि नहीं? Yes sir. थैंक यू. रूरल से वंदिता जी, सेक्रेटरी पोस्ट, आपकी आवाज चेक करना चाहता हूँ, आ रही है कि नहीं? वहां से आप सुन पा रही है कि नहीं? सेक्रेटरी पोस्ट जी, थैंक यू, आ रही है. एंड फिशरीज से विलक्ष जी, आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? मैं चेक करना चाह रहा हूँ. अभिलक्ष जी, या थैंक यू. कोऑपरेशन से कोई भी बैठे हो, सेक्रेटरी भी बाद में आएंगे. कोऑपरेशन से कोई जुड़ा हुआ हो उस थीम से, जरा ऑन करके बताएं. कोऑपरेशन, एनसीडीसी. शैलेश जी, आपकी आवाज नहीं आई थी उस वक्त. कैन यू रीचेक? सेक्रेटरी आरडी ये नहीं ज्वाइन कर पा रहे. सेक्रेटरी आरडी, आपकी आवाज हमको नहीं आ पा रही अभी. हेलो. तो आरडी और कोऑपरेशन एनआईसी वाले कृपया ये दोनों चेक करें प्लीज, वेरी फास्ट. आरडी आवाज आ रही है, सेक्रेटरी से आरडी से आवाज आ रही है. अभी आरडी से नहीं. कैन यू शेयर? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके सर. और बस कोऑपरेशन रह गया. सपोर्ट टू एनसीडीसी से किसी की आवाज नहीं आई अभी तक. वी आर वेटिंग. सर वहाँ कोई एनसीसी नहीं, चेक कर रहे हैं. हाँ, क्या वो जुड़े नहीं है मंत्री जी? अभी कैसे पता चलेगा? The person you have called is speaking to someone else. आप मिला है? नहीं, मेरा नहीं. पहले भी. हेलो. हाँ. This meeting is being recorded. कनेक्टेड हो गया. डॉक्यूमेंट तो होता रहेगा. एनसीडीसी सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. डॉक्यूमेंट जाता रहेगा शुरुआत में.
हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर वीडियो ऑडियो क्लियर है सर? भोपाल ऑफिस से बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल क्लियर है, आ रही है, बिल्कुल सब लोग वेट कर रहे हैं जी। शुरू कीजिए भाई, मनोज के बाद। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। आपके अतिरिक्त जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और जो उपस्थित हैं उनका भी सर स्वागत है सर। बस ब्रीफ में 1 मिनट बताना चाहूंगा कि हम लोग ने सुबह 11 बजे कार्यक्रम आरंभ किया था। पहले हमारे 7 एमिनेंट स्पीकर्स ने बोला था सर, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद ब्रेकआउट सेशन करीब 1:30 बजे शुरू हुआ था और जो कि 3:30 बजे तक समाप्त हुआ है। सारे ब्रेकआउट सेशंस के सचिव उपलब्ध हैं। तो सर्वप्रथम मैं सर अपना जो मैं उसी सीक्वेंस में शुरू करूंगा जिस सीक्वेंस से थीम थी सर। 5 से 6 मिनट में सर हम लोग अपनी बात रखेंगे जो कि सार निकला है सर, और उसके पश्चात हम आपका और आपके आदेश से अगर माननीय मंत्रीगण जो उपस्थित है उनका भी अगर कुछ दिशा निर्देश होंगे हम सुनना चाहेंगे सर। तो सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में सर जो हम लोगों ने चर्चा की सर, उसमें जो चीज निकल के आई था, सबसे पहले तो ये बात आई कि सब लोगों ने मुख्य रूप से ये बात कही कि हमको लोकलाइज्ड प्लानिंग करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसमें कृषि उत्पादन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहना चाहिए सर। इसके अलावा जो क्रॉप प्लानिंग हो वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिस जिले में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके आधार पे हमें क्रॉप प्लानिंग करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसी हिसाब से धीरे धीरे करके उसे बदलाव करें जिससे बेहतर प्रोडक्टिविटी मिल सके सर। एक ये बात और उपलब्ध होकर आई कि कई ऐसे जो जनपद निकलेंगे जो हम चयन करेंगे उसमें लीज होल्डर्स और टेनेंट फार्मर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा, और उनके योगदान को हम क्योंकि कृषि में है तो उनको भी योजनाओं का लाभ कैसे, मूल जो हमारे लैंड ओनर है उनको भी ध्यान में रखते हुए उनकी सहमति से कैसे हम योजनाओं का लाभ इन शेयर क्रॉपर्स को या बटाईदारों को हम दे सकें, इस पे भी एक चर्चा हुई, जरूर होनी चाहिए सर। इसके अलावा जो बहुत बड़ी जल संरक्षण की बात आई कि खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, हर खेत पे मेड़ हो, हर मेड़ पे पेड़ हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक मैसेज था जो इन जनपदों के लिए आवश्यक होगा सर। एक ये भी बात आई थी कि हमको टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग करना चाहिए, मौसम का पूर्वानुमान, क्योंकि ज्यादातर ऐसे जनपद होंगे इनमें जो रेन फेड होंगे, तो मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर सब किसानों को हम पहुंचा सकेंगे, और जो हमारी योजनाओं में डिजिटाइजेशन हो रहा है उससे हम सेवाएं हम दे सकेंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ होगा इन जनपदों में कार्य करने में सर। एक और इशू आया था कि इन जनपदों में अगर मैल न्यूट्रिशन की स्थिति अगर आती है, वेस्टिंग और स्टंटिंग की, तो हम एग्रीकल्चर को इस मैल न्यूट्रिशन के कार्यक्रम से जोड़ दें जिसमें कृषि उत्पादन संगठन बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और हम पल्सेस के साथ साथ मिलेट्स और अन्य फ्रूट वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन एफपीओज करते हैं या मशरूम है, इस तरह के जो उत्पाद है या मत्स्य उत्पाद है, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों से और साथ ही साथ मिड डे मील से जोड़ के हम लोग वहां पर एक उनकी आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको जोड़ सकते हैं, जिससे इनकम भी बढ़ेगी और मैल न्यूट्रिशन भी खत्म होगा सर। कन्वर्जेंस के लिए ये बात आई थी कि सबसे इम्पोर्टेंट, सभी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और 3 से 5 साल का सीड रोलिंग प्लान अगर जिला स्तर पे बनेगा, उसी हिसाब से सीड की उपलब्धता दिलाई जाए। एक इशू ये आया था कि एक्सटेंशन वर्कर्स को मदद करने के लिए हर गांव में अब एक कृषि सखियां, पशु सखियां और बैंक सखी है, इन तीनों का प्रयोग करना चाहिए हमें इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में, जिससे हमारे एक्सटेंशन की मशीनरी मजबूत हो सके। एक बहुत अच्छा सुझाव ये आया था कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं इन क्षेत्र में जिनका सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस है और बहुत प्रगतिशील ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो हमको उनको इंसेंटिवाइज करके हम इन सोशल मीडिया में जो किसान हैं उनको उपयोग करके अन्य किसानों को और एफपीओज को प्रेरित करें कि वो किस प्रकार से प्रगतिशील रूप में कार्य कर सकते हैं। एक सुझाव यह आया था कि जब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान इन 100 जनपदों के लिए बने, तो कुछ इनिशियल इंडिकेटिव एलोकेशन इन 100 जनपदों के विभिन्न योजनाओं का हर जो विभाग है जरूर दे दें हर वर्ष में,
जिससे कि वो एक मिनिमम इंडिकेटिव आउटले होगा, जिससे कि उसी हिसाब से प्लान तैयार हो जाए और इफेक्टिव कन्वर्जेंस हम कर सकें। उससे ज्यादा आवश्यकता हो तो जरूर दे दी जाए। एक अच्छा सुझाव ये आया था सर कि डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड ऑफ एग्रीकल्चर, जो पहले हम लोग की स्कीम में होता था लेकिन धीरे धीरे करके कम हो गया, अगर उसमें हम इन 100 जनपदों में अधिक धनराशि दे दें तो ये डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड फॉर एग्रीकल्चर से लोकल स्तर पे बातचीत करके जो प्लान बने तो कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हम शुरू करेंगे, जिसको बाद में हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो इसमें भी एक सुझाव अच्छा था जिसमें हम कार्यान्वित कर सकते हैं। एक क्लस्टर अप्रोच की बात आई कि हर जनपद में 30 से 35 क्लस्टर्स क्रॉप वाइज हम लोग डेवलप करके, चाहे फ्रूट वेजिटेबल्स के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री को जैसी स्थिति है, और हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें रिसोर्सेज को इजीली काम चैनलाइज करने में लाभ होगा। हर एक जनपद के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव था कि ICAR या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को एक तरह का नॉलेज पार्टनर की तरह वहां पर हम एसोसिएट कर दें, जो टेक्निकल इश्यूज को उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उनको मदद करते रहे, बीज से लेके रिसर्च से लेके टेक्नोलॉजी से लेके, और वहां के कृषि विज्ञान केंद्र उस जनपद का निश्चित रूप से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए विशेष रूप से इन जनपदों में और एक्टिव हो जाए। एक ये भी बात आई थी कि सब क्योंकि हम आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जो एक्सपोर्ट पॉलिसी हो और जो इंपोर्ट पॉलिसी हो वो इस बात पे ध्यान रखा जाए कि फार्मर्स का इंटरेस्ट भी रहे और उनको बेहतर दाम अगर विदेशों में भी मिल रहा है तो जरूर मिले, तो उसको भी ध्यान रखें लॉन्ग टर्म में, जिससे किसानों की आय बढ़ सके सर। और एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एक विशेष रूप से बात हुई थी। और जो अंतिम रूप से जो मैं कहना चाहूंगा कि सर ये जो सुझाव आए हैं, इसके अलावा हम लोग और भी जो लोग स्पीच नहीं दे पाए थे, जो उनसे भी हमने सुझाव मांगे हैं, और हमारे 10,000 FPOs इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो अपने चैट बोर्ड पे हमको हर थीम पे सुझाव दे रहे हैं। उनको हम लोग इनकॉर्पोरेट करके अब आपके सामने रख के इस कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे। मुझे सर अपने तरफ से इतना ही कहना था, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। और इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अलका उपाध्याय जी की वो एनहांस क्रेडिट थ्रू KCC पर अपनी बात रखना चाहे। पानी मंगाना, ठंडा पानी। अनम्यूट करके बोलना चाहे। क्या हुआ देखिए, आवाज गायब हो गई। ठीक है, हो गया। आया नहीं आ रहा। अगर अलका उपाध्याय नहीं जुड़ पा रही तो हम नेक्स्ट सेक्रेटरी RD से अनुरोध करेंगे कि वो जुड़ के अपनी बात कहना चाहे जब तक वो जुड़ते हैं। आए नहीं है कोई, सब गायब हो गए, कोई आ नहीं रहा इसमें, सब डीलिंक हो गए। क्या हुआ? हाँ, कहाँ चला गया? नीचे आ तो रहा था सर, ऊपर था। हाँ अलका जी अब बोले, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। सम्माननीय मंत्रीगण जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था क्रेडिट एनहांसमेंट का, और जो 2025-26 में KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर ली गई है। हमारे सेशन में जो लोग जुड़े थे वो बैंकर्स भी थे, इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए थे जो वास्तव में फील्ड पे काम कर रहे हैं, और साथ में कुछ लोग टेक्नोलॉजी पार्टनर्स या एग्जीक्यूशन पार्टनर्स भी जुड़े थे। सबसे पहले तो जो KCC का बढ़ावा हुआ है या जो बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर लोगों ने बात कही और ये समझ में आया कि बहुत अच्छा अपटेक हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डिस्पैरिटी अभी भी है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक तरफ तो KCC का स्प्रेड ठीक नहीं है या कम है, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में NPA का संख्या भी ज्यादा है। तो ये बहुत सारी बातें आई। एक ये भी बहुत बड़ी इशू आई कि जो कोलैटरल फ्री लोन एक्चुअली जो हमारे पास में उपलब्ध है 2 लाख का, ऑप्टिमल साइज जो अभी यूटिलाइज हो रहा है वो केवल 1.27 लाख का ही हो रहा है,
यानी कि एक बहुत बड़ा स्कोप है कि जो 2 लाख था और अब हम उसको बढ़ा के 5 लाख हम कर रहे हैं, उससे हमको जो एक्चुअल एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आई उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समक्ष में आई कि लैंड टाइटल्स का इशू है, और उस लैंड टाइटल्स प्लस कोलैटरल को लेके अभी भी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। कोलैटरल का जो इशू है वो तो मुझे लगता है बैंकर्स के साथ में हमें रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन लैंड टाइटलिंग के ऊपर और किस प्रकार से महिलाओं को और ज्यादा से ज्यादा हम समावेश करें या जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनका समावेश करें, इसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाने का जरूरत होगी। एक और इशू जो था जो सामने आया वो यूनिवर्सल स्केल ऑफ फाइनेंसिंग नहीं होना है। तो रबी और खरीफ के बीच में जैसे बात आई कि बहुत डिफरेंस होता है, क्रॉप्स के इंक्लूजन में टाइम जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और स्पेशली अब जब लैंड रजिस्ट्री हमारी बन रही है, एग्री स्टैक बन रहा है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि किस फार्मर के पास में क्या क्रॉप है और उस अनुपात में फाइनेंसिंग होनी चाहिए। ये इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग मेनली होती है केसीसी के माध्यम से, और इसमें वेरिएशन कई स्टेट्स में भी काफी है, तो उस स्टेट के वेरिएशन को भी हमें दूर करना चाहिए। एक बात उठकर आई लेकिन फिर बाद में उसको क्लैरिफाई भी किया गया कि अभी क्रॉप इंश्योरेंस कम है, क्या जो विस्तार है वो थोड़ा कम है, तो क्या केसीसी को उसके साथ में किसी प्रकार से जोड़ा जा सकता है। बट बाद में आरबीआई ने इस बारे में क्लैरिफाई किया कि अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर कुछ सोचना होगा तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत होगी। दूसरा, एक हर बार ये मुद्दा उठकर आया कि किस प्रकार से हम जो कलेक्टिव्स हैं, एफपीओज हैं, एसएचजीज हैं, एफपीसीज हैं, जेएलजीज हैं, उनको हम अपने फ्रेम में कैसे ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। आज की तारीख में आरबीआई की पॉलिसी के माध्यम से इसको करने में थोड़ी कठिनाइयां हैं, और क्या एक तरीका हो सकता है उसके ऊपर हमें विचार विमर्श करना होगा। इसके साथ साथ में कुछ सजेशंस भी आए और वो जो कि अच्छे सजेशंस थे। एक श्रिम्प इंडस्ट्री के लिए एक बात आई कि क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई है या वहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हाई है, तो क्या ये 5 लाख की जो अभी सीमा है वो उनको थोड़ी अपर्याप्त समझ में आती है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट अलोंग साइड केसीसी वर्किंग कैपिटल लोन के ऊपर में बार बार बात समझ आई है सामने कि क्या इस पर हम कोई प्रोडक्ट ला सकते हैं, इस पे हम आगे काम कैसे कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं या जॉइंट ग्रुप्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, उनको किस तरीके से, एक तरफ तो ये कि हम बहुत अच्छी तरीके से उनको यूज कर सकते हैं एक्सेस बढ़ाने के लिए, केसीसी का लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा ले, लेकिन ये काम करने के लिए एक तो पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत होगी, दूसरा टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की जरूरत होगी, और कुछ इम्प्लीमेंटर्स की भी जरूरत होगी। हमारे साथ में कुछ इस तरह के लोग जुड़े हुए थे, समुन्नति से मिस्टर अनिल थे, उन्होंने भी काफी इस बारे में बताया कि किस प्रकार से नए जो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव है उसको हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन है, जैसे कि लाइफ, एक बात समझ में आई, किसान खेती से हमारे साथ में मनोज द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि जो केसीसी है इनपुट बेस्ड है, लेकिन आज की तारीख में जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में या फिशरीज में, इवन क्रॉप हस्बेंड्री में डिमांड प्रोसेसिंग के लिए भी है, तो किस प्रकार से हम केसीसी का उपयोग इसके लिए भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी बार बार बात हमारे सामने आई है, और उसमें हम लोगों ने कुछ चर्चा की है। आरबीआई के जो अधिकारीगण मिस्टर गिरिधरन हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने भी इन सारी बातों को नोट किया है और वो डिटेल पॉलिसी पर्सपेक्टिव भी हमारे साथ में शेयर करेंगे। एक एसएचजीज की अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, या जो फार्मर्स एफआईजीज होते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, उनके लिए किस प्रकार से अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो अभी होती है उसको हम अमली जामा दे सके। एक सजेशन ये था कि जिस तरीके से शुरुआत में रमेश चांद जी ने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक सेक्टर प्लस फिशरी सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है,
तो फोकस्ड एफर्ट की वहां पर हमको जरूरत है। एक कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अमूल से जयंत मेहता जी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गुजरात में करीब एक उन्होंने काफी बड़ी संख्या बताई थी कि उन्होंने नए खाते कोऑपरेटिव बैंक्स में खुलवाए हैं और उसके 24 से 25 लाख खाते खुल गए हैं और वो ये सभी अब क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड को इजीली एक्सेस भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कोऑपरेटिव्स का जो विस्तार हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो भी हमारे लिए काफी मददगार होगा। जो छोटे किसान हैं जो एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोलैटरल फ्री लोन उपलब्ध है, वो बहुत अच्छी एक व्यवस्था है और उसमें छोटे इंडस्ट्री यानी कि गोटरी, पिगरी को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक चीज ये भी आई थी कि हमको जो मतलब बड़ा प्रैक्टिकल सजेशन आया हमारे ग्रुप से, वो ये था कि हमको थोड़ा सा जो व्यवस्था बैंक्स के द्वारा दी गई है उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करने की जरूरत है। इजियर एप्लीकेशन प्रोसेस हो, कैप्चरिंग ऑफ डेटा, जैसे हमको भी अभी लाइफ स्टॉक सेक्टर में एग्जैक्टली नहीं पता लग पाता है, सिर्फ कैंपेन मोड में जो हम लोग केसीसी इशू करवाते हैं उसका पता लगता है, परंतु फील्ड जो कि संख्या कम हो जाती है और फील्ड में क्रेडिट कार्ड जो मिल रहा, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है हमारे सेक्टर के लिए, फिशरीज के लिए, वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो एक MIS का हमें लगता है एप्लीकेशन प्लस MIS ये व्यवस्था भी करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मुझे लगता है कि एक्सटेंशन, जो बार बार बात आई कि ट्रेनिंग ऑफ बैंकर्स एंड हमारे जो एक्सटेंशन नेटवर्क है, इनके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के भी प्रयास हमको करने होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। संक्षेप में काफी जितने भी इश्यूज थे सबको हाईलाइट कर दिए। अब मैं सेक्रेटरी RD शैलेश कुमार सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी थीम पे प्रकाश डालना चाहे। नमस्कार सर, हम लोग के ब्रेकआउट सेशन में हमारे साथ 2 लखपति दीदियां थी जो कि उद्यमिता का काम भी करती हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक उद्यमिता का काम कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त सर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि थे, प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधि थे सर, वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट थे, इन सब के साथ चर्चा हुई। नेक्स्ट सर, ये हम लोगों ने जो सोचा है, हमारा जो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम है, इसके 5 अवयव हैं सर। संस्थागत क्षमता का विकास करना, उद्यमिता के कल्चर का विकास करना सर, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो स्पेशल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं लोक उद्यमों के लिए, उसके लिए प्रयास करना सर, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्मित करना और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम बनाना। नेक्स्ट 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 स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड सर, आज जो चर्चा हुई उसमें जो सुझाव आए, पहला था सर जो क्रिएटिंग रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर एंटरप्राइजेस, जो पारितंत्र विकास करने का था सर। तो उसमें अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है सर कि ये जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो है ही हमारा, उसके साथ साथ अब हमको जोर देना है एंटरप्राइज प्रमोशन पर सर। उसमें रिस्क टेकिंग जो है उसको थोड़ा बढ़ावा देना होगा, उसको किस प्रकार से रिस्क टेकिंग की क्षमता दीदियों में डेवलप की जाए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है सर। उसके बाद गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो सब्सिडाइज, रिस्क को सब्सिडाइज करने पर होना चाहिए, पूरे एंटरप्राइज को सब्सिडाइज करने पर नहीं। अभी सर जो गांव के अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों, मतलब वहां गांव के अंदर ऐसा भी इकोसिस्टम सर क्रिएट हुआ है जिसमें कंज्यूमर की बहुत सारी मांगे हैं, उनकी जो लोकल स्थानीय जो आवश्यकताएं सर, उनकी भी पूर्ति वहां के प्रोडक्शन से की जा सकती है और नॉलेज ट्रांसफर का उसमें काफी संभावना है। इसके बाद सर जो सिविल सोसाइटीज और जो इकोसिस्टम स्टार्टअप है उसके बीच में किस प्रकार से संबंध मजबूत किया जाए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, स्किल डेवलपमेंट और मार्केट नो हाउ, इस पे CSR जो संस्थाएं हैं उनकी मदद लेने की आवश्यकता है। अगला बिंदु था सर जो लास्ट माइल एक्सटेंशन किस प्रकार से किया जाए। तो उसमें जो कई सारे हमारे पास प्रूवन लाइवलीहुड मॉडल्स हैं सर, जो एक राज्य में मान लीजिए सफल हैं तो दूसरे राज्य में उसको संशोधित करके अगर चलाया जाए तो क्या उसका प्रभाव होगा, इसको देखने की आवश्यकता है। और
जो हमारे जो कम्युनिटी कार्डर्स हैं उनको एम्पावर करने की आवश्यकता के बारे में बात हुई सर। और उसके बाद सर प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन जो प्रोसेसेस हैं उसको इम्प्रूव मार्केट एक्सेस किस प्रकार से किया जाए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से एक्सेलरेट कर सकते हैं सर, तेज कर सकते हैं हमारी प्रगति को नॉलेज शेयरिंग के क्रम में, प्रशिक्षण के क्रम में और इकोसिस्टम बिल्डिंग के क्रम में। उसके बाद था सर जो हमारी जो CLF हैं, जो हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर है सर, उसको किस प्रकार से जो पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जोड़ के हम लोग और स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के आगे बढ़ें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर को किस प्रकार से हम सम्मिलित करें इस प्रयास में सर, उस पर भी चर्चा हुई। उसमें सर फिर से वही प्रोटोटाइप बेस्ड जो लाइवलीहुड मॉडल्स हैं वो एक बहुत ही की रोल भी भूमिका है उनकी इसमें, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता समझी गई सर। और एंड टू एंड जो वैल्यू चेन का अप्रोच है उस पर भी चर्चा हुई सर। और गवर्नमेंट जो है वो वैल्यू चेन के कस्टोडियन के रूप में काम करे और जो इकोसिस्टम्स का अप्रोच है उस पर ध्यान दिया जाए, इस पर बात हुई सर। और एक किसी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर पर निर्भर हुए बिना जो अनेक हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन सब के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाने की जरूरत है ताकि नॉलेज शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग इत्यादि पर जोर दिया जा सके। उसके बाद सर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा हुई सर। अभी के समय में कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो उसका बहुत सारा जो उसको रेवेन्यू आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सर तरह तरह के डिजिटल मोनोपोलीज जो है हमारे सिस्टम में उन पे खर्च हो जाता है। तो हमको डिजिटल पब्लिक गुड बनाने की आवश्यकता है जिससे कि वो जो उसका खर्चा होता है एंटरप्रेन्योर का उसको दूर किया जा सके। ONDC सर ये जो विकसित हो रहा है ये ई-कॉमर्स के लिए UPI का काम करेगा, इस पे चर्चा हुई सर। और AI टूल्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं और उनका उपयोग करना है ताकि बेनिफिशियरीज को हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी पहचान कर सकें। और लर्निंग के ऊपर लर्निंग में AI का इस्तेमाल करके इसको भी नीचे लेवल तक ले जाने की जरूरत है सर। और एक बात और उभरी इसमें सर कि हमारे जो गवर्नमेंट के सिस्टम में कई तरह के हमारे पोर्टल तमाम चीजें हैं सर, लेकिन वो ओपन नहीं है, तो ओपन API हो उनका, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता समझी गई सर। नेक्स्ट, प्रमोटिंग मास एंटरप्रेन्योरशिप सर, इसमें यह है कि हम जिले पे फोकस करें और हर एक जिले में प्रयास करें कि 10,000, ये भी सुझाव आया सर कि 10,000 हम उद्यमी एंटरप्रेन्योर तैयार करें उसमें जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें और इससे 5 लाख अगले 5 साल में उन जिलों में तैयार हों सर, जॉब्स तैयार हों। उसके बाद डिजिटल और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग जो है उसको स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में ले जाने की जरूरत है ताकि ये बात शुरू से ही लोग समझें कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप जाना है, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है ये उनको पता हो। और AI पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया सर, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करे डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम से और उनको तेजी से ऑनबोर्ड हो सकें वो हमारे सिस्टम्स पर, उसकी सुविधा हो। इसके बाद सर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हब्स के बारे में बात हुई। तो एक तो हमारा जो देश के अंदर जो हम काम करते हैं वो तो है ही सर, इसके अतिरिक्त जो दूसरे देश हैं, जो साउथ के दूसरे देश हैं सर, जो अफ्रीका के या अन्य महादेशों के जो दूसरे देश हैं उनको भी हमारी जरूरत है, तो उनको भी हम इससे मदद कर सकते हैं। और ये एक सुझाव आया सर। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होंगे उनसे स्केल आता है और जिससे कि अफोर्डेबल फाइनेंसिंग आएगी। तो फाइनेंसिंग के लिए किस प्रकार से हम डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं उसके ऊपर बात हुई। और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस जो कि डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दें और साथ साथ उससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। और सर इनोवेशंस जो है बिजनेस मॉडल में उसमें सिस्टम्स थिंकिंग को, डिजाइन थिंकिंग को किस प्रकार से उसमें डाला जाए, इस पे बात हुई सर। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर एंटरप्राइजेस के ऊपर बात हुई सर, जो ये इस बात पर चर्चा हुई कि MSMEs जो है हमारे, उनको कई तरह के कंप्लायंस बर्डन्स का सामना करना पड़ता है और जिसके चलते वो छोटा ही रहने में अपना भला समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार का काम किए जाने की आवश्यकता है ताकि ये MSME जो है बड़ा होने की बात सोच सकें। और कैपिटल सपोर्ट जो बिजनेस टारगेट करके दिया जाए ताकि रियल स्केलेबिलिटी आए और मार्केट डिस्टॉर्शन उससे कम हो, इस पे चर्चा हुई।
और सॉल्यूशंस जो है ऑनलाइन पोर्टल्स, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, लेबर और रिफॉर्म्स, इसके बारे में सुझाव है सर। और लो प्रोडक्टिविटी को एड्रेस किया जाए, स्किलिंग करके वर्कर्स को और टेक्नोलॉजी का समावेश करके, इसके ऊपर बात हुई। और एक बिजनेस एडवाइजरी इकोसिस्टम जो जिसमें कि इंडस्ट्री का मेंटरशिप हो सर, और इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री का हो, और ये जिलों तक ये पहुंचे, इस पे बात हुई सर। तो लगभग इतनी ही सारी बातें थी हमारे यहाँ, और इसको हम लोग सर इसी के आधार पर हम लोग आगे फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं स्कीम सर। अब आत्मनिर्भरता पल्सेस के विषय पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अपनी बात रखना चाहें। नमस्कार सर। तो हमारा जो ब्रेकआउट ग्रुप था उसका मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस था, और इसमें कई लोगों ने एक्चुअली इसमें अपना सहयोग दिया। खास करके इसमें चेयरमैन इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन, इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट गुलबर्गा दाल मिल एसोसिएशन, चीफ बिजनेस ऑफिसर स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एग्री एक्सपर्ट, और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर मयूर ग्लोबल कॉरपोरेशन और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश। साथ ही साथ इसमें जो इंटरवीनर्स थे, नेक्स्ट प्लीज, इनमें भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और इसके बाद वाइस चांसलर रायचूर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, डायरेक्टर रिसर्च रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, मैनेजिंग डायरेक्टर महाराष्ट्र सीड कॉरपोरेशन आदि लोग थे। मैडम मैं आपको टोक रहा हूँ, मेरा आग्रह है कि सीधे जो निष्कर्ष है उस पे आ जाए, ये सूची मेरे पास भेज दें आगे आए, हम लेने की जरूरत है। नेक्स्ट। तो प्रमुख रूप से 4 विषयों पर सजेशंस आए, और इनमें जैसे सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एरिया एक्सपेंशन और मार्केट अपॉर्चुनिटीज पे सजेशंस आए थे। अब जैसे सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर काफ़ी अच्छे सुझाव थे, जिसमें खास करके ब्रीडिंग बेटर वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हों, पेस्ट रेजिस्टेंस हों, अर्ली मैच्योरिंग हो, फोटो इंसेंसिटिव, हाई यील्डिंग सिंक्रोनस मैच्योरिटी ऑफ पॉड्स हो, और जिनमें कि कम पानी की खपत की भी आवश्यकता हो। साथ ही साथ इसमें स्पीड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी बात की गई, और ये कहा गया कि जो सीड बैंक्स हैं इनका डेवलपमेंट आवश्यक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सीड प्रोडक्शन भी देना उतना ही आवश्यक है। साथ ही साथ एक साइंटिफिक सीड स्टोरेज यूनिट को डेवलप करना, प्रोसेसिंग सेंटर्स और लॉजिस्टिक फैसिलिटी को खास करके उन जगह पे बनाना जहाँ पे कि पल्सेस का क्लस्टर अवेलेबल हो। फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस की गई, और साथ ही साथ ये बताया गया कि एफपीओज और कोऑपरेटिव्स को सीड हब्स में भी इन्वॉल्व किया जाए, और साथ ही सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज के रूप में भी उन्हें इन्वॉल्व किया जाए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाए ताकि ट्रेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स इंश्योर की जा सके, और ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स भी इंश्योर करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट प्लीज। जहाँ तक डेमोन्स्ट्रेशन का विषय है, इसमें क्लस्टर बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन पर खास एक आग्रह था, और इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वैल्यू चेन में, उन सभी का इसमें कुछ ना कुछ योगदान सहयोग होना चाहिए, जिसमें जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं वो जैसे रिसर्च को लीड करें, एफपीओज और कोऑपरेटिव्स फार्मर्स को कैपेसिटी उनकी बढ़ाएं और प्रोएक्टिवली उनके साथ कार्य करें। इंडस्ट्री और मिलर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्य करें। जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो फार्मर्स को बेहतर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करें, और साथ ही साथ अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट या मार्केट लिंकेजेस को डेवलप किया जाए।
इसके साथ साथ ये भी एक विषय आया कि जो खास करके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है या ऐसे एरिया जो लो प्रोडक्टिविटी से प्रभावित हैं, खास करके उन्हें टारगेट किया जाए और इनका कन्वर्जेंस पीएम धन धान्य कृषि योजना के साथ भी किया जाए। तीसरा विषय एरिया एक्सपेंशन का था। ऐसा माना गया था कि अगर हमें पल्सेस के जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना है, तो इसमें जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं, खास करके जो फैलो एरियाज हैं, जो रेनफेड है और जो वाटरशेड, इन तीनों को हमें लेना होगा और इन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी को खास करके प्रमोट करना होगा फॉर एक्सपेंशन। इसमें इंटरक्रॉपिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिससे कि जैसे कि शुगर केन में ये वाइड स्पेसिंग क्रॉप्स के रूप में इनको किया जा सकता है या मेड़ पर इन्हें कल्टीवेट किया जा सकता है। यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन की भी व्यवस्था की जा सकती है और जो सक्सेस स्टोरीज फार्मर्स की आ रही हैं उन्हें खास करके और अधिक प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। मार्केट अपॉर्चुनिटीज में एक जो कुछ सुझाव आए, उसमें एक तो ये था कि एफपीओ मॉडल को सपोर्ट किया जाए ताकि बेहतर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फार्मर्स को मिले। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का है कि भंडारण और इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए ताकि मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग के बाद क्लीनिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश की जा सके, साइंटिफिक स्टोरेज यूनिट्स बैठाए जा सकें, इनके प्रोसेसिंग सेंटर्स और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज खास करके पल्सेस क्लस्टर के अराउंड किया जाए। इसके साथ साथ एक सुझाव ये था कि जो पल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें इंसेंटिव्स और सब्सिडीज का लाभ मिल सके। तीसरा सुझाव ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें दाल मिलों के मॉडर्नाइजेशन का विषय था और इससे भी जो प्रोडक्शन में एक बढ़ोतरी हो सकती है। 100% तूर, मसूर और उड़द का प्रोक्योरमेंट नैफेड और एनसीसीएफ के द्वारा किया जाए, ये इस पर एक जोर दिया गया और जो ट्रेनिंग ऑन पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इन सभी पर प्रशिक्षण देने की बात कही गई। तो यही प्रमुख रूप से सजेशंस आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। अब मैं अगला जो 5वां थीम था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसमें सचिव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें ब्रीफ में। साहब, हमारे ये ग्रुप में 21-22 एक्सपर्ट्स ने इनपुट्स दिए हैं। इनमें से स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स थे, एफपीओ के मेंबर्स थे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सुझाव जो आया है ये जरा उसको पीपीटी में लगाइए। सुझाव जो आया है सर, मेन जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है वो है कि प्रोसेसिंग लेवल बहुत कम है। प्रोसेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 4 से 5 शतांश से ज़्यादा नहीं है और इसी के कारण वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है। 10 to 15% एस्टिमेटेड वेस्टेज है। तो इसको एड्रेस करने के लिए सर जो सुझाव आए हैं उनका समरी मैं कह रहा हूँ। वो पीपीटी लोड करने में कुछ तकलीफ हो रहा है प्रेजेंटेशन। तो पहला सुझाव यह है फार्मर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। फार्मर्स तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन फार्मर्स के किसानों के जो नॉलेज, नए जो तकनीक, नए जो सेच का जो तकनीक है, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसका जो टेक्निक्स है और क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, सॉइल न्यूट्रिशन का जो इशू है, इसके ऊपर उनका ज्यादा आइडिया नहीं है। तो इसके लिए प्रशिक्षण का जरूरी लोग मानते हैं कि इसको
प्रशिक्षण देना जरूरी है, सिर्फ इनपुट्स नहीं। सेकेंड इशू है ये इकोसिस्टम बेस्ड सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब क्रॉप रोटेशन, सॉइल इरोशन कंट्रोल, इसके लिए भी हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेना चाहिए। क्वालिटी इनपुट्स एंड कंप्लायंस में लोग किसान तो जानते हैं एमआरएल के बारे में, लेकिन एमआरएल लेवल्स टेस्ट करने के लिए इनका फैसिलिटी नहीं है ज्यादातर जगह। तो एमआरएल टेस्टिंग लैब का सुविधा होना चाहिए ये 100 डिस्ट्रिक्ट में, और उसके साथ ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी एक बनाना चाहिए इनके लिए। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे भी जो सपोर्ट, अभी जो सपोर्ट है वो किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में ये मोनोक्रॉपिंग से डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम, स्पेशली फल का जो बगीचा है इसमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम का जरूरी है। क्वालिटी सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल का सप्लाई, इसको भी बढ़ाना है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे गैप्स हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर, पैक हाउस, फार्म गेट लेवल पे इसका अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है। ये एक मेजर कारण है कि फूड वेस्टेज भी ज्यादा हो रहा है फल और सब्जी में। फूड सेफ्टी कंसल्टेंसी एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए उनको प्रशिक्षण भी चाहिए, और उनको एक सपोर्ट फार्म लेवल पे होना चाहिए सरकार की तरफ से या प्राइवेट जो कंपनीज काम कर रहे हैं उनके तरफ से। इंडिविजुअल क्विक फिजिंग टेक्नोलॉजी, इसका जो सब्सिडी मिल रहा है अभी, इस सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बाहर से जो इंपोर्टेड मशीनरी है उसका क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस भी 4-5 गुना ज्यादा है इंडियन मशीन से। तो ये यूज बढ़ाने के लिए इसका सब्सिडी ज्यादा होना चाहिए। मार्केट एक्सेस और स्टैंडर्डाइजेशन में कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट लेवल पे भी है, लेकिन इसके लिए कमोडिटी स्टीवर्डशिप काउंसिल या कमोडिटी काउंसिल बनाना चाहिए, जैसे ग्रेप्स में है, जो कि स्टैंडर्डाइज कुछ बेंचमार्क बना सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर्स, जो बायर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ वो प्राइस के लिए नहीं, लेकिन उत्पाद कितना हो रहा है इसके लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट में नाबार्ड का जो रीफाइनेंस सपोर्ट है, ये इसको एक्सपेंड किया जाए, और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को भी एक सपोर्ट दिया जाए, जैसे एफपीओ को हम लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में जो सजेशंस आए हैं उसमें एक है डीरेगुलेशन ऑफ एपीएमसी, जो कि फार्मर मार्केट लिंकेज को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इससे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिंग से वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग के लिए उनके पास प्रशिक्षण और उनके पास सपोर्ट भी दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल जो फल के लिए फायदावर हो सकता है, इसका भी कुछ स्टेट में इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कुछ वैरायटीज जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, ये सब वैरायटी इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और जीआई वैरायटी जो अभी है, इसका भी प्रमोशन होना चाहिए। अभी उतना प्रमोशन नहीं हो रहा है। और अर्बन एरिया और पेरी अर्बन एरिया में जहाँ पे मार्केट भी है और कंज्यूमर्स भी है, वहाँ पे एक क्रॉप क्लस्टर अप्रोच लेके इनको फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया जाए।
ये सर हमारा जो ग्रुप था, ये है समरी ऑफ सजेशंस। हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं जो नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स के विषय पर आईसीआर के जो एडिशनल सेक्रेटरी संजय गर्ग जी, आप बोलना चाहें, इस पर कुछ अपना वक्तव्य देना चाहें? अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा संजय गर्ग जी। नमस्कार सर। हमारा जो ग्रुप था सर, उसमें नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स पे था, जिसमें वैज्ञानिक लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग और फार्मर्स और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जुड़े थे और काफ़ी विस्तार से इसमें चर्चा हुई। हालांकि आईसीआर जो सीड डेवलपमेंट का काम करता है, वो हाई यील्डिंग सीड्स ऑलरेडी एक एक्टिविटी है आईसीआर की, लेकिन चूंकि एक स्पेशल नेशनल मिशन इस बजट में अनाउंस हुआ है, तो इसमें एक्टिविटीज़ को और एनहेंस करने के लिए, स्केल अप करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए क्या एक्शन लिए जाने हैं और क्या करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। तो पहला बिंदु जो इसमें आया है सर, कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो बेसिकली जो है ऑयल सीड्स और पल्सेस और वेजिटेबल्स के क्षेत्र में कुछ जगह हमको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे स्पेशल लैब्स फॉर जेनोटाइपिंग, फेनोटाइपिंग, स्पीड ब्रीडिंग वगैरह के लिए, सीड टेस्टिंग के लिए। और उसके अलावा जो हमारे साइंटिस्ट इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो हाई यील्डिंग सीड्स डेवलप करने के लिए जो डेटाबेस का यूज होता है, जो जीन्स के डेटा का यूज होता है, उसकी एडिटिंग और उसके एनालिसिस में इन सारी जो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, उनको यूज किया जा सके, ताकि ब्रीडिंग साइकिल को फास्ट किया जा सके और अधिक से अधिक हाई यील्डिंग वैरायटीज कम समय में डेवलप की जा सके। दूसरा जो पॉइंट था सर, कि इसमें प्राइवेट पीपीपी मोड में हमको जाना पड़ेगा, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें कोऑपरेटिव्स, कॉरपोरेशंस और प्राइवेट सेक्टर को सीड प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वो उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है। अभी भी प्राइवेट सेक्टर करता है सीड प्रोडक्शन का काम, लेकिन उतना प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव नहीं है कि हाई यील्डिंग सीड्स या हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट करने के लिए, ताकि उनको जो है वो फायदा हो सके। तीसरा जो पॉइंट था सर, कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि खाली हाई यील्ड पे ही हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, डिजीजेस भी आ रही हैं। तो जो अदर स्ट्रेसेस हैं, चाहे वो एनवायरमेंट रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं या जो बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, उनके साथ भी वैरायटीज ऐसी डेवलप हों जिनमें ना कि यील्ड बढ़े, बल्कि क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हों और डिजीज रेजिस्टेंस भी हों। तो यील्ड के साथ साथ बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगला पॉइंट जो आया था सर इसमें, कि जो प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग और मैकेनाइजेशन का आजकल यूज हो रहा है, उसके हिसाब से किस तरह से प्लांट के आर्किटेक्चरल ट्रेट्स जो हैं उनको एडिटिंग और मॉडिफाई करके अपने अनुकूल, उसके अनुकूल बनाना है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के, और वो भी, उस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला स्लाइड, नेक्स्ट। अगला पॉइंट था सर, कि जो जीन्स है, जो जेनोमिक रीजन्स है, जहाँ पे कि हाई यील्ड और क्वालिटी और स्ट्रेस रेजिलियंस है, उनका आइडेंटिफिकेशन और डिप्लॉयमेंट करके नए हाई यील्डिंग वैरायटीज और नई हाइब्रिड वैरायटीज को डेवलप करना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेगुलेशन से संबंधित ये आया था कि जो कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पीपीवी एंड एफआरए एक्ट है, सीड एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इनमें कुछ रूल्स में चेंज करना पड़ेगा, ताकि आईपी प्रोटेक्शन जो अभी नहीं, आईपी प्रोटेक्शन का उतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन नहीं है, जिसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीड डेवलपमेंट में या हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट में नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ रूल्स में परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
उसके बाद जो नया पॉइंट आया था सर कि न्यू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज और आईपीआर रिलेटेड प्रोविजंस का यूज भी वैरायटीज के डेवलपमेंट में होना चाहिए। और अगला पॉइंट ये आया था सर कि जो बायो पेस्टिसाइड्स और नैनो फर्टिलाइजर्स या और जो इनपुट्स हैं उनका भी जो डिलीवरी सिस्टम है सीड बेस्ड, जैसे सीड्स के साथ या सीड्स का जो डिलीवरी सिस्टम है उसी के साथ उसको सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए, ताकि खाली सीड्स ही नहीं, हाई यील्ड के लिए बाकी और इनपुट्स की भी आवश्यकता होती है और वो सारे इनपुट्स का भी डिलीवरी सिस्टम सीड्स के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। उसके बाद सर लास्ट पॉइंट ये था कि जो एफिशिएंट सीड प्रोडक्शन रिसर्च जो हाइब्रिड्स में है, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल सीड सिस्टम्स, स्मॉल होल्डर फार्मर जो है, जो छोटे किसान है जिनको अभी क्वालिटी सीड नहीं मिल पाता है, तो पूरे जो सीड का जो सप्लाई चेन है, पूरे सीड्स का जो सप्लाई सिस्टम है, उस सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है या उसको फासन करने की जरूरत है, ताकि जो सीड्स डेवलप तो हो जाएं और डेवलप होने के बाद कम से कम समय में और इफेक्टिव मैनर में एक छोटे किसान को मिल सके। सर ये कुछ सुझाव आए थे, इसके अलावा कुछ और भी जो और डिटेल में आए थे उनकी हम एक रिपोर्ट बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के विषय पर सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स ऑन है। सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखना चाहूँ। नमस्कार सर। सर कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के सत्र में लगभग शुरुआती सत्र में 900 लोगों ने इसमें भाग लिया। 11 स्पीकर्स थे और 17 लोगों ने इंटरवेंशंस किए। लगभग 80 सजेशंस प्राप्त हुए। इसके अलावा चैट बॉक्स में भी लगभग 25 सजेशंस प्राप्त हुए। एक व्हाट्सएप का भी हम लोगों ने साथ साथ लोगों को बताया था, तो उस पर भी हमारे को अभी तक 30 से अधिक सजेशंस प्राप्त हो चुके हैं। सर हमारे जो प्रतिभागी थे उसमें इंटरनेशनल कमेटी ऑन कॉटन, एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉटन, किसान, साइंटिस्ट जो रिसर्च एजेंसीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के थे, इंडस्ट्री जिसमें जिनर्स और एंड यूजर यानी कि जो गारमेंटिंग इंडस्ट्री है या फैब्रिक इंडस्ट्री है वो, तथा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एफपीओस के मार्केटिंग के लोग भी उपस्थित थे। सर फार्मर्स एंड इंडस्ट्री ने दोनों ने इसका मिशन का भारी स्वागत किया और इस बात के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि इसकी आवश्यकता उन्हें एक लंबे समय से महसूस हो रही थी, जिसकी पूर्ति इस मिशन के आने से हो सकेगी। सर मुख्यतः ये मिशन आप के बारे में जब बातचीत हुई तो किसानों की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से दो ही बातें आई हैं। पहली बात ये आई है कि क्वांटिटी की ओर ध्यान देना है, यानी कि प्रोडक्टिविटी के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से और क्या उन्हें कठिनाइयां हैं इस पर उठाई, और इंडस्ट्री ने क्वालिटी की बात कही। सर 150 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग कपास की खेती होती है और जो उनकी समस्याएं हैं, ये समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पहला कि सीड का रिप्लेसमेंट बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है। दूसरा, इस समय जो मृदा है, जो सॉइल है, उसमें एक तरीके का फटीग है। तीसरा, पिंक वुलवर्म या इसी तरीके के अन्य से वो उनकी जो उपज है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तथा जो अभी मैकेनाइजेशन का स्तर है वो अत्यंत न्यून है, इसमें बेहतरी की आवश्यकता है। सर इन्हीं के साथ जिनर्स या एंड यूजर्स के साथ में जो मुद्दे उठे वो क्वालिटी से जुड़े हुए थे। उन मुद्दों में उनकी तरफ से ये बात आई कि यहाँ अच्छे कॉटन की जो पहचान होती है उसमें कंटेमिनेशन या किसी प्रकार की मिलावट जो है वो 1% से नीचे ही रहती है, जबकि सामान्य तौर पर जो उनको एंड यूजर्स को मिल रहा है उसमें यह 2% से अधिक है। इसलिए जो इंडिया का जो कपास है, जो भी फैब्रिक बन के जाता है, उसमें रंग होने के बाद में या एंड प्रोडक्ट के में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिससे उसकी एक्सेप्टेंस कम है। सर सबसे बड़ा थ्रेट लोगों ने महसूस किया, जो इंडस्ट्री की ओर से बात आई, कि इजिप्ट और ब्राजील की ओर से एक भारी थ्रेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंडिया की प्रोडक्टिविटी से 5 गुना लगभग है और वहां की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। यह भी महसूस किया गया कि उनके प्रोसेसेस भी थोड़े से बेहतर हैं और हमें ब्राजील को की तेजी से उभर रहा है
हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को ध्यान देने की जरूरत है। सर, जो सुझाव आए वो भी इन समस्याओं से जुड़े हुए सुझाव थे। इसमें सर इनपुट साइड पर जो सुझाव प्राप्त हुए उसमें सॉइल के काम करने की जो बातचीत हुई, उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हुई, उसमें कार्बन चारिंग की बात हुई, और साथ में मृदा को जो फटीग है उसको खत्म करने के लिए एक एरिया बेस्ड अप्रोच पर काम करने की बात फार्मर्स और साइंटिस्ट दोनों ने कही। सीड के बारे में भी सर जो बातचीत हुई वो मुख्यतः यह थी कि उस तरीके के जीनोम्स को बढ़ावा दिया जाए जिसमें जिनिंग का आउटटर्न रेशियो बेहतर हो, और साथ ही हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को बनाने के लिए एक अपना मीडियम टर्म अप्रोच भी लेकर के आने की बातचीत हुई। पेस्ट में सर पिंक वुलवर्म के एलिमिनेशन के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कुछ सुझाव आए। कुछ एरिया अप्रोच के अतिरिक्त एक मैपिंग्स को भी करने का कहा गया कि किन एरियाज में इस तरीके की आवश्यकताएं महसूस की जा रही हैं कि पिंक वुलवर्म का अटैक है, और उसमें सेग्रीगेशन की अप्रोचेस को किस प्रकार से लेकर के आया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोस्ट इफेक्टिव पेस्ट मैनेजमेंट इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जिनकी कीमतें कम हो उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। सर इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स जो हैं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काम आएंगे उस बाय प्रोडक्ट्स पर और कार्बन चारिंग के ऊपर भी बातचीत की गई है। सर ये इनपुट साइड पर मुख्यतः मुद्दे थे जो कि फसल के साथ में जुड़े हुए थे। दूसरी बात टूल्स के ऊपर हुई सर। टूल्स में सबसे ज्यादा बात हुआ कि जो मशीनें हैं वो छोटे फार्म्स के लिए उपयुक्त नहीं है और बहुत महंगी है। श्रम हायरिंग पंचायत स्तर पर जो शुरुआती दौर पर कार्तिक मुरलीधरन ने अपने सुझावों में कहा था कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स थ्रू पंचायत कराने के बारे में बातचीत की गई और वो सुझाव भी दिया गया। इसके अलावा न्यूमेटिक प्लांटर्स के बारे में बहुत विशेष तौर पर मांग की गई है। इरिगेशन में फ्लावरिंग के टाइम पर क्योंकि रेनफेड एरियाज में इसका काम ज्यादा चलता है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन की मांग भी सर काफी ज्यादा इससे जुड़ी हुई थी। सर जो प्रोसेसेस को मॉनिटर करने के लिए जीताई, उस प्रोसेसेस में एक्सटेंशन वर्क पर बहुत तेजी से काम करने को सुझाव आया और ये मांग उठी कि हाई डेंसिटी प्लांटेशंस पर काम किया जाना चाहिए। सर विशेष तौर पर जो अभी 6 से 7 हजार पौधे प्रति एकड़ लग रहे हैं, इसको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल किया जा सकता है और बहुत से किसान कर भी रहे हैं। स्थिति पर काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सुझाव आया और इस पर प्रथम वर्ष से ही काम करने के लिए सुझाव दिया गया है। सर नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, IoT डिवाइसेस और AI के जो टूल्स है प्रेडिक्टिव फार्मिंग के लिए, उसके बारे में काफी विस्तार से बात हुआ और जहां जहां पर इनका उपयोग किया जा रहा है उसके अच्छे और सकारात्मक परिणाम जो देखने को मिले हैं उनको स्केल अप करने के लिए भी सुझाव दिया गया है। तो सर ये खेती के बारे में जो मुख्य तौर पर मुद्दे थे उनमें इस तरीके की बातचीत हुई। सर जो क्वालिटी के मुद्दे थे, उन क्वालिटी के मुद्दों में कस्तूरी कॉटन को जो बढ़ावा देने की बातचीत हुई और मुख्यतः जो हमारी जिनिंग की फैक्ट्रीज हैं उनके मॉडर्नाइजेशन को किया जाने की आवश्यकता है। साथ ही फार्म लेवल पर जो कलेक्शन होता है उसी में कंटेमिनेशन कंट्रोल करने के लिए साथ साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह भी मांग की गई कि टेस्टिंग फैसिलिटीज का विस्तार नीचे के स्तर पर किया जाए और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और उसके विस्तार की भी संभावनाओं पर चर्चा हुआ। सर इसके अतिरिक्त जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें 3-4 मुद्दों पर बात हुआ। मार्केटिंग के बारे में खास तौर से कि मार्केटिंग किस तरीके से बेहतर हो सके जिससे कि जो मिडलमैन है उनको एलिमिनेट किया जा सके, उन्हें सही मूल्य मिल सके किसानों का। इस पर FPOs के मॉडल पर, अमूल के मॉडल के विस्तार को कुछ जगह जो विदर्भ के इलाके हैं उसमें इस तरीके की संभावनाएं पहले से मौजूद है, उनके रेप्लिकेट करने पर बातचीत हुआ और ये एक अच्छा सुझाव भी आया।
दूसरी बात हुई कि किसी भी प्रकार की अप्रूवल्स प्राप्त करने में जो वर्तमान रेगुलेशंस है, खासतौर से नए वैरायटीज को ले आने के लिए या नए पेस्ट मैनेजमेंट के चीजों को ले आने के लिए, उन अप्रूवल्स में काफी समय लगता है। इस समय को कैसे कम किया जाए और अप्रूवल्स को कैसे फास्ट ट्रैक किया जाए, इस सुझाव को भी दिया गया। साथ ही मॉनिटरिंग को बेहतर करने के लिए भी सुझाव हुआ। सिर्फ तीसरा जो खंड था वो था कि इसमें इनोवेशंस की गुंजाइश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ इनोवेशंस की क्या गुंजाइश है। सर, आप अवगत ही है कि मिल्कवीड का जो पौधा है, उस मिल्कवीड के पौधे की थर्मल रेजिस्टिविटी और जो भी लाइफ है, लॉन्जिविटी है, वो कहीं बेहतर है। बहुत सारी महंगी चीजें जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, के सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए मिल्कवीड जैसे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, उनकी संभावनाओं पर कामकाज करने के लिए और उनके ब्लेंड्स कॉटन के साथ मिलकर के बनाने के लिए, इस पर भी काम करने पर चर्चा हुई। खासतौर से यह भी इम्पोर्टेंट है कि पूरे जो हमारे बाजार हैं, हमारे निर्यात के जो बाजार हैं, वेस्ट में हैं और वहां पर ठंड अधिक पड़ती है, तो इंडिया केवल उनके लिए 4 महीने के लिए भारत कपड़ा नहीं बना करके पूरे 8 महीने 12 महीने के लिए कपड़ा बनाए। इसके लिए विंटर रिलेटेड जो मटेरियल है उस पर काम करने के लिए मिल्कवीड भी जैसे जो फाइबर है उनकी संभावनाओं पर काम करना है। सर, कुल मिलाकर के कपास के काम में यदि मैं कहूँ तो जो पूरा चीज उभर के आया उसमें किसान की बात, कारखानों की बात और कस्तूरी कॉटन की बात, ये तीनों चीजों की बात के साथ में हमारे सारे सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें समाहित करके हम रिपोर्ट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के माध्यम से आपको प्रेषित कर सकेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कॉम्प्रिहेंसिव अपने बात की। अब मैं सेक्रेटरी पोस्ट से अनुरोध करूंगी वंदिता मैडम को कि इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी के विषय पर अपनी बात रखना चाहें 5 से 7 मिनट में। धन्यवाद। नमस्कार सारे उपस्थित मंत्रीजन और सचिव और अन्य सभी लोग जो जुड़े हुए हैं। आगे चलिए। इसमें शुरू में मैं बस बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो 2 भाषण में घोषणाएं थी बजट के भाषण में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक को कैसे तैयार किया जाए, इस पर थी। इसमें जो 24 नंबर और 25 नंबर 2 देखें तो इनमें ऐसा था कि वित्तीय समावेशन के लिए सीधा सीधा कार्य क्या डाक विभाग और कर सकता है, अभी भी कर रहा है। और दूसरा जो उसमें सबसे मुख्य मुद्दा है कि जो सामान की आवाजाही है, जो पत्रों की डॉक्यूमेंट्स को भी आना जाना है, उसके लिए देश में और विदेश में जो अंतर्देशीय सेवाएं और जो निर्यात है उसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट्स थे, जो लोगों ने पैनल में बोला और स्पीच दी, उसमें एनपीसीआई, नाबार्ड, एसएचजी के भी मेंबर थे, आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो काफी और बर्ड हमारा जो इंस्टीट्यूट है जो रूरल डेवलपमेंट का, और हमारे 2 मंत्रालय मुख्य रूप से जो जुड़े थे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और एनआरएलएम के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जुड़ी थी। मैं किसी को भूल रही होंगी, बहुत लोगों ने सुझाव दिए। तो सबसे पहला जो सुझाव जो वित्तीय समावेशन से संबंधित है वो एक है कि रूरल कम्युनिटी हब, यानी कि जो हमारा वित्तीय समावेशन के लिए ग्रामीण विकास का जो समुदाय केंद्र बने, वो पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। में भी इसलिए क्योंकि हमारे पास और जो मंत्रालय हैं उनमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का भी हब है और क्या बनने वाले हैं। वो अगर साथ साथ हो जाएं तो उससे ये फायदा होगा कि वहीं पे स्किलिंग हो जाएगी, उनको हम अन्य सेवाएं जैसे कि हम उनके खाते खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जरिए हम लोग करीब 170 साल से कर रहे हैं, वो कार्य, इंश्योरेंस और उसके अलावा क्रेडिट, ये कैसे इनको दिया जा सकता है। वहां पे एक तो उनको एक्सेस मिल सकती है, उनको मदद देके, और ये सारे कार्य किए जा सकते हैं एमएससी के लिए, क्लस्टर्स के लिए, आर्टिजन्स के लिए, एसएचजीज के लिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी सेक्टर की स्कीम सर्विसेज जो बहुत जरूरी है, उन सेवाओं का एक्सेस हम वहां दे सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस जो है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के जरिए सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट और सब तरह के खाते देता है सीनियर सिटीजन, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं और ना कि कोई ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसी तरह जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, जो कि 7 वर्ष में 11 करोड़ खाते खोल चुका है, मुख्य रूप से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, वहां भी यही परेशानी है कि इंस्टीट्यूशनल खाते नहीं है। और सबसे ज्यादा जो आवश्यकता इस डिस्कशन में निकली वो ये निकली कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको आवश्यकता है दरवाजे के पास सेवा मिलने के लिए। तो इसमें 2-3 तरीके से इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स आ सकते हैं। ये बात हुई 2 तरह से। एक तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में नए तरह का खाता आ सकता है जो 1995 में होता था, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के लिए, सबके लिए आ सकता है। छोटे वालों के लिए आए, बड़े बड़े लोगों के खाते बेशक ना खोले जाएं। उसमें सेविंग्स के अलावा टर्म डिपॉजिट की आवश्यकता भी बताई गई। हमारे पास एसएचजी जुड़े थे और हमारे पास लिखित में भी आए हैं सुझाव। उसके अलावा अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है वो सेविंग्स के अलावा खाता खोल पाए या स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सके, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि इस आवश्यकता को भी देखना चाहिए। इसमें रिजर्व बैंक जो रेगुलेटर है वो देखेगा कि किस तरह करना है, या लिमिटेड रूप से कोई माइक्रो क्रेडिट फ्लो हो सकता हो। तो फ्लो के लिए मेन है कि पास में क्रेडिट पहुंचना है और क्रेडिट के बारे में जानकारी देनी है। तो और इंश्योरेंस में भी यही दिक्कत है कि पहुंच की परेशानी है और बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बड़े अच्छी इंडस्ट्री में बन रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं चलता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने इसमें बहुत पहल की है और बंडल प्रोडक्ट्स, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पहुंचाए हैं। डाक विभाग पहले से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस छोटे स्तर पे करता है, बहुत बड़ा नहीं है और उसमें, लेकिन लोगों को आता है ये कार्य करना। डीबीटी पहले से हो रहा है, करीब 10% डीबीटी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक और आईपीपीबी के खातों के जरिए जाता है और स्टेट गवर्नमेंट से भी टाई अप्स है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है। डोर स्टेप एक्सेस है, ऑनलाइन ऑर्डर्स की सुविधा हमें डालने की जरूरत है। जब किसी को कैश चाहिए वो हम बिल्ड कर रहे हैं डाक विभाग में, तो इस पे भी जरूरत जताई गई थी। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो बैंक्स भी देते हैं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक देता रहा है और कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा दिया था, ये भी बढ़ाया जा सकता है। ईएमआई पिकअप थोड़ा सा शुरू हुआ है थर्ड पार्टीज के लिए और ये कार्य एसएचजीज को बहुत जरूरत है, ऐसे एसएचजी के जो वक्ता थे उन्होंने बताया, और ये लो कॉस्ट पे डाक विभाग आराम से दे सकता है। और जो कैश मैनेजमेंट, जो काम डाक विभाग को करना होगा, इसमें पीछे से कैश मैनेजमेंट सिस्टम और मजबूत बनाना है, जिसके लिए कार्य अभी से चल रहा है। मैकेनाइजेशन भी हो रहा है काफी लाइंस का, जो हमारा बैक हैंड है, और आईटी की बैकबोन मजबूत बनानी है। एक जो सबसे बड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ है, सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है क्रेडिट। तो मैंने थोड़े रूप तो बताया क्या था। एमएससीज, नॉन लोनी फार्मर्स खास तौर पे बोला गया, और एसएचजीज में खास कहा गया कि इंडिविजुअल एसएचजी मेंबर्स और लखपति दीदी खास तौर पे बहुत बढ़ानी है। एनआरएलएम में उन्होंने बताया मैडम ने कि ये इसकी जरूरत है। और शेड्यूल्ड और कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों की तरफ से ये बात आई कि हम उनका जो क्रेडिट है इन खातों में अगर लैंड करा दें जो डाकघर में है या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है, तो बहुत आसानी हो जाएगी, जो पहले भी बताया। एक सुझाव है जो अंदर से आया था, जो पहले कुछ वर्ष 2 साल से अंदर गवर्नमेंट में बात होती रही है कि पोस्टल जनधन नाम का अकाउंट हो सकता है, जैसे कि जनधन बैंक में होता है, जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो। इस समय 10,000 है बैंकों में, 10,000 से 50 भी हो सकती है, जो शिशु मुद्रा लोन की तरह हो सकती है। इस तरह की बातचीत भी हुई है। और वर्किंग कैपिटल लोन का खास अभी बात हुई थी आज, कि बैंक के टाइप्स के जरिए पीछे या तो क्रेडिट गारंटी दे के, और सिर्फ एक जरिया होगा डाकघर ये देने के लिए। पेमेंट्स बैंक का मैंने बता दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर थर्ड पार्टी लोन्स, ये थोड़ा जो कागजी कार्रवाई हम थोड़ी कर भी रहे हैं। केवाईसी का कार्य म्यूचुअल फंड्स के लिए कर रहे हैं, और भी कार्य हो रहा है, डाक विभाग करता है ये कार्य, लेकिन बहुत बड़े रूप से नहीं है। और इसके अलावा बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए थे एनपीसीआई ने, जिसमें क्रेडिट लाइंस यूपीआई देने का शुरू हो गया है, पॉस टर्मिनल्स, यूपीआई क्यूआर कोड्स, टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डाकघर के द्वारा दिए जा सकते हैं, ये बात उन्होंने की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिक्योर ब्लॉकचेन्स के जरिए हैं, उनकी भी उपलब्धता या तो रूरल कम्युनिटी हब या डाकघर के सीधे डाकघर के जरिए,
और कोई पायलट उन्होंने ही सुझाव दिया कि आरबीआई से बात होनी चाहिए कि इंडिया पोस्ट या आईपीपीबी का पायलट यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो बन रहा है आरबीआई का उसमें होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा सुझाव है, हम भी इस पे आगे कार्य करेंगे। व्हाट्सएप बैंकिंग की बात सेक्रेटरी डीएफएस ने बताई, जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में और आईपीपीबी में सोचने की आवश्यकता है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मैंने बताया बहुत साधारण सा प्रोडक्ट है, उसमें आसानी से लोगों को समझ आता है और बेच आसानी से जाता है और उससे फायदा है, और उसमें लो प्रीमियम और हाई बोनस है। जो थर्ड पार्टी टाइप्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं ग्रुप और टर्म लाइफ में, लेकिन जहां जरूरत पाई गई हेल्थ ग्रुप, हेल्थ एक्सीडेंट, एसेट प्रॉपर्टी, फायर, बिजनेस इंटरप्शन, क्रॉप, फायर, बिजनेस इंटरप्शन और क्रॉप और एसेट प्रॉपर्टी में इस समय डाक विभाग कुछ खास इसमें है नहीं एक्टिव, और ये किया जा सकता है। और इसमें बंडल प्रोडक्ट्स बड़े आसानी से बेचे जा सकते हैं, थोड़ी सी बंडलिंग होके हेल्थ और एक्सीडेंट और उसके साथ चिल्ड्रंस एजुकेशन का एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लास्ट ईयर बिका था, जो 5 इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके फ्लोट किया था आईपीपीबी के थ्रू। तो ई असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज उसी से संबंधित है। तो जो भी सेवाएं वहां पे दी जा सकती है रूरल कम्युनिटी हब, वो वैसे भी आज की डेट पे भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक 100% डिजिटल बैंक है, और हाथ से ग्रामीण डाक सेवक वहीं पे खाता 5 मिनट में खोल के 5 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है खाता, इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह की सेवाएं, और एक डाक चौपाल के लिए बहुत इंटरेस्ट लिया लोगों ने। हम डाक चौपाल करते हैं, करीब 1.5 साल के अंदर हमने 50,000 डाक चौपाल किए, जिसमें करीब 50 लाख लोगों ने भाग लिया। उसमें आई थिंक 42 या 46% महिलाएं थी। और डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग हमने देनी शुरू की है। साथ में नाबार्ड हमारी मदद करता है, उनके भी कैंप्स हैं। तो जितने ज्यादा हम लोग डवटेलिंग कर लेंगे, उससे डाक विभाग तैयार है हमेशा डवटेलिंग करके, और जनसमर्थ, क्रेडिट पोर्टल, जन सुरक्षा पोर्टल जो इंश्योरेंस का है, लोन रेफरल्स, हर तरीके से हम तत्पर हैं ये सेवाएं देने के लिए। और इस सबको करने के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बहुत हमारे जो डाक विभाग में इन्वेस्टमेंट के लिए बातचीत चल रही है, जो अनाउंसमेंट में है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि ये पब्लिक गुड है। जो डाक विभाग की बैकबोन है वो ऑपरेशंस के लिए सप्लाई चेन जो है पूरी कंट्री की हमारे ऊपर चली थी। कोविड में जब देखें सिर्फ डाक विभाग चला पा रहा था, क्योंकि गांव-गांव तक अपनी जीवन को दांव पे लगा के लोगों ने काम किया है। तो इसमें जो सारी सेवाएं हैं इस वक्त हम देते हैं, डाक विभाग देता है। सिर्फ यह है कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और जो गांव की सेवाएं हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोर्ट, दवाइयों में सपोर्ट, टेक्सटाइल्स में अगर आपको फैब्रिक भेजना है, कॉटन कहीं भेजना है, सब चीजें डाक के जरिए आराम से जाती हैं और आगे भी जाएंगी। पीएम विश्वकर्मा में आर्टिजन्स के लिए वीविंग की मशीन्स क्या नहीं गया है, मतलब पत्थर भी गए हैं जिनको कार्व करना है उनको, जो स्कल्प्टर्स हैं। तो इस तरह के कार्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स, सेमी ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स, ज्यादा जो गाड़ियों के लिए जो लोकल गांव में इंटीरियर में ई व्हीकल्स वगैरह, ये हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है जो हम अलग से भेजेंगे गवर्नमेंट को। सो ये जो चीजें थी इन सबकी नीड इस डिस्कशन में आई। बस इतना ही कहना चाहूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो नवा हमारा जो थीम था फिशरी से संबंधित, अभिलक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो 5 से 6 मिनट में अपनी बात रखना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। ब्रेकआउट सेशन 9 में हमारा जो टॉपिक था उसमें भारत के समुद्र में जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और जो हाई सीज है उसके सतत दोहन के लिए क्या सुझाव आ सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की। और इसमें सर खास फोकस इस बात पे भी रहा कि हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 50% हिस्सा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, वहां पर मत्स्य पालन के सभी रिसोर्सेज को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है। लगभग सर ब्रेकआउट सेशन में 10,000 लोग मत्स्य पालक और उनके संगठन हमारे साथ जुड़े। 20 हमारे पास पैनलिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट थे और लगभग 50-55 सुझाव सबसे आए।
मुख्य जो सुझाव आए सर उनका मैं आपके सामने आकलन करना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो एक उभर के आई वो ये थी कि जो भी गाइडलाइंस या कार्यशैली बनाई जाए समुद्र में ईजेड और हाई सीज के समक्ष के बारे में, उसमें कोऑपरेटिव्स, हमारे जो मत्स्य पालक कोऑपरेटिव्स का हिस्सा हैं या जो फार्मर प्रोड्यूसर फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्सा हैं, पारंपरिक जो मत्स्य पालक हैं, उनको जरूर इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा कोई इंप्रेशन ना जाए कि बड़े जहाज आकर के इसमें ऑपरेट करेंगे, तो कोऑपरेटिव्स और एफएफपीओस पे फोकस रहना चाहिए। दूसरी बात जो सर बहुत बड़ी उभर के सबने बड़े अच्छे सुझाव दिए वो था कि किसी भी चीज का मार्केट एक्सेस बहुत जरूरी होता है, और मार्केट एक्सेस में एक केंद्र बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन, कि जो मछली है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किस प्रकार की है, उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, और आगे उसकी पूरी सोर्सिंग, उसके बीज से लेके पनपने से लेके मार्केट तक क्या है। तो ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन का सिस्टम, जहाज तो समुद्री जहाज चले ईजेड में और हाई सीज में, लेकिन ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो सर बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे जितने मत्स्य पालक हैं जिनकी आजीविका समुद्र के साथ जुड़ी है, उनके लिए किसी भी तरह की बड़ी पैमाने पे कमर्शियल फिशिंग या कमर्शियल स्पीशीज को पकड़ने के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जरूरत है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और कुछ देशों का जिक्र किया गया जैसे नॉर्वे, ताइवान, चाइना, जापान, मालदीव्स, इंडोनेशिया। तो ये भी बात आई कि इन देशों से भी हमें सीखना चाहिए कि वहां पे छोटे मत्स्य पालक को समुद्री जहाजों के साथ जोड़ के किस तरह से सारी प्रक्रिया को चलाया जाता है। तीसरा मुद्दा सर जो मैरीकल्चर की दृष्टि से, माने कि समुद्र में अगर हम किसी चीज का कल्चर करना चाहते हैं तो उसमें सर बहुत बड़ा भाग एक शैवाल का रहता है, सीवीड का, और सीवीड के बहुत फायदे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं। तो एक हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उनका ये कहना था कि जो हम सीवीड में नॉर्मल एक अप्रोच लेके चलते हैं कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, फार्मर्स से जुड़े, उसको तो आप करिए, लेकिन ऑफशोर सीवीड माने कि समुद्र में और अंदर जाके 60-70 नॉटिकल माइल के आगे जाकर के हम अगर ऑफशोर सीवीड को स्केल करें, बड़े प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को ला करके विद ड्यू प्रोसीजर, तो हम इंडस्ट्रियल फीडस्टॉक की कमी बहुत पूरी कर सकते हैं। उसके बाद एक सुझाव ये भी आया सर कि समुद्र में मछली पकड़ना तो एक बात है, लेकिन समुद्र की मछली को पकड़ के अच्छी कमर्शियल स्पीशी को, जैसे टूना है या बिलफिश है, उसको पकड़ के जब तट पे लाएंगे तो उसकी जो जानकारी है डेटा के तौर पे और उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए स्मार्ट हार्बर्स, स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का विकसित होना बहुत जरूरी है, ताकि डेटा कलेक्शन सीमलेस हो और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग से वैल्यू बढ़े और किसी किस्म की कमी वैल्यू और वैल्यू एडिशन में ना आए। इसके अलावा सर ये भी बात पे जोर दिया गया कि टूना और बिलफिश जैसी मछलियों को जब हम पकड़ते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, वैल्यू रियलाइजेशन अच्छी लेने के लिए डॉलर्स में, तो मार्केटिंग बीज से लेके बाजार तक बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक्वा पार्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने चालू किया है। ऐसा एक्वा पार्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए तटीय राज्यों में और हमारे आइलैंड्स में भी। एक और बात सर जो मुख्यतः बहुत स्पीकर्स ने कही कि मदर और चाइल्ड वेसल का कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसी वेसल्स, ऐसे समुद्री जहाज जो मछली पकड़ते हैं और ऐसे समुद्री जहाज जो मछली पकड़ के उसको ऑनबोर्ड प्रोसेस करते हैं और वहीं पर उसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ये मदर और चाइल्ड वेसल का कॉन्सेप्ट भी हमें एफपीओ से जोड़ के और कोऑपरेटिव से जोड़ के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात पे भी जोर दिया गया सर कि मॉडर्न टेक्निक्स जो आज के दिन समुद्री एरिया में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि फिश एग्रीगेशन डिवाइसेस, एक ऐसा यंत्र जिससे मछलियां अपने साथ एक साथ केंद्रित होकर एक जगह आ जाती हैं और मछुआरे को दिक्कत नहीं पड़ती, ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स को भी विकसित किया जाना चाहिए। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने एक बड़ा अच्छा सुझाव और ये दिया सर कि हम यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिस भी समुद्री जहाज का सब्सिडी देते हैं उसके डिजाइन एक सेंट्रलाइज्ड ढंग से बनते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों की रिक्वेस्ट रहती है कि डिजाइन स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए।
गुजरात के मछुआरे, महाराष्ट्र के मछुआरे या केरला के मछुआरे अलग अलग ढंग से उसको अप्रोच करते हैं। तो इस पे भी उन्होंने कहा किसी किस्म की एक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और जो वेसल का डिजाइन है उसको एक मोनोलिथिक ब्लॉक में बना करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा सर, क्योंकि हमारी डिस्कशन का, हमारी पूरी चर्चा का विषय लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे, तो ये बात एक उभर के सबके सुझाव से आई कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर, सिंगल विंडो के माध्यम से, क्योंकि सर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं उनका एक्सेस साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स तक बहुत है सर। इंडोनेशिया नजदीक में है, थाईलैंड नजदीक में है, और ये बड़े सेंटर्स हैं जहां पे मछली का व्यापार और कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज का व्यापार होता है। तो सुझाव ये था कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड की जो प्रशासन है वो अपने स्तर पे हमारी मदद से ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाए, जिसमें अगर कोई जमीन के लिए एनओसी चाहिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए, या जैसे एक सुझाव आया कि एक बड़े मीटर की समुद्री जहाज के लिए अगर कोई लाइसेंसिंग की सुविधा है तो उसका क्रियान्वयन सिंगल विंडो के माध्यम से किया जाना चाहिए। वहां की जैसे आइलैंड में एयरपोर्ट्स हैं सर, वहां पे कार्गो फैसिलिटी की बात भी बढ़ चढ़ के आई। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी चर्चा हुई सर, और हमने एक ईमेल भी शेयर किया। ईमेल के माध्यम से बहुत लोग अपने विचार शेयर कर चुके हैं और करेंगे। पूरी रिपोर्ट हम सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब के समक्ष पेश कर देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी। अब आखिरी जो हमारा थीम था कोऑपरेटिव से संबंधित सपोर्ट टू एनसीडीसी, तो मैं निवेदन करूंगा कि आशीष भूटानी जी अपने बात रखना चाहें। आशीष, कुछ 4-5 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन है सर। नेक्स्ट सर, नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है मार्च 63 में स्थापित किया गया एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री देन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सर। और इसका काम है एग्री एंड एलाइड सेक्टर को क्रेडिट उसकी नीड्स को पूरा करना सर। अभी तक जब से इसकी स्थापना हुई है 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण ये वितरित अभी तक कर चुका है सर। इस बार बजट अनाउंसमेंट था, वो था आवर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू एनसीडीसी फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। जो एनसीडीसी की लेंडिंग एबिलिटी इसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट सरकार ने बजट में दिया है सर। तो हमारी जो ब्रेकअवे ग्रुप में 10,000 लोगों ने करीब पार्टिसिपेट किया, इसमें 6 पैनलिस्ट और 9 इंटरवेंशनिस्ट थे सर। इनका स्पेक्ट्रम है, सीजीएम नाबार्ड थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी थे, आंध्र प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के मार्कफेड के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट सहकार भारती थे पुराने वाले हमारे डीएम ठाकुर साहब, और चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर एक बड़ी सोसाइटी जो अच्छा काम कर रही है उसके फिशरीज की उसके थे, एमडी अमूल थे सर। और विभिन्न राज्यों के अधिकारी गण थे इंटरवेंशनिस्ट के रूप में, कुछ फेडरेशन के चेयरमैन भी थे। सजेशन निकल के आया उसमें मोटा मोटा ऐसा है कि सहकारिता में सहकार बोल के बड़ी एक योजना मंत्रालय हमारी चला रहा है, जिससे कि कोऑपरेटिव सेक्टर का पैसा कोऑपरेटिव सेक्टर में ही रहे और कासा फंड जो चीपर फंड्स अवेलेबल हो सेक्टर में फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर, उसका और प्रचार प्रसार किया जाए और राज्यों में इसको बढ़ाया जाए। और एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चालू की जाए जिससे कि कम ब्याज दर पर लोन एनसीडीसी दे सके। कुछ लोगों ने बात की कोऑपरेटिव बैंक्स को में फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करने की। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में आपका सहकारिता का जो की पकड़ कमजोर है, इसको मजबूत करने की बात की गई सर। और एनसीडीसी को बताया गया कि एनसीडीसी की जो आज की तारीख में लेंडिंग है कुछ सेक्टर्स में है, प्रोक्योरमेंट में, आपका शुगर एक्सेट्रा में, इसकी लेंडिंग का और डाइवर्सिफिकेशन किया जाए और सेक्टर्स को भी एडिक्वेट लोन एनसीडीसी दे सके। और लॉन्ग टर्म लोन का जो शेयर है अपने पोर्टफोलियो में उसको बढ़ाए एनसीडीसी, इसकी बात हुई सर। और जैसा बताया कि एक लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक केस स्टडी प्रेजेंट की गई जिसमें उन्होंने बताया कैसे कोऑपरेटिव को सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज हम चेंज कर सकते हैं और कैसे। और सुझाव आया कि कोऑपरेटिव्स एनसीडीसी कोऑपरेटिव जो एंगेज हैं एआई में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, उनको भी सपोर्ट, नए एरियाज में एंटर करे और उनको सपोर्ट करे। और अमूल एमडी ने बात की कि कैसे अमूल का मॉडल रेप्लिकेट किया जा सकता है और प्रदेशों में, उसके लिए क्रेडिट की बहुत सख्त आवश्यकता है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जो 100 रुपए हम देते हैं एज अ कंज्यूमर, उससे 80 रुपए फार्मर को वापस जाते हैं। ऐसा मॉडल और किसी सेक्टर में नहीं कोऑपरेटिव को छोड़ के, इसलिए इसको मजबूत करने की और क्रेडिट देने की जरूरत बहुत सख्त है।
और उन्होंने बताया कि एनपीडीटी जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेली डेवलपमेंट स्कीम चल रही है उसमें भी एनसीडीसी को एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ग्रुप में जोड़ा जाए, जिससे कि और अधिक पकड़ और पहुंच होगी और लोगों को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी। जो इंटरवेंशनिस्ट थे उनकी बात जहां तक निकल के आई, उनका ये कहना था कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एनसीडीसी के लोन का पोर्टफोलियो बढ़ाया जाए। कुछ राज्य इसमें लोन नहीं ले पाए हैं या ले पा रहे हैं, उनको लिए स्टेट स्पेसिफिक विंडो खोली जाए जिससे कि वो भी इसके पात्र हो सकें। शुगर सेक्टर में इसकी पहुंच अच्छी है, फिर भी शुगर सेक्टर के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे इंटरवेंशंस में, उनका ये कहना था कि शुगर सेक्टर को और अभी सपोर्ट की, क्रेडिट की जरूरत है, स्पेशली न्यूअर टेक्नोलॉजीज की और लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन की फॉर केन कटिंग। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए जो एनसीडीसी ही प्रोवाइड कर सकता है। फिशरी सेक्टर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज और डिजिटल एक्सेस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट सपोर्ट की बात की वहां के चेयरमैन केरला स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन ने सर। और बात आई कि कैसे जो हमारी सोसाइटीज हैं उनको मजबूत किया जाए, जैसे कि कंट्री की एग्री एक्सपोर्ट में उनकी भागीदारी बढ़े और एसएचजीज को सपोर्ट करे एनसीडीसी, इससे कि रूरल सेल्फ रिलायंस अमंग रूरल वुमेन प्राप्ति हो सके। और जो नई सोसाइटी हमने 3 बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी मेंबरशिप के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए कैसे हम उसमें काम करें और उनकी ट्रेनिंग और बिजनेस मॉडल के बारे में उनको बताएं, जैसे किससे कि वो हमारे सिस्टम से जुड़ सकें। और एनसीडीसी एफपीओ को प्रमोट करे और बड़े पैमाने पे 1000 बनाए एनसीडीसी ने और बड़े पैमाने पे प्रमोट करे और लेंडिंग रेट्स कम करिए। बात बार बार निकल के आ रही है, लेंडिंग रेट्स को रिव्यू करने की बहुत सख्त जरूरत है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को और रिसोर्सेज की जरूरत है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट एनसीडीसी लोनिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट द शुगर सेक्टर, और इनके जो नॉर्म्स हैं फंडिंग के रिलैक्स किए जाएं। अगर हम की टेकअवेज देखें सारे जितना भी हमारा आज बैठक में जो चर्चा हुई है सर, बात ये निकल के आई, कोऑपरेटिव्स को एक संस्था है सरकार की जो केवल कोऑपरेटिव्स को ही देखती है, तो उसका रोल और बड़ा होना चाहिए। क्रेडिट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कोऑपरेटिव सेक्टर में और बैंक से उतना क्रेडिट मिल नहीं पाता। बैंक्स हैव रिजर्वेशंस अबाउट फंडिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो एनसीडीसी को आगे बढ़ के अपना रोल में और विस्तार करना चाहिए। जो वीकर सेक्शंस कोऑपरेटिव्स हैं जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा और कंज्यूमर लेबर सोसाइटीज, उनको की वर्किंग कैपिटल नीड्स और उनकी जो अदरवाइज नीड्स हैं अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसमें सारे छोटे सीमांत किसान हैं जुड़े हुए, गरीब तबके के लोग हैं, एससी एसटी कंपोनेंट बहुत ज्यादा है उनमें जो मेंबर्स का, उनको क्रेडिट लेने में बहुत अवेल करने में परेशानी आती है। कैसे एनसीडीसी उनको सपोर्ट कर सकता है, उस पर काफी देर तक चर्चा हुई। मैं बताना चाहूंगा सबको कि एनसीडीसी के पास अपना कॉर्पस 6700 करोड़ का है और अभी आज इस साल की लैंडिंग उसकी करीब 90,000 करोड़ की होगी लैंडिंग। एनसीडीसी को जितना भी पैसा हम अलग से देते हैं ग्रांट इन एड, वो उसके एबिलिटी को 10 गुना बढ़ाता है लोन मार्केट से रेज करने के लिए चीपर रेट्स ऑफ क्रेडिट। इस साल सरकार ने 500 करोड़ एनसीडीसी को दिया है, तो 5000 करोड़ एडिशनल वो मार्केट से लीवरेज कर सकता है लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये योजना हमने 4 साल के लिए दी थी, इस साल 500 करोड़ मिला है। उम्मीद है कि अगले 3 सालों में भी इनको 500 करोड़ मिलेगा। और एक बड़ी जरूरत और सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई करने की उसी आशय से इनको लोन दिया गया है कि इसके ग्रांट इन एड दी गई है कि इसके आधार पर और सेक्टर्स जो आप प्रोक्योरमेंट और शुगर को छोड़ के और सेक्टर्स में भी अपने कार्यकलाप बढ़ाएं और स्पेशली न्यूअर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और सेक्टर्स में भी कोऑपरेटिव सेक्टर की पहुंच बढ़े, उसको सपोर्ट करें और लोअर रेट पे इंटरेस्ट दें, कॉस्ट अपना कम करें और जो भी कार्यकलाप इनको करना है उसको करें जिससे कि इंटरेस्ट रेट कम हो और विकसित भारत 2047 का जो सपना उसको साकार करने में कोऑपरेटिव्स की एक बड़ी भूमिका हो और उसके लिए वो पहल ले सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारा ये वाला सेशन डीब्रीफिंग का संपन्न हुआ है सर। अब आपकी जैसी अनुमति हो तो कतिपय हमारे राज्य मंत्री जी उपस्थित है, अगर उनसे आप बुलवाना चाहे या आप खुद समय को देखते हुए जैसा आप उचित समझे। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई मंत्री बोलना चाहे, उनके मन में कोई बात हो तो संक्षेप में जरूर रखे। अगर कोई मंत्री जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी जानकारी में अभी जुड़े हुए मंत्री गिरिराज जी, मुरलीधर मोहोल जी, एसपी सिंह बघेल जी, जॉर्ज कुरियन जी, भागीरथ चौधरी जी और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा साहनी जी जुड़े हैं। इनमें से अगर कोई पहले कुछ कहना चाहे तो संक्षेप में। जी मैं बोलना चाहता हूँ एसपी सिंह बघेल। जरूर बघेल जी बोलिए। या कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी से बोलना चाहें तो वहां से शुरू कर लीजिए। सीनियरिटी से अब नहीं है सर, अब वो भी नहीं है सर, पहले थे सर, अब नहीं है सर, आप बोले सर।
अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो आज के इस वैचारिक डिस्कशन हुआ उसके लिए आभारी हूँ कि पूरे दिन के वैचारिक मंथन से जरूर कोई ना कोई ऐसा अमृत निकल रहा है तो किसानों के लिए बहुत फलदायी होगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का ये धन्यवाद कि उन्होंने फिशरी और पशुपालन डेयरी एक स्वतंत्र विभाग बनाया और किसानों की आय दुगनी करने का जो उन्होंने व्रत लिया है उसमें एक बड़ी भूमिका एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी निभा सकता है। दूध के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन यही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा है। अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो जाए और देश एफएमडी फ्री हो जाए तो हम दूध का निर्यात भी कर पाएंगे। और कोऑपरेटिव मूवमेंट जिन राज्यों में कमजोर है उन्हें थोड़ा गुजरात से, महाराष्ट्र से और आजकल राजस्थान भी अच्छा कर रहा है, उसमें सहकारिता के मामले में हमें थोड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाने की जरूरत है। आय दुगनी जो है वो उन्नत किस्म की खेती के साथ उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुगर पालन, मधुमक्खी पालन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फल फूल की खेती और नैनो यूरिया पे जरा बात कम हो रही है, क्योंकि नैनो यूरिया में जो होती है एक तो यूज पूरी होती है क्योंकि वो पत्तियों के माध्यम से जड़ में जाती है। सॉलिड यूरिया होती है वो 2 पौधों के बीच में जाती है तो उसका उपयोग नहीं होता। ऐसी नैनो डीएपी ले जाने में भी आसानी होती है और ड्रोन के माध्यम से यदि हम उसका छिड़काव करें तो यील्ड भी बढ़ जाती है। और ड्रिप स्प्रिंकलर और ये माइक्रो इरिगेशन की हमें जरूरत है। दूध की नदी बह सकती है, वैसे तो ये कहावत है, क्योंकि अब कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा यदि किसान अपनी गाय का गर्भधारण सेक्स सॉर्टेड सीमन से कर सकते हैं, जो टेक्निक आ चुकी है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। 100 रुपए का केवल एक डोज दे रहा है। अगर 3 बार में गर्भधारण कर ले तो केवल 300 रुपए किसान के खर्च होंगे और गारंटी होगी कि 90% बछिया पैदा होगी और उसमें भी साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी या गिर गाय की होगी। चूंकि चौहान साहब को एग्रीकल्चर का बहुत ही ज्ञान है और देख रहे हैं कि मैंने तो अपनी लोकसभा में पिछले 30 साल से हल चलते हुए नहीं देखा है। बैलगाड़ी भी नहीं चल रही है, रहट भी नहीं चल रहा है, कोल्हू भी नहीं चल रहा है और दाएं नहीं हो रही है, क्योंकि तो इसलिए बछड़ा यूज लेस है, इसलिए वो प्राइस लेस हो चुका है। तो उसको पैदा ना किया जाए, इस मामले में हमें जनता में बहुत अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करें और बछिया ही पैदा करें। बछिया पैदा होगी तो 8-10 साल रहेगी और बछड़ा पैदा होगा तो निराश्रित गौवंश की संख्या में वो नंदी महाराज भी अपनी एक संख्या बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से फिशरी के मामले में जो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार अपने बजट में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड का जिक्र करते हुए टूना मछली और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की है। जैसा हमारे सचिव महोदय ने इस बारे में बात की है कि लगभग 11,900 किलोमीटर हमारा तटीय क्षेत्र है और जो नॉटिकल माइल्स में भी हम 2 पॉइंट कुछ किलोमीटर में, मिलियन किलोमीटर में हम फिशिंग कर सकते हैं। तो और एक बहुत फिशरमैन कम्युनिटी जो परंपरागत रूप से फिशिंग करती है बड़ी संख्या में, वो कोस्टल इलाके में और अंतर्देशीय फिशिंग भी हो रही है। तो अंतर्देशीय फिशिंग जो है उसकी मात्रा ज्यादा है और समुद्र इतना होने के बाद उसकी संख्या कम है, तो उसमें थोड़ा प्रशिक्षण की जरूरत है। कुछ अंडमान निकोबार में जैसा सचिव महोदय ने कहा है कि ऑनलाइन हमें प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा और ICAR के वैज्ञानिक जो फिशरी से संबंधित हैं उनको जरा प्रशिक्षण वगैरह भी देना पड़ेगा और हमें थोड़ा जो ये हब बनाने जा रहे हैं, क्लस्टर बनाने जा रहे हैं फिशिंग का, वहाँ ये द्वीप समूह की सरकारों को थोड़ा सहूलियत देनी पड़ेगी जब इस मामले में हम करेंगे। ऐसे पंचायत राज विभाग में जब से ये घरौनी का काम जब पूरा हो जाएगा तो स्वामित्व योजना में फिर लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड में भी एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। मुझे इतना ही कहना था कि एक ये जो नेशनल किसान क्रेडिट कार्ड में जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल डेस्क बोर्ड बनना चाहिए
जिसमें ये पता चलता रहे कि कब अप्लाई किया है, कितने दिनों में निस्तारण हुआ है, रिजेक्शन हुआ है तो रिजेक्शन का क्या कारण है, और ये एक सामान्य रूप देख सकें। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मौसम का अभी ऐप एक हम लोगों ने मौसम विज्ञान विभाग से डेवलप किया है। तो जो पंचायत भवन है और वहाँ पर जो कृषि के भी एडीओ एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं या किसान सहायक होते हैं, पंचायत भवन के आगे आने वाले 72 घंटे का मौसम उनको लिखना चाहिए और लिखने के साथ साथ डुगडुगी कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फसल का उत्पाद इसलिए बढ़ जाएगा कि 72 घंटे में बारिश होने का मौसम है, किसान को पता नहीं, वो बुआई कर आता है तो उसका बीज भी खराब होता है। 72 घंटे के अंदर बारिश होने वाली है तो मड़ाई नहीं कर रहा तो थ्रेसिंग अपनी कर ले। 72 घंटे के अंदर ओले पड़ने की संभावना है तो वो थोड़ा जल्दी से अपनी फसल को काट ले। पाला पड़ने की उम्मीद है तो हल्का सा पानी खेतों में लगा दे जिससे पाले से उसकी फसल खराब ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय चौहान साहब को जो कृषि के मामले में उनको बहुत नॉलेज है, लास्ट में उनका जो रिमार्क रहेगा उससे हम सारे लाभान्वित हैं। और कोई तो नहीं सर? ये कोऑपरेटिव्स एमओएस साहब कोऑपरेटिव से भी शायद करना चाह रहे थे बात, को आशीष जी ने। जरूर जरूर। माननीय राज्य मंत्री सहकारिता मुरलीधर जी। सर ये परमिशन की बात करेंगे। जुड़े हुए मुरलीधर मोहन जुड़े हुए थे। उनके यहाँ मैसेज आया तो कैसे बाकी आरडी के जो माननीय राज्य मंत्री भी संभवतः करना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। शैलेश जी जुड़े हैं सर मुरलीधर मोहन जी लाइन पे हैं सर, वो म्यूटेड है सर, आप अनम्यूट हो जाइए सर। हाँ सर अनम्यूट हो जाइए। सर अनम्यूट कर दीजिए सर। आप अनम्यूट करके बोलना चाहे माननीय राज्य मंत्री सहकारिता मुरलीधर मोहन साहब। आवाज आ रही है सर? नमस्ते। नमस्ते, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है सर। माननीय और सभी हमारे मंत्रीगण, मैं खाली एक ही बात रखना चाहता हूँ कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से जो कुछ हमारे उपक्रम शुरू है, ये सब अलग अलग मंत्रालयों के साथ कन्वर्जेंस करके आगे बढ़ाई उसमें बढ़ाई जा रहे हैं, क्योंकि सभी मंत्रालय के साथ कन्वर्जेंस करके ही हमारे सभी जो स्कीम से जो उपक्रम है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी है, मंत्रीगण है, मैं यही आह्वान करना चाहूंगा कि एक कन्वर्जेंस जो है वो थोड़ा आगे जाकर थोड़ा जोर देना पड़ेगा, उसके माध्यम से और काम हो सकता है। बस यही सुझाव था। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी, क्या माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी जुड़ना चाहेंगे? मैं अभी तुरंत पता करके बताता हूँ सर। हाँ, क्योंकि मैसेज आया था कि शायद वो कहना चाह रहे थे। अगर जुड़े हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर उनके सुझाव ले लेंगे सर। अच्छा, अब आमेका से सर आपको मैं बस बताते हुए कि ये कार्यक्रम अब अंतिम चरणों में है सर, और जिस तरह से सुझाव आए हैं, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बताना भूल गया था कि हमारे 10,000 एफपीओ में से लगभग 7,660 एफपीओ जुड़े थे कृषि विभाग के ही 4 विभागों। ये मैं केवल कृषि के 4 थीम्स पे बात कर रहा हूँ, और हर एफपीओ के साथ 12 से 15 किसान जुड़े थे, और एक चैटबॉट के माध्यम से हमने उनसे सुझाव मांगे, तो हमें बहुत सारे सुझाव उनके माध्यम से मिल रहे हैं जो हम कोलेक्ट करके आपको उसको भी इंक्लूड करेंगे। बस ये मैं ऐड करना चाहता। बाकी थीम्स में भी बहुत सारे किसान अपने अपने क्षेत्र में जुड़े हैं सर। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने आशीर्वचन से आपने सुना सबको बड़े धैर्यपूर्वक, और अपनी बात और मार्गदर्शन देना चाहिए कि भविष्य में हम कैसे इसको आगे ले जाए। धन्यवाद। मंत्री जी या सेक्रेटरी साहब, मैंने अपना हाथ उठाया था, मैं सुमन बेरी बोल रहा था। मैं 2 मिनट चेयरमैन जी सर। हाँ जी,
नहीं बस मैं सुबह से ये सुन रहा हूँ, पर खास करके क्योंकि हम विकसित भारत पे काम कर रहे हैं और हमने ये एग्रीकल्चर का महत्व के बजट के पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। अच्छा, नहीं ये कहना था कि हम मतलब ये फार्मर्स के भला के लिए कर रहे हैं, देश के ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, पर एक जो इसका बेनिफिट होगा ये डिमांड के लिए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग डिमांड, क्योंकि आपको पता है कि हम चाहते हैं कि ग्रोथ 7% 8% तक पहुंच जाए, पर ये सप्लाई साइड से भी हो सकता है, डिमांड साइड भी हो सकता है। और ये जो अगर हम एग्रीकल्चर को 4% तक ले जा सकते हैं, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट डिमांड पे बहुत ज्यादा होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ सप्लाई साइड पे ध्यान करने के अलावा ये एग्रीगेट डिमांड और ग्रोथ के लिए इस पे मतलब ध्यान करना चाहिए। और सुबह के पैनल में काफी इस बारे में बात हुई थी। बस मैं इतना कहना चाह रहा था, क्योंकि फॉर ओवरऑल विकसित भारत स्ट्रेटजी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी मैसेज आया था, श्री जॉर्ज कुरियन ऑनरेबल मिनिस्टर है फिशरीज के, वो भी शायद बोलना चाहते हैं, मुझे अभी मैसेज मिला है। तो उनका सर ऑनरेबल एमओएस डॉक्टर चंद्रशेखर भी बोलना चाहते हैं सर। हाँ वो उसके बाद, हाँ बिल्कुल ठीक था। Meeting is no longer being recorded. Ministries connected to this fisheries, because it is connected to agriculture and commerce and science and technology, marine science, because this sector is considered as sunrise sector, and I request all this department people This meeting is being recorded. Support this. That is what I want to say. Thank you. थैंक यू जॉर्ज जी। चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी आवाज नहीं आ रही है। माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर साहब आप बोलना चाहते थे? शायद या तो लिंक नहीं हो पा रहे हैं। शैलेश जी लिंक नहीं हो पा रहे शायद। सर उनका मैसेज आया था, वो अभी हैं, जुड़े हुए हैं सर, वो बोलना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन आवाज नहीं जा रही है सर, अनम्यूट, शायद उनको अनम्यूट करने की आवश्यकता है सर। कोई उनके साथ हो असिस्टेंट्स वाले तो अनम्यूट करना चाहे। एनआईसी कुछ करेंगे इसमें, उनको अनम्यूट करेंगे। कैसे हो सकता है? देखता हूँ पीछे से सर, बैकएंड से। बाकी तो सब आ गए थे। शो होना चाहिए। अगर देर लग रही हो तो फिर, क्योंकि समय काफी हो गया है, एक बार देख लें, नहीं तो फिर हम अभी शुरू करते हैं। चंद्रशेखर जी के सुझाव फिर हम लोग जी सर प्रत्यक्ष मिलकर ले लेंगे बैठकों में। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। एक ऑनरेबल कोई आज मैं चंद्रशेखर जी आवाज आ रही क्या? मुझे लगता है नहीं आ रही अभी। सर आ रही आवाज? नहीं वो उनसे पूछ रहे, माननीय राज्य मंत्री जी से, उनको आ रही नहीं। मैं सोचता हूँ मैं शुरू करता हूँ और चंद्रशेखर जी से हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। मेरे सभी सहयोगी मंत्री साथीगण,
इस डिस्कशन में गहराई से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वजन, सभी हमारे अलग अलग विभागों के सचिवगण और अलग अलग सेक्टर्स के, चाहे वो किसान हो, प्रोसेसर हो, चिंतक हो, प्राइवेट सेक्टर के हो, अलग अलग क्षेत्रों से, मैं उसमें समय नहीं ले रहा, जुड़े ये सभी विद्वान मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वेबिनार में जिस गहराई और गंभीरता से आपने विचार किया है, वो बजट में जो प्रस्ताव हैं उनको नीचे तक जमीन पर उतारने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और कई विचार हमारे पास ऐसे भी आए हैं जो सीधे बजट से तो संबंधित नहीं है, लेकिन कृषि क्षेत्र से या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से, जिसमें ग्रामीण विकास भी सम्मिलित है, या पशुपालन, डेयरी पालन, मछली पालन, सहकारिता भी जिसमें सम्मिलित है, से जुड़े हुए हैं। कई मित्र वेबिनार में भी नहीं बोल पाए, और इसलिए मेरा उनसे आग्रह है कि आपके लिखित सुझाव हमें जरूर भेजें। सचिव एग्रीकल्चर के नाम भेजें, मेरे पास सीधे भेजें। तो जो जिन सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है, बोले हैं, अलग अलग सेक्टोरियल सत्र में, उनके सुझाव भी, क्योंकि उनका तो पूरी एक रिपोर्ट बन गई है, वो रिपोर्ट आप हमें भेजेंगे ही, हम उस पर भी शीघ्रता से विचार करके उनमें आए सुझाव को कैसे इंप्लीमेंट करें, उस पर काम करेंगे। लेकिन जो लिखित सुझाव आए हैं, न केवल हम उनको पढ़ेंगे, बल्कि उनमें भी वो बजट को, प्रस्तावों को तेजी से नीचे लागू करने के लिए जो सुझाव दे रहे हैं, उन सुझाव को हम सम्मिलित करेंगे, उन पर भी हम काम करेंगे। मेरे मन में एक विचार हो रहा है कि एग्री एंड एलाइड सेक्टर, ये कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार हम अलग अलग विचार करते हैं। एग्रीकल्चर अलग सोचता है, एनिमल हस्बेंड्री अलग सोचता है, मछली पालन अलग सोचता है, कोऑपरेटिव अलग सोचता है। तो मुझे लगता है कि बजट को ही ठीक ढंग से नीचे इंप्लीमेंट करने के लिए 4 महीने में एक आध बार इन विभागों के सचिव और मंत्री भी बैठने चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हम सब मिलकर पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से एक दिशा में काम करें। एक दिशा में काम करने के लिए जरूरी है कि नीतियां भी मिलकर बनाए, निर्णय भी एक साथ करें। इस पर भी मैं स्वयं बाकी सभी मंत्री साथियों को निमंत्रित करूंगा। मित्रों, आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसानों के, कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि, प्रधानमंत्री जी ने जैसा सवेरे कहा, के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और इसलिए हम किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाना चाहते हैं, उनकी आय बढ़ाना चाहते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण, मैकेनाइजेशन से लेके उच्च आय, बेहतर इंफ्रा
और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। मैं एक एक बात पर कोई लंबा नहीं बोलूंगा, बहुत उत्तम सुझाव आए हैं। अब ये बात आई है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अगर लागू करना तो लोकलाइज ही हमको विचार करना पड़ेगा। लोकलाइज प्रदेश के हिसाब से भी, लोकलाइज जिले में भी, और जिले में भी एरिया विशेष ब्लॉक हो या तहसील हो, निश्चित तौर पर उसी पर हमको विचार करना पड़ेगा। और अभी जो उत्पादन की असमानता है देश में, उसको खत्म करने के लिए सबसे प्रमुख बात जो उभरती है वो है उत्तम बीज। और ये प्रसन्नता की बात है कि अधिक उपज देने वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाने का प्रस्ताव बजट में है। मित्रों, मैं जब सोचता हूं कृषि के बारे में तो मुझे भी 6 पक्ष उसके लगते हैं, 6 सूत्र या 6 आयाम, 6 स्तंभ। एक, हमको उत्पादन बढ़ाना है। दूसरे, उत्पादन की लागत हमें घटाना है। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम हमको देना है। चौथे, उसकी फसल का नुकसान ना हो, और अगर हो जाए तो उसकी भरपाई। पांचवा, कृषि में डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। और छठवां, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती। और ये जितने सुझाव आए हैं, कृषि में अगर हम आय बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि के साथ बाकी चीजें हमको जोड़नी पड़ेगी। उसमें कृषि के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग। एक बात आई कि हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पर पेड़। खेत का पानी खेत में है। और डाइवर्सिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो पशुपालन, मछली पालन, फिशरीज, गोटरी, कृषि वानिकी, इन सबको अलग नहीं किया जा सकता। इनको जोड़ के ही हमको करना होगा। और इसलिए उत्पादन अगर बढ़ाना है तो अच्छे बीज चाहिए, कृषि का मैकेनाइजेशन चाहिए, डिजिटलीकरण की तरफ तेजी से हम बढ़ ही रहे हैं। बीज चाहिए हाई यील्डिंग, लेकिन अभी प्रोसेस आईसीआर कोई मैं देखता हूं तो इतनी लंबी है कि जो ब्रीडर सीड बनता है उससे सर्टिफाइड सीड तक पहुंचते पहुंचते 4-5 साल हो जाते हैं। इस बार हमने कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने 109 किस्में राष्ट्र को, किसानों को समर्पित की थी कि जल्दी कैसे किसानों तक वो बीज पहुंचे। प्रधानमंत्री जी का बीज से बाजार, हम एक चीज और कहते हैं, लैब टू लैंड। बीजों को जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। और बीज में प्राइवेट सेक्टर का भी अपना महत्व है, जिसको पीएम साहब ने रेखांकित किया। प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग लेंगे। लेकिन वहां केवल एक ही मुद्दा होता है कि बीजों के रेट, दाम क्या रहे, उसकी कैपिंग की बात किसानों की तरफ से आती है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। धन धान्य कृषि योजना की भी अब जो रणनीति बनेगी, लोकलाइज बनेगी। और आपके आए सुझाव पर विचार करके हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। केसीसी के माध्यम से ऋण वृद्धि वैसे तो चमत्कार हुआ है। आप देखेंगे कि 2014 तक संस्थागत ऋण था केवल 7-7.5 लाख करोड़ रुपया, बढ़ के 25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तेजी से केसीसी बनी है। केसीसी न केवल खाद बीज के लिए बने, मछली पालन, पशुपालन के लिए भी है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी असमानता है। आप ट्राइबल क्षेत्र में चले जाएं, केसीसी कंपैरेटिवली कम मात्रा में मिलेंगे।
एक प्रदेश में ही देखेंगे तो कई जिले में सीडी रेशियो बहुत कम है, कहीं बहुत कम लोन जाता है केसीसी पर। अब जो आंकड़े आए वो बताते हैं कि अभी तो 2 लाख तक, जो 3 लाख तक की सीमा थी, 2 लाख तक भी हम नहीं पहुंचे। उस पर भी हमको ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन को बढ़ावा में तो एक शब्द में अगर मैं कहूं तो गरीबी मुक्त गांव, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, लखपति दीदी कार्यक्रम हो, चाहे ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देने की योजना हो, विश्वकर्मा, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर हो, कृषि में ही वैल्यू एडिशन हो, प्रोसेसिंग का काम हो, कई सेल्फ हेल्प ग्रुप चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ाना है। और कैसे अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके हम गांव को गरीबी मुक्त करें, ग्रामीण समृद्धि बढ़ी है और तेजी से बढ़ाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत गहराई पे उस पर बात कर रहा है। दलहन में आत्मनिर्भरता की बाकी सब चीजें आ गई, लेकिन एक बात जो बीच में आई थी, उसको देवेश जी ने रेखांकित किया था। देखिए, दाल आदमी किसान तब लगाएगा जब दालों की कीमत एश्योर हम करेंगे। अभी गेहूं की, धान की कीमत हम एश्योर करते हैं कि पूरा खरीदेंगे, लेकिन दाल में अनिश्चितता है। तो आयात निर्यात नीति, उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। इसमें कई बार जब दाल की कमी या दलहन की कमी होती है और हम आयात के फैसले करते हैं, तो जो इंपोर्टेड दलहन है, आते आते समय लगता है, तब तक किसान की फसल भी आ जाती है। इन सारे पहलुओं पर भी मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। ठीक दाम मिलेगा तो दलहन का क्षेत्र बढ़ेगा। अच्छे बीज और बाकी उपाय, जलवायु अनुकूल या केवल रेनफेड एरिया, उसके लिए रणनीति हम लोग बनाएंगे। सब वो दलहन मिशन में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सुझाव को सम्मिलित करेंगे। और सब्जी और फलों में भी ये बात सही आई कि अभी प्रोसेसिंग बहुत कम है। और दूसरी बात जो अंतर है, जहां किसान पैदा करता है, सब्जी के दाम देखिए, और जब वही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर या चेन्नई पहुंचती है तो दाम देख लीजिए। तो बजट भाषण में भी ये बात आई है कि ये अंतर कैसे कम करें। बीच में जो बिचौलिया, उपभोक्ता को महंगा मिलता है और किसान का सस्ता बिक जाता है। तो बाकी सारे उपाय तो करेंगे ही, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, लेकिन उपाय ये भी करनी पड़ेगी कि किसान को मिलने वाली कीमत और उपभोक्ता को देने वाली, उपभोक्ता जो कीमत देता है, उसमें अंतर हम कैसे करें। बिचौलियों की संख्या का इसमें सवाल आता है। वैसे कई विषयों पर हम लोग विचार करेंगे। कपास के बारे में चिंता है हमारी, बीटी काटन भी बीमारियों के कारण फिर उत्पादकता काफी घट गई। वहां भी अच्छे बीज, मैकेनाइजेशन जैसे प्रयत्न, जो सुझाव आए, हम सबको करना पड़ेंगे। और भारतीय डाक का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में हम कैसे अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, इस पर जो सुझाव आए हैं उनको भी हम गहराइयों में जाके गहराई से विचार करके लागू करने का प्रयास करेंगे। फिशरीज में हमारी ग्रोथ अद्भुत है। पीएम साहब सवेरे कह रहे थे उत्पादन डबल हो गया। वैसे उत्पादन हमारा सब बढ़ा है, अनाज का, फल का, सब्जियों का, दूध का। लेकिन फिशरीज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावना है, उसका भी हम दोहन करेंगे। और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संबंध में भी जो सुझाव आए उन पर भी विचार करके हम कैसे एग्री पोटेंशियल का अपना पूरा इस्तेमाल करें।
इसको वर्कआउट करके भारत केवल अपने लिए अन्न, फल, सब्जी, दाल ना उगाए, दुनिया का फूड बास्केट बन जाए, उस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। मैं आज इतनी आश्वस्त करता हूं कि हमारे सारे डिपार्टमेंट मिलकर, विभाग, प्रधानमंत्री जी की जो तड़प है, ललक है, किसान की समृद्धि, उसके लिए लक्ष्य तय बजट में प्रावधान है। उनको तेजी से जमीन पर उतार के परिणाम हमको जल्दी देना है, उसमें हम कोई कसर नहीं करेंगे, रखेंगे। मेरे साथी सहयोगी मंत्रीगण भी पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। अधिकारियों की टीम हमारी समर्पित है, टैलेंट उनमें है, तो वो भी विशेषज्ञों के साथ मिलके, अब यहां तो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जुड़े हैं, आज मैं उनके नामों की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उनके संपर्क में हम रहेंगे और एक बार आए हुए सुझाव के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होगी, फाइनली उनसे भी फिर एक बार सुझाव मांगेंगे और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर रोड मैप बनाकर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप सबने आज का समय दिया और इतनी गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। एक ही संकल्प, विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि का विकास, ग्रामीण समृद्धि और उसके लिए ग्रामीण समृद्धि के साथ साथ समृद्ध किसान, और इसलिए हर संभव कदम उठाने का संकल्प हमारा है। एक बार जुड़े हुए सभी मित्रों को जिन्होंने विचार विमर्श की इस प्रक्रिया में भाग लेकर अमूल्य सुझाव दिए, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार, और सभी माननीय केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों का, सभी सचिवों का, सभी किसान भाइयों और बहनों का, एफपीओ के सदस्यों का, विशेषज्ञों का आभार कि उन्होंने आज के वेबिनार को सफल बनाने में अधिक से अधिक सहभागिता में अपना प्रदान की, और जो भी सुझाव आए हैं उनको हम लोग कोलेक्ट करके अपने योजनाओं को अंतिम रूप देने में पूरी तरह से अब जुट जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए फटाफट कल This meeting is no longer being recorded.